as they were. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive, or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive, or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive, or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life
what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे हो? हाय नियो, हाय तनिष्क, हाय केविन, हाय अभिषेक, हाय एनवी छात्र, हाय रितेश भावा, व्हाट्सअप, हाय आर के प्लीज, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? हाउस इट गोइंग? कैसे जा रहा है दिन? टीआई चालू हो रहा है अभी? चालू हुआ क्या? वेट व्हाट? चालू हुआ क्या? वो चालू हो रहेगा तो वही देखते हैं, मैं तो बोलता हूँ। ए मेरे स्ट्रीम का पीछे बज रहे हैं। नहीं, अभी तक मैचेस चालू नहीं हुए दोस्तों, वो बस स्ट्रीम चालू हुआ है। बट देखना है कि है क्या बोलते हो, एमआर खेलने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। वो पहला मैच 38 मिनट्स बाद दिखा रहा है। हाय गेमर गॉड, अरे हाँ, ओपनिंग सेरेमनी रहेगा, कुछ ना कुछ तो मैटर रहता है उसमें, देखते हैं दोस्तों, मैं तो बोल रहा हूँ। हाय सत्यजीत, हाय वन ऑफ अ काइंड, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? यस, चालू हो रहा है अभी मेन इवेंट, ओपनिंग सेरेमनी रहेगा, वो गेबन आएगा ना, वेलकम टू द इंटरनेशनल, ऐसा बोलेगा ना वो, मजा आएगा भाई। ओ माय गॉड, टीआई का आज क्या बोलते प्लेऑफ्स शुरू हो रहा है, मेन इवेंट। भाई द वे दोस्तों, प्रेडिक्शन किए कि तुम लोग ने? मेरे प्रेडिक्शन देख रहे हो ना? अभी तक 38 मिनट्स है तुम लोग के पास लॉक करने के लिए। दीज आर माई प्रेडिक्शंस गाइस। स्टोरी लाइन तो तुम लोग को मैंने बताई है, देखेंगे देखेंगे गाइस, एक साथ देखेंगे दोस्तों, एक साथ देखेंगे दोस्तों, लेट्स गो। और क्या बोलते हो दोस्तों, हाउस इट गोइंग? तुम लोग को दोस्तों ये दिख रहा है क्या मेरे कुछ कैसे बताओ, तुम लोग को आंखें दिख रही है क्या मेरी? मैं इधर स्क्रीन को देख रहा हूँ, मैं कुछ तो वो यूज कर रहा हूँ दोस्तों, पता है क्या? मैं इधर भी चैट देखूंगा तो भी उधर ही देखता है मेरे, वो क्या बोलते हैं वो, व्हाट एम आई यूजिंग पता है? एनवीडिया ब्रॉडकास्ट का आई कांटेक्ट वाला एक फिल्टर है, वो पता नहीं यार, बहुत इरिटेट हो रहा है वो देखने में मेरे को ही। मैं ऐसा इधर देख रहा हूँ, हाँ एआई वाला, मैं उधर भी देखूंगा तो भी स्क्रीन पे ही देख, मतलब कैमरे में ही देख रहा हूँ ऐसे लग रहा है। हाय शाय, व्हाट्स अप? हाय बॉस, रिहा बॉस, liquid bit spirit, yes, yes, I mean liquid bit spirit in the upper bracket, then spirit makes the lower bracket run, and then they beat again liquid in the lower bracket finals, and it will be spirit versus LGD round 2, and this time Showit is going to destroy spirit. भाई वो मैं ना कब से मैं ऐसा सामने स्क्रीन पे देख रहा हूँ, फिर भी वो उधर कैमरा की तरफ जा रही है मेरी आंखें, वो क्या बोलते हैं एआई की वजह से। ओ माय गॉड, मेरे को बंद करता हूँ, मेरे को ही देख के इरिटेट हो रहा है वो, मुझे ही देख के इरिटेट हो रहा है, क्योंकि मैं वो साइड भी देखूंगा तो भी इधर ही दिख रहा था वो, बंद कर दिया मैंने वो दोस्तों। दिस टी ओनली नाउन्स और वीपी, और भाई वो भी जीत सकते भाई, बट मैं उनको उड़ा दिया है पहले। नाउन्स वाले बहुत अच्छे, सब खराब कर दिया क्या मैंने? नाउन्स वाले अच्छा तो खेल रहे, बट पता है नहीं यार दोस्तों, पता नहीं। फॉर मी इट्स एलजीडी हु इज गोइंग टू विन टीआई गाइस। चालू कभी हो रहा है ओपनिंग सेरेमनी और टीआई का ये चल रहा है बैकग्राउंड। एलजीडी टीआई भाई सवाल ही नहीं आता है, ये शावेट को जीतना ही चाहिए और एक एजिस,
पहले एज अ प्लेयर जीता है, अभी एज अ कोच जीतेगा वो। लेट्स गो। हो भाई क्या बोलूं। और क्या था, और कुछ नहीं था, यही था। फिर मैंने क्या बोलते फैंटेसी में ये 3 प्लेयर डाले हैं, कैरी यात्रो, मिड नथिंग टू से एंड सपोर्ट मीरा। अभी पता नहीं कौन स्कोर करेगा कौन नहीं करेगा, बट ये 3 डाले हैं मैंने। तुम लोग के कौन डाले, तुम लोग ने 3 प्लेयर कौन से डाले हो दोस्तों? देखो कैरी के लिए ना तुम लोग को टीम फाइट डालना है, जीपीएम डालना है, फिर न्यूट्रल टोकन फाइंड करना है। मिड वाले के लिए तुम लोग को रून्स ग्रैप डालना है, और पता नहीं इतना ही है मिड वाले के लिए सच बोलूँ तो। और सपोर्ट के लिए तुम लोग को ऑप्स प्लांटेड डालना है, वॉचर्स टेकन डालना है, पता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग ने डाला। अभी तो चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा लेट हो गया बताने में, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो कर सकते थे, कि ये सब तुम लोग यूज़ कर सकते थे, क्योंकि इतने सारे रीरोल पड़े थे तो अभी कर ही सकते थे। पता है कि दोस्तों मैंने ये ना कैप्सूल्स रखे हैं, कोई टीआई जीतेगा उसके बाद खोलूंगा मैं, तभी मुझे टीआई विनर वाला मिलेगा ना उसमें स्टिकर। पता है नहीं कैसे रहता है ये। आज तक मेरे को गोल्ड वाला एक भी नहीं मिला है, एक भी नहीं मिला है गोल्ड वाला, ना टीम वाला मिला ना प्लेयर वाला मिला। मेरे पास कौन से देखना है तुम लोग को, किधर रहता है वो? नॉट हियर, मे बी हियर, स्टिकर्स। तो मेरे पास कौन सा है पता है? स्कैम का बेसिक वाला है, TI-22 का, फिर बूम आईडी था, फिर एलजीडी का जिंक्यू मिला था, ओजी का एटीएफ मिला था, ईजी का आरटीसी मिला था, और ईजी भी मिला था, फिर टैलेंट में सुनामी मिला था, और एस्टर का ये कौन था ब्रो, ये प्लेयर कौन है? ऑफलेन, ऑफलेन एक्सएक्सएस, एस्टर का एक्सएक्सएस, थंडर अवेकन, टुंड्रा के सारे प्लेयर्स मिले थे मुझे दोस्तों, बट सारे बेसिक क्वालिटी मिले रहे, क्या फायदा है सैडली। फिर 20 कोर्स का भी एक ये मिला था। स्टिकर कैप्सूल्स तो है अपने पास। हाय शुभम, वॉच पार्टी करते हैं, मैं तो बोलता हूँ चेंज कर देते हैं नाम, और टीआई ही देखते हैं थोड़ी देर पूरा टाइम। रैंक गेम्स खेलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि पेज देखना है क्या मेरा। 7 के पहुंच गया हूँ, कल रात को नेट चला गया, जीता हुआ गेम हारा हूँ, मतलब -MMR मिला। लिटरली सामने वाले थ्रो कर दिए, AFK कर दिए, और मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, एंड देन आई हैड टू अबैंडन। रात को नहीं क्या, मैं स्ट्रीम बंद करके बोला तुम लोग को कि नेट जाने वाला है, तो वो नेट गया गेम के बीच में, फ्री विन था वो भी गया। फिर आज जीते हुए गेम्स हार रहा हूं। ग्राफ देख रहे हो दोस्तों, ये ग्राफ देख रहे हो, ये 18,000 लीड है, 18 भी नहीं 20,000 लीड है भाई, 20,000 लीड वाला गेम मेरे प्लेयर्स ने थ्रो कर दिया। क्यों? तो हम लोग ने बॉटम रैक्स लिया था, उसके बाद बस टॉप जाना था। हमारी टीम मिड जा रही है, मिड जा रही है, सामने ये स्पैम कर रहा है, केओटीएल स्पैम कर रहा है, मिराना एरो वगैरह स्पैम कर रहा है, ये अंडरलॉर्ड स्पैम कर रहा है, पूरा हाई ग्राउंड डिफेंड कर रहे हैं, बट माई अर्सा वॉन्ट्स टू गो मिड। ये इतना इरिटेट हो गया ना बाहब डोटा का। वो एक गेम हारा, फिर उसके पहले वाला गेम तो हम लोग ने सामने वाले को बहुत गंदा उड़ा दिया, सामने वाले डायरेक्ट ग्रीफ करने लगे, इतना गंदा मारा। ऐसे नहीं था कि सामने पहले झगड़ा चल रहा था, वो तो बाद में झगड़ा लगा दिया हम लोग ने ऐसा गेम खेल के। इसके पहले आई प्लेड वीवर, क्या हुआ था ये गेम में देखने दो। ओ ये भी गेम थ्रू हुआ है, देख रहे हो दोस्तों, ये देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, 16-17 के लीड है, 16-17 के लीड थ्रो हो गई। क्यों? ये गेम में लीना एनिमल था, दिख रहे हो उसका आइटम कैसे है, बहुत गंदा प्लेयर था वो लीना, मिड प्लेयर था हमारा। और मैं रुको, यो सिंगम, अरे मैं अभी जस्ट मैसेज किया। सिंगम पुणे में सॉल्ट हो गया है सीन,
We have a place. We have a place. We have a PC. We need camera. We need some mic and all. Some gears. Or we are set. And we are set. साउथ अमेरिका 4 स्लॉट्स ऑल आउट, बट वो K1 है ना भाई, K1। आई मीन वो स्लॉट बहुत वेस्ट थे यार, उससे अच्छे यू को देते। यू वाले इतने स्ट्रॉन्ग टीम थे, ओजी आ जाता बेचारा, सीक्रेट आ जाता। निगमा के बारे में बोलूंगा नहीं मैं। चाइना भाई, चाइना टीम अच्छे ही रहते हैं, उसके बारे में मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। बहुत आर्ग्यूमेंट होता है कि चाइनीज टीम को लोग गाली देते हैं, पता नहीं क्यों, बट चाइनीज टीम मोस्ट डिसिप्लिन्ड, एकदम हाई लेवल डोटा चिल करके बेस्ट रहता है चाइनीज डोटा मेरे अकॉर्डिंग। हाय हैरी, कोमोडोज मिले ना भाई, वही तो बता रहा था मैं, कोमोडो ड्रैगन मिले थे। चल रहे भाई तनिष्क, ऑल गुड। यस आदित्य, टीआई देखेंगे अपन। हेलो आरके गेमिंग, कैन यू प्ले विथ मी? यू कैन प्ले विथ मी ऑन वीकेंड्स ब्रो। वीकेंड को हम लोग यूजुअली लॉबी होस्ट करते हैं, तभी एक साथ खेल सकते हैं। सब गेम्स में आ जाओ कभी यार। टीआई चालू करो। हेलो गेबन, किधर है? चलो दोस्तों, चालू हो गया है कुछ तो, शो चालू हो गया है, वो लोग का बड़बड़ चालू हो गया है। लेट्स वॉच दैट। ओके, ये बंद कर रहा हूँ बाकी सब। किधर है मेरा स्क्रीन? 2 मिनट। ट्विच, गूगल क्रोम। चालू हो गया है दोस्तों टीआई। exact stage, but being back in Seattle, how much does that mean to you and being a panelist this now? place is just magical to me. It brings so many good memories, like good and bad both. Natty, so many resolution, highs and so many lows being in this FE, place. Like I was walking there and next to the stages, Lacoste. like, it feels weird coming here tomorrow and not playing, you know, like because I've been there so many times, and I mean the crowd here is absolutely amazing. क्रूसेडर्स like, सब लोग अलाउड है भाई अपने सब feel गेम्स that में, energy ऐसा नहीं coming to रहता है। the, रैंक you know, कुछ to the रैंक का कुछ players, लेना and नहीं देना I रहता है, think it's कोई gonna भी खेल benefit सकता है the, ब्रो, you know, the home teams today, for कोई sure. भी। अनरैंक्ड वाले प्लेयर भी खेलते हैं अपने सब गेम्स में। Knowing that you're going to be here in front of this crowd, that we're going to be watching Dota but not going to be playing the Dota. रीस्ट्रीम का कैसे दिखता है? देखो ऐसे दिखता है दोस्तों, ये ट्विच पे भी जा रहा है, यूट्यूब पे भी जा रहा है, इधर चैट आ रहा है पूरा, दोनों का रीमिक्स चैट आता है इधर, ट्विच भी आता है, यूट्यूब भी आता है, पता है? ऐसे दिखता है restream.io। be the voice basically for the game, so that's pretty exciting. And what about you, Effie? What are you most excited for this weekend? Not even just today, but overall this weekend. It's our final weekend and we have 3 days of action. यूट्यूब पे इशू नहीं होगा, कुछ नहीं इशू होगा, सब लोग देखते हैं भाई, सब लोग स्ट्रीम कर रहे हैं। Nothing compares to that. I mean, every game that you watch is so elevated just by the sound of the audience. So लॉर्ड गेबन आके जल्दी अनाउंस कर दे भाई, वेलकम टू द इंटरनेशनल करके। 10 years they've gone by for you. Do you quickly, yeah. Quickly, yeah. I couldn't even remember that it was 10 years. ये शायद से क्रिट की गर्लफ्रेंड है, पता है दोस्तों? ये नैटी क्रिट की गर्लफ्रेंड है शायद से। Oh, absolutely. They don't have to scream for me, but they're going to scream for. कौन सा मैच है आज? मैं बताता हूँ, आज मैचेस है। पहला मैच नाउन्स वर्सेस जीजी है, गेमिंग ग्लैडिएटर्स। दूसरा मैच बेडबूम वर्सेस वीपी है। तीसरा मैच टीम स्पिरिट वर्सेस लिक्विड है, और चौथा मैच एलजीडी वर्सेस एआर है। तो 2 अपर ब्रैकेट के और 2 लोअर ब्रैकेट के मैचेस है। तुम लोग को अगर ब्रैकेट दिखाऊं तो ये पहले लोअर ब्रैकेट के मैचेस है, फिर अपर ब्रैकेट के मैचेस है आज के दिन में। Memories have been made here in this rough location, but not this venue before. This is new ground. Absolutely new ground. I cannot believe how packed this is. The gamers have showed up. भाई बहुत लोग हैं क्या? नहीं रे, उधर खाली सीट है, वो साइड, वो साइड खाली सीट दिख गया मुझे। Yes, I've been to 3 of them. 3 of them here? Yeah, yeah. Which ones? थिएटर मोड में देखो क्या ट्विच? किधर है थिएटर मोड? ठीक है, थिएटर मोड। It's so nice. So nice. Yeah. This is awesome.
I'm sorry about team secret. बाय द वे दोस्तों, तुम लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा टीआई? If Puppy gets the squad back together, he'll win it. All right. Anyone else been to a TI before? Seattle TIs. Hey, Seattle TIs. Oh, you've okay, got okay. tons of badges over here. This man's he's been 7, 8 in this one. Whoa! Oh, show that off again. Show the people. So you've been to so many. What's your favorite TI memory of all time? भाई सारे टीआई को गए वो. Winning for sure. Any North American Dota fans? Who are you rooting for this year? Gaming Gladiators. ए नहीं नहीं नहीं, Gladiators, all right. वो तो आउट होने वाला है भाई. गेमिंग ग्लैडिएटर्स तो नहीं जीत रहा है भाई. Why are you guys booing? वो ये है क्या अपने चैट में भी गेमिंग ग्लैडिएटर के सपोर्टर्स? All right, who else we got? स्पिरिट, गेमिंग ग्लैडिएटर्स, लिक्विड. और बताओ दोस्तों, TI 6. TI. Oh, what do we got here? Hello. टीआई का पिक बनाऊंगा. फाइंड योरसेल्फ. वाओ जी, बता देना जब भी हो जाए मैट्रिक्स, शेयर कर दूंगा अपन इधर. 4. That's an ancient one, huh? Yeah, we were 15. When you were 15? Yeah, we just drove right down. How old are you now? 27. हाँ Wow. The math adds up. Does your back hurt? Actually, no, because I got the tied up. Oh! ओह, That one's for free, baby. All right, checks in the mail. There we go. All right, has everyone फ्री में ऐड हो गया भाई. before TI4? Yeah, let's go real back in time. Oh, my- TI3 maybe. TI3. We got TI3. All right, there's only Over here. 2 people. Okay, I'm too lazy to walk up that many stairs. Hello, so what TI were you at? TI3. ओह, ये आ गई भाई, ये बेस्ट है. Why are you here? ओह माय गॉड, Okay, they're still paying. ओह माय गॉड. Go say hello there. भाई ये बहुत ओपी है. हाँ? Hi, Neil. Blink twice if you need me to save you from slags. It's okay. You can do one more. Round. भाई केसी बेस्ट है. What's your favorite TI memory of all time, or TI3 specifically? I think being such an idiot about Dota and still having fun with the way the community was so welcoming. So Michael's skills and having people instead be like, "Hey, you dumb bitch," they were like, "Ha ha! You tried hard," and it was fantastic, and I've loved it ever since. केसी बेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ. Community, that's a famous thing about Dota. केसी और स्लैक्स एक साथ कंटेंट बनाते ना, वो I'm sure maybe, बहुत ओपी रहता है. पब्लिक का you were working by खुश हो yourself जाती है. for TI3? I gotta say, working by myself for TI3 can't even- is a highlight. That- Unbelievable. Can you guys believe she's चलिए still रुको alive? दोस्तों, That's crazy, guys. नाम All चेंज right, करते हैं well, अपन. so good to see you again. किधर रहता है यार नाम चेंज? Back to panel. Thank you, guys. Bye. नेम चेंज किधर रहता है? Crazy. We're gonna have to try and save slack for Casey there, but it would. ए नेम चेंज दिख रहा है क्या किसको? Without Casey, so it's so great to have her in the audience, having her appear to cause all of that applause for Casey there, and definitely just running up the bit there, making sure Slacks knows his place, that sometimes the solo venture is a little bit better than a duo with Slacks. I like that bit. So many shots were fired, like, and the guy with the tight hunter, like, yeah. चेंज हो गया नाम? कोई बता सकता है क्या मेरे को? It's amazing. I love this. ए ये क्या दिखा दिया मैंने? It's beautiful there. Do you guys have a favorite TI memory? You got many under your belt over there, Lucas. Hard to choose. I mean, डोटा और वेलकमिंग our community होता है कोई कोई just लोगों के feels लिए. magical, so kind of हाय डॉमी. one moment. अरे ट्रू साइड वो लोग ने डाला ही नहीं यार, पता नहीं. EG and going to the finals. Oh, so you want to do the inverse? We had someone in the audience. He's like, my favorite memory was EG winning, and yours is beating EG. Beating EG, yeah. All of Roman's memories are, I remember that time the crowd cheered for me when I stood in for Empire, etc. I think my favorite memory has to be, TI3 Grand Finals, Navi versus Alliance. It's probably the most iconic moment of Dota for me. Yeah, I'm going to be the cringiest person ever and say my favorite memory is the one that we're about to make today. It's going to be a lot of fun. I had to throw that one in there. We got Casey back, and she had a मेरे lot को of ये fun देखना है कि catching नेम up चेंज some हुआ fans, getting to हुआ have क्या some स्ट्रीम conversations का? with them. हाँ हुआ. Okay, you guys look especially lovey-dovey. What's going on here? We got engaged this weekend for this trip, so yeah. Right before our flight to Seattle. Yeah, right before we left yesterday. We've been here. So she could wear the ring all weekend. Let me see the ring. It was my aunt's, so it's a family ring. So he got it resized and everything on his own. And We've been so excited for this trip. Yeah, we've known each other since high school. भाई एंगेजमेंट करके टीआई देखने आए वो लोग. देख रहे हो दोस्तों? About time, sir. You understand what she means? अभी एंगेजमेंट हुआ है. डिस्कॉर्ड पे आ रहा है क्या कोई?
मेरे को अकेले को बात करने में कैसे तो हो रहा है? कम डिस्कॉर्ड गाइस, कोई भी आ सकता है तो. We're excited for the Crimson Skins. Yeah, the Crimson Witness cash. We're excited just for Dota, the game. This is my mother. I got her into Dota because TI8, TI9 best finals, bro. Hands down. TI10 as well. Spirit versus LGD. 2017, and she knows all the teams, all the players. She's a huge fan. Wakes up like 6 in the morning to watch Dota. Getting the goodie bag. भाई 22 वोट आ चुके हैं गाइस. लाइक बटन दबाओ YouTube वालों. So my bad, and ओके डॉमी आ जाओ. ओह ये लीना का क्या है? pretty cool. Are you here with? अरे दिखाओ ना यार. They're right up there, I think. We Yeah. just wait. I'm sorry. Wait. Where are you? No, I mean they ditched me. They ditched me at this point. Wait, you let me take you on an escalator to nowhere and just your friends. Yeah, anything for you, Casey. Tell me what team you're here for. Nouns all the way. Nouns. Nouns. Dota. We made it. Which team are you here for? It's Nouns. Nouns. Okay. What about you? LGD. Yeah. Yeah. Spirit. Yeah. What about you? Team Spirit. I'm getting tired. What? Oh no. Which team? Russia. Russia. Just Spirit. Russia. रशिया बोल दे रहे. Which team पूछा तो? Okay. Phil, I'm very tight. One of me, bro. What are you ready for? What are you ready for? No, wait for What about you? What about you? Quick, we're getting to the end. no. इसको तो पता भी नहीं. नाउन्स नाउन्स बोल रहे हो. What do you mean, where is Slacks? Get out of here. स्लैक्स पूछ रहे उसको. Oh my god. Taking home the Aegis, and that's the top 8 teams. But we had many other weekends of Dota before this. We had groups 2 weekends ago. We had playoffs last weekend as well. With playoffs, key memories. Looking at मुंबई इंडियंस बोल देते. अपने लोग बोल सकते थे जो देखते हैं. ये ऊपर का ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द प्लान बराबर गया है. ओके, स्पिरिट वर्सेस वीपी. स्पिरिट जीता. लिक्विड वर्सेस टैलेंट जीतना चाहिए था बट लिक्विड जीता. एलजीडी 9 पांडा एलजीडी जीता. एंड अजूर वर्सेस कौन था? टीएसएम नहीं, कौन था? मैं देखा भूल गया रे दोस्तों. अजूर वर्सेस कौन था? नाउन्स. अजूर वर्सेस नाउन्स था और अजूर गया. परफेक्ट. वो तो बॉटम ब्रैकेट में जरा सा लोचा हो गया. Gave us one of the greatest TI Cinderella stories of all time with Team Spirit at TI10, and it feels like Virtus Pro are on a little bit of potentially. भाई इंडियन रहता तो बोल ही देता. मैं बोल रहा हूँ ना, 100% बोल देता. Right in time. I did not expect them to get this far, and if they've gone under the radar that long, they may catch everybody by surprise. So that is my team to watch for today. I feel like there's another team that has a similar sort of Cinderella story potential for themselves, Reza. That's Nouns. I know you're. हाय वेदांत. यार क्या बोल सकते हैं यार. टैलेंट मेरे को भी अच्छा लगता है टीम. Of course I am. It takes me back to the memories of DC times when we were the dark horse, when we were not expecting anything from like our team, and they're kind of in that position as well, where like there's no pressure on them, but they can only perform, and they can perform in front of their audience, which is like amazing, and it gives them energy, and you know we might see some unexpected results today for sure. Obviously TI में unexpected results ही आने हैं भाई. That's what you talked about, Rezo. Not only in this TI कोई फेवरेट जीतता ही नहीं है. कोई फेवरेट रहता है ना TI जीतने वाला, वो टीम जीतता ही नहीं है. गेमिंग नहीं जीतने वाला है. गेमिंग ग्लैडिएटर साल भर जीता है. ये TI में नहीं जीतने वाला है भाई. Let's go. Road to the international playoffs. RTZ हारने के बाद. Oh no. EG Pakas. Krislak. Oh no. ये तो वो इसका प्लेयर है. केड. ताबो. नहीं क्या पता, नाम भूल गया मैं इसका. जैब्स. Oh no. Entity Stormer. 9 pandas. Solo. Moon Meander. Timado. Let's go. TSM. भाई सारे प्लेयर पता है मेरे को. Timado. 9. टुंड्रा वाले आउट हो गए यार. टॉपसन खेल रहा था. आई वांटेड टॉपसन. सैडली वो भी बहुत निकला. सैज. Divine Rapier. Bedboom versus Talon. Divine gone.
रिप्ले बग हो गया, देख रहे हो एडिटिंग में। प्योर बेस्ट प्लेयर है मेरे को लगता है। प्योर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड प्लेयर। एंटिटी को उड़ा दिया वीपी ने। गेमिंग ग्लैडिएटर वर्सेस EG। डाजल ऑफलाइन खेला था इस। भाई क्या बचा है वो। टोफू एंड सेलरी। लेट्स गो LGD। ये अपना टीम है भाई। हाँ, ये गेम लाइव देखा था। 9 पांडास के सामने खेल रहे थे। डोटा सिखाया था उनको LGD ने। शीरो was playing डार्क पिलो कैरी। नाउन्स भाई वो गनर अर्थ स्पिरिट क्या खेलता है ब्रो। गनर अर्थ स्पिरिट ये गेम में इतना ओपी खेला था ना। गनर अर्थ स्पिरिट इज जस्ट टू गुड। लिक्विड वर्सेस टैलेंट। स्पेक्टर बच गई भाई उधर से और वापिस आके मार भी दिया। AR Lou as well. FY and Somnus are back. FY Somnus 40। Let's go यात्रो मिपोश्का। FY 40 सैलरी LGD लिक्विड। लेट्स गो। TI चालू होने के पहले मैंने 4 टीम चूज किए थे, 5 टीम चूज किए थे। 5 में से 4 टीम अपने अभी तक मेन इवेंट पे, पता है ना। 4 टीम का मैंने बोला था। अपना सैडली टंड्रा आउट हो गया, नहीं तो 4 टीम का अपन अपने है अभी तक। 4 टीम कौन है पता है ना अपने। LGD, लिक्विड, स्पिरिट एंड बेडबूम। ये 4 टीम है। There is the obvious Team Spirit minus LOL are going to have their chance to be able to lift the Aegis for a second time over the next few days. But also Toronto Tokyo is still in the running on his new team, Bet Boom, and we have Y Smile still left there on LGD. Yeah, I'm really glad that Toronto Tokyo is up there because it was a really difficult decision for him to make to leave the Team Spirit. After winning TI and not having the greatest result TI afterwards, he, also changed the position, which is a bit of an awkward one. Potential repeat champions 7 लोग हैं। 7 6 सॉरी 6 और वो 3 अलग अलग टीम में है। एक स्पिरिट के 4 प्लेयर, बेडबूम का 1 प्लेयर और LGD का पोजीशन 5 YU Smile। Yeah, but also Y from LGD. I feel like LGD got so close TI10. It felt like they had the hopes and dreams of their entire region on them for so long, and it felt like we saw the decline of the Chinese region afterwards, where teams just did not perform the year after. We only had 2 Chinese teams come into this TI, but the 2 that came in with Acer and LGD, they look so good. They look like they're there to reinvigorate the region, and a 2-time TI win for Y could be just what they need. So I am really excited to see him here contending again in top form. There's a lot of hopefuls, and I am excited to see if that's going to happen. And obviously, it feels like no matter what does happen, Effie, there's going to be that China region sort of being reborn off of the back of TI12 here. But there's also new hopefuls, right? Everyone that hasn't won is a new hopeful, but some people, it's their first TI, Rezo. We got a lot of people first on TI. and these are all
all of the players, first time TI, first time here in Climate Pledge Arena, first time on this main stage for the international, and they could in 3 days time be LGD के 3 प्लेयर, अजूर के 2, VP के 3 और इनके 2 Nouns के. Like everybody was new, but now you have this synergy between like new and all, and that's why, like that's how you can Resolution सुन रहे रे. For example, they have like on their squad that G, like very veteran player like FNG that's leading the team right now, so they're like they have what it takes to actually like be the champions. And you know, there's possibilities, definitely. I feel like it also adds on to ये लाकोस्ट कुछ बोल भी रहा है क्या वो पैनल पे? Picking up the Aegis again for themselves would be massive for LGD to win, but they've got 3 new players too, so even more so that it's like there's a lot of hope for new players in that region. Yeah, and I'm sure their veteran teammates want them to experience the feeling of winning something. I mean, we saw it in the Riyadh Masters with Team Spirit. Yashiro said that the reason why they tried so hard is they just wanted Laurel to experience that sensation of winning and picking up the trophy. So for that to happen for all of these hopefuls, that would be incredible. But also, I just want to shout out Gunnar because it's wild to think that he's a TI rookie. It feels like he got so close every year to almost qualifying for TI. He's worked TI as an analyst, but for him to finally be playing a TI as a player and in the top 8, in the playoffs no less, in his home region, I mean, that is a In his home region, let's go. Last chance qualifiers, that's how far and how close they were to be able to, you know, crowning themselves as TI players, but this almost feels like a story for them, like a fairy tale for them. We've had a lot of faces return here for TI. We saw Casey. We're going to see another familiar face. It's Purge. 362 days. Purge. Time since Tundra lifted the Aegis of Champions in Singapore. Since then, 123 teams in 6 different regions competed in leagues and majors to make it here to the road to the international. We started on that road at TI with 20 teams. In the last 2 weeks, there's been 126 games. That's 6 rampages. There's been 603 buybacks, 4,866 observer wards, and 343,461 dead creeps. Now, the road has been littered with heartbreak and hearts of Trask, but that road led us here back to Seattle for the first time in 6 years. So we're left with the final 8 teams. That's 8 teams who are fighting for one goal, and that goal is to Hello, lift OG. the Aegis of What's up? Champions. Purge giving us all the numbers there, and I got some more numbers for you. That's the times that we might be seeing our teams playing. It's our schedule for day 1. चालू कर दो यार मैचेस. गेबन को बुलाओ, गेबन को अनाउंस करने दो. It's going to be followed up with another one between Bet Boom and Virtus Pro. We're going to then shift Bet to the upper Boom. bracket. We have Team Spirit against Liquid. We'll see if they're able to. So Nouns versus And GG then guys. LGD Azure going to have that interregional China showdown. It's hard to choose which one is going to be like the most exciting one because all of these are bangers, you know. The interregional matchups, they might be, you know, people think, oh, they're not going to be as hype. But for me, LGD against Azure Ray, this is going to be the hypest one because they didn't get the chance to play as much because Azure Ray, they formed during the 3rd DPC tour. So I want to see, you know, who's going to be the best Chinese team here. And it's not Purge just invo करे भाई. old LGD versus new LGD, right? So there's always that kind of 10:30 को स्टार्ट है, वो तो है, बट मैं देख रहा था. version of that team. हर्षल केपी, let's go. Regional rivalries. We saw it in South America when EG and Beast Coast had their big roster shuffle. And they both wanted to prove that we are the best players in this region. We're better than you. So I feel like डोटा we बहुत saw लोगों को that with सिखाया भाई LGD उसने, and Azure पर्ज ने. A lot Yes. of pressure on the teams for today. Hopefully they're not putting it on सारी themselves पता नहीं like यार, they did जब तक मैं earlier this नींद नहीं आ रही week. तब तक तो Walking on देखूंगा. the red carpet, we see all of our teams trickling in there. What type of emotions does that bring back for you, Rezo? That's pretty cool. Like when you walk in on this red carpet, like you feel like you're, you know, you're a success. You know, people are watching you. People wanted to see you like walking on that stage, playing on that stage. It's a very incredible feeling, to be honest. It was nice to hear some of the audience as well cheering when they saw the players that they're obviously here supporting, walking up as well. So we know the players are in the building and they're prepping themselves up for the day that is going to unfold for them. And any big matchups that you want to highlight, Effie?
I mean, Because Lacoste couldn't pick, right? Lacoste couldn't pick over there. He's an undecided Andy. Yeah. Outside of the one we just talked about, I mean, I feel like we have to say this Nouns game. Hi, Om. Gladiators match What's up? Has to be the one to watch. I mean, not to be biased because we're starting the day with it, but it could be one of the biggest upset in TI history if Nouns, a team that nobody expected to make it this far, didn't have a good year, knock out the team that won every major back-to-back this year. I mean, that would be a crazy story. They have it all lined up for themselves. They just have to get over that last little hurdle, that bit of actually winning the series. We're not up चलो भाई बजाओ वो हॉर्न बजाओ हॉर्न पीछे हॉर्न बजता है पता है ना जब भी मैचेस चालू होने रहते There's always an essence of calming the nerves if you're seeing other people on stage, if you see other people experience it first, that you might be a little bit in a saner headspace. But 4 days break, how does that alter one, Reza? How do you take such a big break off after playing for 1 day? 6 minutes. I mean, I think there's also a struggle of like teams finding opponents, right? Because like you don't really want to show your strategies, and you get to pick like only a few teams that you're like very for like on the different side of the bracket, so you can practice your things and without worrying that people are gonna steal them or anything like that. I know for gamings, for example, they didn't want to scream like many teams because they thought they would, they teach other teams like how to play better instead of like they're improving because they're already like at a very high level, right? So it's definitely like a struggle for teams. सुना क्या गेमिंग ज्यादा टीम से के साथ स्क्रीम नहीं कर रहा था क्योंकि उनको लगता था कि वो बहुत हाई लेवल पे है और वो लोग दूसरे को वो हाई लेवल सिखा देंगे इसलिए वो लोग को नहीं स्क्रीम करना था बहुत सारे टीम के साथ. How would you spend your 4 days if you were coaching or as a player, Lacoste? It's not an easy one because these 4 or 5 days. Yes, भाई कोमोडो ड्रैगन्स के साथ खेलना ही नहीं है भाई. खेला मैं दोपहर को आ गए थे कोमोडोस. They were the team that, if you wanted to win a tournament, you needed to be prepared. ये रेप्टाइल्स आ गए थे सारे. And Nouns, they've also been Azure Ray, I like to call them the hipster team. F1 Somnus, nice. A lot playing all of these new things, so I'm pretty sure that in these 4 or 5 days they managed to, slip a couple of these heroes that we maybe haven't seen, and they're going to be ability नहीं, ability draft नहीं खेलता bro. Not my game. Yeah, I mean, I feel like this 4-day break is really interesting because when we have these really cool Cinderella type runs at TI, it happens because nobody has time to prepare for the team that suddenly shows up. But 4 days puts a wedge in that entirely, right? And then it becomes about your preparation. It becomes about your draft notes, how well you're going to go into a series in terms of how you're going to respond to their heroes, how you're examining them over the next few days, and how your players do personally, because that would change player to player on how they can reel in their emotions, if it makes them more anxious to wait before they play, or if it makes them more calm. So there are a lot of variables that we're not used to seeing. So I have no idea. Hi Somnus. I like that you did mention Somnus match है तेरा थोड़ी देर बाद. Ready है ना? Are you ready, my friend? You're going up against LGD. 7:30 बजे सुबह मैच. Some changes between playoffs and groups of heroes that we're seeing. So between groups and playoffs, AA went from a 28% contest rate all the way up to 65%. भाई खून जला ना भाई. आफ्टरनून एक्सपीरियंस तो और गंदा था. Went up to 92%. मेरे 2 गेम्स थे जो 15-20 की लीड था. दोनों गेम में ऐसे हारा हूँ. कमबैक सामने वाले को थ्रो कर दिया हम लोग की टीम ने. कोमोडोस ने जाके फड़फड़ करके क्या बोलो यार बहुत इरिटेट हो गया. वो नहीं क्या ऐसे भागते एड़े जैसे वैसे एड़े जैसे मैप पे भाग के फीड कर दिए और फिर खत्म. This is just OP. We don't know how to counter it, so most of the time you'll see Bristleback being banned because it's Hello, so ED. difficult. Like a lot of teams. Evil Disclosures. What's up? Especially Gaming Gladiators in their last series that they played it 2 times and they looked amazing with it. I like how Liquid approached the No new hero, नया हीरो आएगा मुझे लगता है. Announce करेंगे वो लोग. In the game that we're gonna kill this Bristleback 10 times. They will announce a new hero, guys. This TI. Wait for it. Like 4 people bring on his lane and like keep killing jobs in that game, so that's the only approach they knew how to how to stop that here. But basically AA has a unique mechanic of like stopping the region, and because like it's made of Heart of Tarask, right, you guys like stopping this item from being useful, and that's why like this hero is in top. But for Venge, like for example, it's very weak on lane, it doesn't provide as much damage, and you need to have damage supports in this meta.
Yeah, but I'm also just really glad that you brought up Vengeful Spirit kind of being shafted. कोमोडो रनिंग नहीं वो नहीं देखा, बट मुझे मैं इमेजिन कर लिया कोमोडो रनिंग कैसे रहेगा. If it's being played online and not संडे का अनाउंसमेंट होगा अपने यहाँ मंडे अर्ली. हाँ, which was not at this संडे को करेंगे कि सैटरडे को करेंगे पता नहीं. वो लोग ने अनाउंस नहीं किया है कि क्या रहेगा, शो मैच रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या कैसा रहेगा, कुछ नहीं बोला लोग ने. So a support like Vengeful Spirit who just gives you a damage amplification but not that much team fight presence will always be pushed away in favor of your Phoenixes, your ancient apples. यो ध्रुव दोस्तों डिस्कॉर्ड पे आ रहे हो तो आ जाओ, मैं अकेला बैठा हूँ. टीआई बात करके देख सकते हैं अपन. Reel in their nerves. You simplify Dota, you play for team fights, you play for the big plays. बिफोर द ग्रैंड फाइनल्स नहीं रहता है, वो जल्दी रहता है. पता नहीं एक्चुअली वैसे भी हो सकता है, वो 2 घंटा ब्रेक रहता है ना ग्रैंड फाइनल्स के पहले. करेक्ट हो सकता है मोहित. Their last 4 days, that anticipation, those nerves, are they ready? How are they going to be sitting it for themselves? And it does mean the checklist is getting towards the bottom. We only have a couple more things to do. स्ट्रीम पे नहीं देख पाऊंगा रे, कॉपीराइट लगेगा. हाउ कोमोडो रन्स. लेट्स गो. ओपनिंग सेरेमनी चालू हो रहा है. 10 9 लेट्स गो. TI-12 लिखा है वो नोट्स पे, देख रहे हो क्या उनके म्यूजिक नोट्स पे. क्या बजा रही है भाई इतना एज रह के भी. गा भी रहे वो लोग कुछ तो. ठीक है बॉयस. क्या गा रही है भाई ये. हेलो यो व्हाट्स अप. एक सेकंड में ईयरफोन्स पहन रहा हूं. भाई फुल रे एक्चुअली. ओ माय गॉड. ये क्या बोल दिया रे. हैव यू नोटिस मोस्ट ऑफ द एनी ऑडियंस आर बॉल्ड. एक्चुअली नोटिस किया मैंने अभी नहीं क्या याद आ गया मेरे को. करेक्ट. सबके बाल चले गए भाई, पानी खराब हुआ लगता है उधर. म्यूजिक अच्छा है.
चेंज बंद. भाई और कुछ तो चालू है. ये डोटा का मेन्यू म्यूजिक ही तो है. हाँ बट मुझे लगा खत्म हो गया. कितना हार्ड है ये जो गा रही कितना हार्ड है भाई. वो टोन में गाना. Let's go. मुझे इस साल का आर्टवर्क बहुत सुंदर लगा. बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त है. पहली बार वो लोग ने जिस पे ऐसा नहीं मुझे लगा कुछ नया कर रहे वो लोग. ये पहली बार वो लोग ने कुछ तो अलग किया है. नहीं तो नॉर्मल प्लेन एजिस रहता था. नहीं वो फायर वगैरह वाले भी तो आ रखे हैं पहले. अरे नहीं रे, ऐसा डिजाइन नहीं रहता था बोल रहा हूँ मैं. जो उसके ऊपर ये दिख रहा है क्या तेरे को? कलर था रे, समझ रहे क्या? रेड वगैरह ये ब्लू के साथ तेरे को उसके साथ उस पे ऊपर डिजाइन दिखता है. सियाटल टावर. लेट्स गो. तू आगे क्यों है? स्पॉइलर दे रहा है चैट का. मेरी क्या गलती? ट्विच पे देख रहा हूँ. मैं भी ट्विच पे ही देख रहा था बट तो थोड़ा पीछे रह गया था. वॉइस ऑफ टीआई. इसका नाम क्या था? नाम नहीं पता मुझे. मस्त है बट आवाज उसका. सबके विनिंग मोमेंट्स दिखाए भाई और लूजिंग मोमेंट भी दिखा रहे. वो तो 2018 था. FY का बेचारे का. सुमेल. अर्शेकर. यस अर्शेकर वाला है वॉइस ऑफ टीआई. यस पज दोनों. यस SF भी शायद. आई एम नॉट श्योर. यस पच तो है. आर से था उसका नाम. नाम नहीं पता भाई अपन को. भाई कैसे फोटो निकाला है लोग का? बैठे कैसे वो लोग? ऐसा देखने में कितना मजा आता है रे. ऐसा म्यूजिक चल रहा है उसके बीच में बराबर वो लोग ये दिखा रहे हैं. कास्टिंग मस्त लग रहा है. चैन. लेट्स गो. कितना आगे हूं? नहीं बराबर है अभी. टोफू सुंदर आदमी है यार. हीरो है हीरो. टोफू जाए दोनों. यार मेरे को अमार बुलाते कोई लोग. वैसे दिखता हूँ क्या मैं? ओ वाओ. वो हीरोज आ गए अंदर लास्ट फाइनल के. ओहो हो. और वो एजिस भी उठाया उसने. एजिस रखने. ओहो. Please welcome the finest Dota teams in the world. Let's go. ये नहीं जीत रहा है भाई टीआई. जो टीम साल भर जीतती है टीआई नहीं जीतती. ये नाउन्स पता नहीं. डार्क हॉर्स है, कुछ भी हो सकता है.
भरोसा कम है नाउंस पे। बेडबूम जीत सकता है। नहीं जीतेगा नहीं एक्चुअली, ये जाएगा आगे तक पर बीच में ही लुढ़क जाएगा। टॉप 3 तो है बेडबूम का, लुढ़क जाएगा किधर तो बीच में। ये एक डार्क हॉर्स है भाई, विर्टुस प्रो। ये एक विनिंग टीम है भाई, टॉप कंटेंडर। स्पिरिट और लिक्विड बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी। यस, लिक्विड भी है टॉप कंटेंडर। लेट्स गो इंसिग्निया माय मैन। ओ कर्सर सॉरी, कोई आया था अभी। लेट्स गो एलजीडी। किधर आया था? एलजीडी में कौन सा रिकॉग्नाइजेबल है? क्या कोई प्लेयर है? कोच है, उनका पोजीशन 5 है, मिड लेनर है। लेट्स गो अजूर रे सोमनस। वो भाई अपनी टीम चलो। सोमनस और वो है 40 ना क्या उसका? ये 8 में से अपने 4 फेवरेट्स है, बेडबूम, लिक्विड, स्पिरिट एंड दिस टीम। एक्चुअली अजूर रे भी रहे, अजूर रे भी पसंद है अपन को। चाइनीज डोटा, एलजीडी और अजूर रे पांचों। हाँ बहुत सैड हूँ, टैलेंट हार गई। हाँ ना यार, जीतने चाहिए थे वो लोग। और मेजर से रिप्रेजेंटेशन था उस तरफ से। ओ आ गया भाई, लेट्स गो। लुक ओवर योर शोल्डर गेम। भाई रेज करते करते आ गया। डोंट थ्रो योर हेडफोन्स। ओके, नाइकी के ग्लासेस हैं। गेम थ्रो योर हेडफोन, लुक ओवर योर शोल्डर। क्या है भाई? Remember, Gabe, it's just a game. Oh yeah, that's true. Wait, did he just tilt you with your own voice line? Yes. What? फोड़। आहा, इसको पैसे की कमी नहीं है भाई आदमी को। अल्ट्रा वाइड मॉनिटर तोड़ दिया। वही अल्ट्रा वाइड से वैसे एडवांटेज मिलता है। रुक। Many of you, I have a complicated relationship with Dota. What's not complicated is when you bring the best players in the world together at the highest level of competition. And I'm personally very pleased that we're able to do this in Seattle for the first time in half of a decade. So to all of you, welcome to the International. Let's go. ये लाइन के बिना टीआई होता ही नहीं है भाई। It's been 6 years. इसके वेलकम टू द इंटरनेशनल के बिना होता ही नहीं है डोटा। अच्छा है रे, एनए क्राउड फुल जैम कर दिया है। क्या बोल रहा था? अल्ट्रा वाइड मॉनिटर पे एडवांटेज होता है क्या? नहीं, डिसएडवांटेज होता है। उतना ही दिखता है, बस स्ट्रेच दिखता है। ओह आई Climate Pledge Arena in the world coming down here to fight for their lives. This is what we live for, baby. This is it. We brought 20 teams here on the road. चाइनीज टीम पसंद है बट गेम में चाइनीज नहीं चाहिए भाई। Are you guys ready to see it? वो तो सही है, सिर्फ प्रो टीम पसंद है, प्रो ओनली, बाकी कोई नहीं भाई। Ladies and gentlemen, welcome back to Seattle. Woo! कितने 6 साल बाद वापस? Yes. It was basically where it all began, right? I love TI in Seattle. I feel like this is the best TI that ever have been. I'm super stoked for Seattle. Arena was a really important place for Dota. That arena was really magic. I've heard from a lot of players that Seattle TI is always like something special. लगा दिया फुल स्क्रीन ब्रो। मेरा कैमरा भी बंद कर दूं क्या दोस्तों, बता दो। Like grateful to get to that city. I think it's also a really beautiful city. नहीं वो रहने दो, जगह नहीं लेता It's gonna be the same arena like the last TIs, right? वो और वो वाला जगह लेता है जिधर क्या बोलते हैं, लोगो वीगो रहता है या एडवर्टाइजमेंट रहता है, तो वो ठीक है। प्लेयर कैंप भी नहीं जाता है मेरे कैंप से। 可能会有更加特殊的自信吧，然后一切都还是要先等到去呼吸西雅图的空气吧，然后去感受一下那边的氛围。Muy emocionado, o sea, fue mi primer. Most entertaining team at TI was Wings Gaming, पता है? ये तो एलजीडी का पोजीशन 5 प्लेयर उनका कैप्टन था ना वो टाइमिंग पे भी। कैप्टन नहीं था, 5 ही था कैप्टन, वो ब्लिंक था शायद से।
I'm really excited for TI to be coming back to Seattle. The crossing of worlds there. And like Hey having model members puddle, or what's friends up get bro? to, like, see that piece is, Long like, time. really cool and ये special. आदमी मेरे को पसंद ही नहीं है, Queen. Having TI back बहुत in Seattle is rage gonna करता है. I don't like him. I think it's gonna tie into I like Zai. a lot of the Zai is a nostalgic good value player. that I have for my early TIs. मेरे को Quinn funny लगता है actually. हाँ. As a pub player I want अच्छा नहीं है. to find some Starbucks But in otherwise Seattle funny. and try it. It's okay. Yatro is a very god level player. Basically, it's like the OG वो यात्रा place था क्या? in some ways. हाँ, वो जो So है Starbucks I'm पिया really ना. excited for it to be there. हाँ समझा. और वो जो हवे में फेंका वो देखा क्या? शावेट. It's such an वो जीता था इधर TI 14 मतलब हाँ वही 4 Seattle was like the 2014 में. Go to TI and speak मराठी और हिंदी. सवाल ही नहीं आता भाई, मराठी में बोलूंगा मैं. पता है क्या स्टेज पे जाके? विशेष नहीं भाई. Dota players' heart, whether you're up there on the stage playing as a pro player, if you're at home. इस साल चाइना को जीतना चाहिए. बहुत टाइम से नहीं जीता. सवाल ही नहीं रे. कोल चाइनीज LGD जीतना ही चाहिए भाई. So much for us. And now we have our बहुत cathedral सालों in से the नहीं जीता sky. है This is Beast. the theme, everything that we've been seeing building up to this moment, Effie, of this year and this past month. Dude, I'm so excited. प्लेयर का दिख I रहा है कि just कितना can't बड़ा contain बूथ myself दिया है watching उनको. those वो videos, LGD का just दिख रहा है कितने लोगों का watching the सीट दिया है उधर. memories हर एक being प्ले here टीम का दिया है again. वैसे देखेगा तो. There are no words to put this feeling. नीचे दिख रहा है ना, उस special, टीम unique के नाम लिखे हैं ना, experience for me to, like, to उसके be पीछे watching बराबर like, you know, सीट्स है टीम having के to लिए. deal with the वो देख pressure सामने and, like, दिखेगा. just दिख रहा है क्या? purely enjoying the picture of it and the memories and, बहुत like, सारा है. what's happening बहुत ज़्यादा before दिया है. is just such an अच्छा वो incredible उसके लिए feeling. होगा ना Like, अपने I'm अपने really grateful to फैमिली be here, मेंबर्स वगैरह को. हाँ हाँ लेके आ And what सकते about हैं. you? Look, also going to be having our first teams, our first 2 teams walking out on stage very soon. Not just yet though. I mean, this is magical. इन्होंने glass panels वाले booth हटा दिए. Even explain it. Look at how beautiful this is. This is by far. Oh नहीं यार, let's go. Let's go. बच गया हॉर्न. वही बोल रहा था मैं. Fabled. इतने सुंदर लगते हैं ग्लास बूथ. वेस्ट है रे, बहुत मस्त लगता है. इसमें खेलने का फील ही अलग रहेगा. भाई मॉडल पडल तू मराठी है? क्या बोल रहा है? आई जावली. मेरे को पता नहीं था. We're going to be graced with Gaming Gladiators, our first team to climb at Pledge Arena. Quinn. Imagine if an SCA team wins TI, those country people will do random shit and say we won TI. सवाल ही नहीं आता भाई. पिनॉय वाले जीत गए ना अगर, खत्म. पब्स में नंगा नाचेंगे वो लोग. कमोडोज, सारे कमोडोज बाहर आएंगे भाई. भाग भाग के. मैं नहीं चाहता कि कोई पिनॉय टीम जीते. भाई दिमाग खराब होगा मेरा. मैं कुछ बोलूंगा पिनॉय वगैरह, वो कहेंगे हम TI जीते. Gaming Gladiators. आवाज कर रहा है. पहली टीम उड़ा देगी तेरे को. Nouns. कब तक स्ट्रीम होगा? आई भी नहीं. व्हाट्सअप ब्रो. यार पता नहीं यार, जब तक मैं जगा रहूंगा, जब तक है जान. अरे गनर बहुत ओपी खेल रहा है. वो उस दिन अर्थ स्पिरिट इतना ओपी खेला है ना उसने. यामसन पहले कहाँ था? वो एनए के टियर 2 टीम्स में रहता था. People visiting in person have a chance to get access to secret item drops. Yes, Crimson वाले वो भी. पता नहीं अपन को कब मिलेगा. I think इस बार मंकी किंग का कुछ आएगा क्योंकि ईयर ऑफ द मंकी चल रहा है. नहीं पता नहीं. हर एक गेम में मंकी किंग. तो पता है क्या, वो बेचारा 23 सैवेज हारा रे. ओके वो हारा और उसके बाद उसकी स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा था क्रिम्सन वाला ट्रेजर ड्रॉप हुआ है उसको. नहीं कि गेम खत्म होने के बाद वो एंड्स के वो सब आता है कि क्या मिला है इन्वेंटरी में वो सब. ओह माय गॉड, उसका वैसे था कि वो हारा हुआ दिख रहा है उसकी स्क्रीन पे, वो क्रिम्सन वाला ये दिख रहा है. रेडिट पे इमीडिएटली लोग यू लॉस्ट टीआई बट यू गॉट क्रिम्सन ऐसा वगैरह मीम्स बनाए थे. हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है क्या क्रिम्सन? नहीं, जो तू उधर अटेंड टिकट रहेगा तो ही होता है. टिकट और प्लेयर. तेरे को स्टीम अकाउंट उसका टिकट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, फिर रैंडमली ड्रॉप होता है. एक तो 100% मिलता ही है
उसके साथ और मिलते हैं ड्रॉप्स चांसेस है पब्लिक को। हम लोग को नहीं मिलेगा मतलब? नहीं हम लोग को कैसे मिलेगा, वही तो बोल रहा हूँ, टिकट है क्या तेरे पास टीआई का उधर का लैन का? यार क्या बकवास है, मुझे भी चाहिए क्रिम्सन वाला। तो वैसा है, टोफू खिलाड़ी दिखता है। भाई इतना बड़ा नाम है, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा उसका इसका। टीआई ट्रॉफी नहीं, क्रिम्सन पे खुश रहे। हाय कैसे हो गए मैं, व्हाट्स अप? I'm just happy to see Gunnar on this stage. Like I know this guy for a long time, and there's a story about him. Like when he ये मूव पहले भी फाइनल्स में आया है पता है टीआई के? went straight up like to the basement and like डिजिटल केओस नाम की टीम में आया था वो। This is shows like उसके साथ will of like VR no matter what. And I'm really happy that I look at him right now like on this stage performing like already. GG are angry that they are here in loser bracket and mean business कुछ नहीं, उड़ा देंगे भाई उनको लोग। हाय फैंटम कैसे भाई, किधर? flavor or variety of Dota, I would say. तू किसको सपोर्ट कर रहा है वैसे? It's taken them this far. So I'm just really excited to see if they've cooked up anything new. If they're gonna keep doing the things that we've seen, or if they've maybe they're gonna bust out that dark. सबके फोन दे दो भाई, एक बॉक्स में डाल दो। But that seems to be the new flavor of the week here. भाई केवन वो टीम से निकला 20 कोस से और वो सारी टीम उड़ गए और केवन आगे गया है। लेट्स गो अकेला। K1 TP, one of the reasons why the games are longer because he tends to farm ठीक है फैंटम, more than some of the other carries, but his PL performance against TSM, he was really pushing the limits with the hero. दोस्तों तुम लोग को एक छोटा ये बताओ तो पॉपस्टॉर्म तो कर नहीं पा रहे सैडली हम लोग, बट हम लोग कुछ तो टीआई का एक स्पेशल स्ट्रीम करेंगे पता है दोस्तों, शायद से टीआई वॉच पार्टी प्लानिंग चल रहा है, कल प्लानिंग करूंगा पूरा। टीआई वॉच पार्टी करने का एक स्ट्रीम पे करेंगे जिधर मेरे साथ और लोग रहेंगे और हम लोग एक साथ मिलके, समझ रहे हो क्या, बैठ के टीआई देखेंगे। लैन वाले लैन पे मेरे पास 4-5 लोग रहेंगे एंड तुम लोग भी रहोगे ऑनलाइन मेरे साथ, एंड देन विल वॉच टीआई टुगेदर फाइनल्स, ठीक है? फुल चिल करके एकदम आराम से देखेंगे। यस दीज आर साउंड प्रूफ बूट्स ब्रो। इनके बारे में पूरा एक पोस्ट बनाया था डोटा वालों ने। हाँ ना अभी रिसेंटली कि क्या कैसे वो लोग ने निकाला और प्रॉब्लम होगा, मैंने भी पढ़ा। डोटा का कुछ भी आता है ना मैं पढ़ता ही हूँ भाई, पैच हो ना हो कुछ भी जो इन गेम आता है वो पढ़ता ही हूँ मैं। आज का वो लोग ने डाला है वो भी पढ़ा मैंने। हाँ इंटरनेशनल वाला भी हेलो मानव सिंह, इंडिया की एशियन गेम्स की टीम कैसे सिलेक्ट हुई थी? तो एशियन गेम्स की टीम के क्वालिफायर हुए थे 2022 में, तभी मैं थर्ड आया था उसमें, हमारी टीम थर्ड आई थी, बट अकॉर्डिंग टू मी वो लोग ने 23 में 2022 का कैंसिल हुआ था एशियन गेम्स, और वही जो टीम 2022 में क्वालिफाई हुई थी वही टीम 2023 में जाएगी, ऐसा कुछ तो डिसीजन बनाया था ESFI ने, और उसकी वजह से सेम टीम गई और उसमें से 2 प्लेयर ने तो ऑलमोस्ट डोटा बंद ही कर दिया था, वैसे प्लेयर गए तो इधर तो वो बुरा लगा मुझे। फेयर चांस वापस होना चाहिए था, क्वालिफायर्स होने चाहिए थे, बट क्या ही कर सकते हैं, हुए नहीं। Hey Ricky Maru, let's go LGD. फैंटम डिस्कॉर्ड से कमेंट्री करेगा, यस। हाय रॉकर, हाय प्रणय, अरे मैंने अभी देखा डिस्कॉर्ड पे। शांत क्यों बैठे हो दोस्तों, बात करो कुछ भी, फील फ्री। गेम चालू होना है अभी तक। that no one's expecting at all, because that's what they've been working in the backlines, and they think that catching someone off guard is going to be what pushes them through an elimination, takes them। ये हेडसेट बोला ना मैंने, लाख रुपए का रहेगा एक, ये 70-80 हजार का। हाय ज़ैद मिर्जा, व्हाट्स अप ब्रो? I think Mu plays a big part of that team when it comes down to being versatile in the heroes that he's been playing, because he can pretty much play anything. This offlane Dazzle, offlane Witch Doctor, brought a couple of records as well in terms of healing at TI because of it. And this guy,
didn't play a Sure, TI bro. since Phantom. the second place at पहला TI word 6, मेरा and रहेगा. then he was kind of gone, you know, Does our showing country up here sponsor and the there, flights but, and stay started for to Asian play Games? again Yes. recently, and it really paid off, and I'm really glad to एशियन see गेम्स some, के you know, सारे एक साथ old स्पॉन्सर school होते हैं, जितने players भी coming एथलीट्स back and रहते हैं, जो coming भी in very hot रिप्रेजेंट position करने top वाले 8 रहते हैं. already. तो ये साल ये भी But था on ना, the topic of क्या being बोलते हैं, gladiators, ई स्पोर्ट्स. and it's really तो ई स्पोर्ट्स funny के to जितने hear भी Corey इंडिया say रिप्रेजेंट that करने about गए Nouns, सबको because I सब कुछ feel like स्पॉन्सर्ड in a था. way स्टार्टिंग they फ्रॉम were देयर kind of जर्सीज, क्लोथ्स, antithetical शूज, to how जैकेट्स, Nouns work, right? to their stay, travel, You feel like you everything. know what they're gonna pick. They're very good at what they play. I think we People should prepare for represent them, India and as they still support role lose in. to their अरे heroes. भाई So to have फुल a team प्राउड that के has साथ a रिपोर्ट stable hero रिप्रेजेंट who करूंगा. अरे by बट the book पता for नहीं mostly उसका कुछ everything, फेयर with चांस the रहेगा exception नहीं of the रहेगा. Necrophoses coming out recently, with the exception of the support invokers, you kind of know what नेक्स्ट they're गिव अवे gonna दीज build हेडफोन्स. around. You know काश what मैं kind खुद of, ले लूँ वो. carry style Duratio is going to be playing. So it's gonna be अगर मेरे को मिलेगा तो तुम लोग को भी दूंगा. collision एक of styles सबको here. नहीं They एक. did bring some new heroes though, like this Chen from Celery. भाई माउस देख रहे हैं कौन सा यूज कर रहे हैं? लॉजिटेक जी प्रो सुपर लाइट. दिख रहा है उधर बाजू में छोटा व्हाइट में सुपर लाइट लिखा है वो. हैदराबाद से कोई है क्या दोस्तों? फैंटम को हेल्प चाहिए. Even their main carry, you know, you see this Brewmaster like going Midas is radiance. He's not like really playing position 3. He's playing like more of a one, and Durachi is like taking over like this aggressive carry hero that's running around. हेडफोन वो क्या बोलते हैं, हेडफोन का कुछ ये नहीं रहता है कंफर्ट वगैरह. हेडफोन रहता है, पता है क्या? तो बेसिकली वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर रखता है कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से साउंड प्रूफ, ये प्रूफ, नॉइस प्रूफ, वो सब करना पड़ता है. We kind of already highlighted there, but the Ogre and the Dazzle, this was stuff that they picked up in playoffs last week. Yeah, and it's इसलिए interesting वो to note that the Dawnbreaker, which is सेम one of रहता है the सबको. popular offlaners of और माउस कीबोर्ड तो तेरे क्या बोलते हैं प्रेफरेंस पे रहता है ना, तो वो नहीं फोर्स कर सकता है तेरे को कोई, वो तेरा गेयर है. scariest in this tournament, and this is a hero that you cannot give away, but at the same time you never know when he's going to bust out his Bro, Zaid Mirza have already represented India around 4 or 5, I don't know exact, but description में मैंने डाला है. They build around his primal beast. बट उसके बाद चांस नहीं मिला यार लाइफ में. चांस नहीं मिला या आई वाज नॉट वर्थ इट. आइदर और जो भी है. हमारे मैच में डबल हेडफोन्स थे. यस, हमारे मैच में इन ईयर्स के ऊपर साउंड प्रूफ पहनना पड़ता था. बट ये वाले जो है ये बहुत हाई लेवल वाले भाई. बोल रहा हूँ ना 70-80 का एक रहेगा. इंडियन टूर्नामेंट उतना बजट नहीं रहेगा रे. और वो सेंस भी नहीं बनते अगर इंडियन टूर्नामेंट में ये यूज करने लगे तो. Are you allowed to bring your own mouse, keyboard, headset at TI? Headset नहीं allowed है, but mouse और ये सब allowed रहता है. People even get the mouse bungee, पता है? जो वायर उनका वैसे ही चाहिए उनको. पता है क्या कोई यूज करते हैं माउस बंजी कॉल पे? माउस बंजी इज बेसिकली स्टैंड, वायर के लिए स्टैंड रहता है. Secrets behind Ace and Tofu and why they're so successful on the lane. I know for sure that they've been playing like party games, maybe on even Power of friendship. Yeah, power of friendship. They've been playing on Smurfs together like for a long time, and that's why like they. Imagine going to TI main stage with Logitech B100. अरे भाई वो छोड़ भाई, वो क्या नाम है अपना, क्वीन डेल वाले बेसिक वाले कीबोर्ड पे खेलता है. कभी देखा है उसका कीबोर्ड? एकदम डेल का बेसिक कीबोर्ड रहता है ना, नो लाइटिंग नथिंग, वो सादा वाला कीबोर्ड. और माउस भी एक्चुअली उस पे ही खेलता है वो. सबका अपना अपना कंफर्ट रहता है रे. Oh, she's ready for the monologue. Okay, yes. No, so I don't want to go too in depth about it because we did touch up on a little bit, but I feel like Astini is a very cerebral kind of coach. He makes his style more so about the hero picks themselves, not so much in the motivational aspect or in the, you know, working on each player individually in terms of their psychology. घर चले जाएगा ना, तेरा घर चले जाएगा. वो हेडफोन्स में 80,000 के हेडसेट है. लेट्स गो, गेम 1 पिक चालू हो गए दोस्तों. यार आउट हो गए बेचारे. टॉपसन जीतना चाहिए था यार. यार उसका दिखाओ यार कीबोर्ड माउस, क्वीन अपना क्वीन का डेल वाला बेसिक साक्सा का कुछ तो एंजाइटी इश्यूज हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ का इश्यूज चल रहा है उसका. तो 9 पोजीशन 4 खेल रहा था.
Man, I don't और think टॉपसन Bristol's मिड getting खेल through. It's just too hard to deal with that hero. म्योर्ता It ban, creates primal so much ban. pressure Let's on the go. enemies to stop him completely, and it allows your other heroes to be completely free if they. end Why up being don't dealt strangle? with. हाँ वही बोल रहा हूँ, वो लोगों Yeah, को I आदत feel like रहता है there are उसकी so भी. many heroes that have I presented hope to themselves be as Spirit problems Breaker. in this patch. Possible है. Sometimes Bristleback ले सकते हैं does कोई तो get through. team. Like we've seen him come through in the playoffs a few times. I feel like TVS के another भाई one is TVS Bristleback keyboards type are best. problem here My is first Spirit mechanical Breaker. keyboard was a TVS. Often when teams let him through, क्या नाम था they उसका? try to counter it with something like a shadow अरे demon TVS or के keyboard का a नाम dual क्या fire, रहता है? and it just doesn't work out. So I do wonder if Bro, we're I gonna forgot see the name cap of the in keyboard. this series. Yeah, this Spirit Break is kind of here that puts you on a timer, because the later the game goes, the more broken it becomes. Because Yo, it's gonna वापस आ have गया. more move speed, Yo, more items, draft and चालू हो गया. more Time chaos पे आ that गया can be एकदम. created in the fight. Bristleback ban, especially for AA gaming and computers, Phoenix is ban. CK. This hero is just insane. मेरे पास था Power एक heroes माउस can बंजी, get, and also हाँ. और अब मैंने like you वायरलेस hit रख your दिया सब early कुछ. हाँ, items मे बी and, वायरलेस. like मैंने it's कभी just यूज नहीं too किया बट powerful. बंजी. It's And banned. it's taken out. I have never वो used बहुत वो बंजी. स्पेसिफिक सी चीज है. उसका इशू ये था कि वो बस वायर बीच में आता था कभी कभी. There you go. तो वही तो जब, लगाना रहता है ना वो, उसके अकॉर्डिंगली तेरे को वायर. हाँ, आज बंजी की वजह से वो फिक्स हो गया था. पर उससे पहले वो वायर बीच में आता था और बहुत अनोइंग होता था. मैं अपना माउस राइट में जा रहा हूँ, वायर रोल हो गया. Yeah, this is pretty scary. Usually teams solve a brew with carries like Luna, things with AoE damage. टॉपसन को भाव नहीं मिल रहे. क्यों नहीं मिल रहा है? टॉपसन गॉड लेवल प्लेयर है. ब्रू मास्टर फर्स्ट पिक. लेट्स गो. नाउंस ने ब्रू से ओपन किया है. टीवीएस गोल्ड. यस, टीवीएस गोल्ड बोल रहा था मैं. कोई भी हीरो से वो वर्कआउट कर लेता है. वह बहुत गॉड लेवल प्लेयर है वो ऐसा सबको नहीं आता है. टीवीएस मेरा फर्स्ट कीबोर्ड मेरा भी टीवीएस गोल्ड. और वो मैकेनिकल कीबोर्ड है. पता है क्या ड्यूरेबल और मैकेनिकल कीबोर्ड है उसकी. मैं लिटरली है ना उस पे हाथ ऐसे मारता था चिढ़ के. वो कीज बाहर गिरते थे बट वापस लगा के मैं खेलता था. इतना ड्यूरेबल था वो. बहुत अच्छा कीबोर्ड था. बहुत सालों चला था मेरे. 2000 नो प्रॉब्लम जी. 2017 में वापस लेना पड़ा मैं. अभी मैं पता नहीं 13 या 12 या 11 में यूज करता था शायद से. वो डॉन कौन खड़ा हुआ है? नहीं मैं वो नहीं देख रहा, चैट पढ़ रहा था. इधर था क्या कुछ? वो वीवर. गैंगस्टर लग रहा था बंदा. ये वीवर सपोर्ट है. नहीं मोस्टली फर्स्ट पिक किया है तो पता नहीं सपोर्ट ही रहेगा. सेंटोर बैन, सीके बैन. नहीं सीके तो पहले से बैन किया. अभी ये हीरो बैन करेंगे. 2 हीरो बैन करेंगे. साइड वाली टीम है ना? कौन किधर दिख रही है? मैं वो नहीं देख रहा हूँ. मेरे ड्राफ्ट पे ध्यान है मेरा तो उधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है ड्राफ्ट के. मैं सिर्फ ड्राफ्ट. हाँ ट्रू साइट वाली टीम है वो. करेक्ट. भाई कितना हैवी रहेगा रे वो. होता है बहुत भारी होता है. मैं एक बंदे को जानता हूँ जो ट्रिनिटी ऑपरेटर है. इंडिया में सिर्फ 6 हैं. बाप रे. हाई लेवल लग रहा है एकदम. हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स है अपेरेंटली. हाँ T1 में था लास्ट ईयर. ये साल नहीं. टॉपसन T1 में क्वालिफायर खेला था. TVS Gold is like Dendy of keyboards. It can just be played in ways that are very open in the game. And just back during the DPC when प्रॉपर गैंगस्टर लग रहा है एकदम. ऐसे चश्मे पहन के. एस. नागा बैन, एन्चेंट्रेस बैन. बैन छालो. ग्रेन स्ट्रोक. Instant, almost guaranteed stun. Yeah, this was the pairing. Hi Anak, what's up? Back in the days when Grimstroke was. By the way, sorry to tell you guys, PubStorm cancel हो चुका है क्योंकि क्या बोलते हैं प्रॉपर अच्छा करना था तो अच्छा करना था, नहीं तो नहीं करना था. ऐसा ऑप्शन था मेरे पास. ऑप्शन नहीं सॉरी, ऐसा मेरा टेक था उस पे. बट सैडली नहीं हो रहा था कुछ अच्छा चीज है करने के लिए, नहीं करना था तो मैंने कैंसिल कर दिया. बट हम लोग कुछ तो TI थीम्ड स्ट्रीम करेंगे दोस्तों. ठीक है, जिसमें गिव अवेज होंगे, जिसमें कॉन्टेस्ट होंगे. सो स्टे ट्यून्ड.
तुम लोग के लिए कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा। Last time we were promised a TI themed something. सब disappoint हुए थे। TI थीम अपडेट आएगा बोला था ना वो लोग ने। मैंने नहीं बोला था, वो गेबन ने बोला था, अपना अलग रहेगा। अरे मतलब TI थीम मतलब TI सा कुछ अलग नहीं रहेगा मेरे पीछे एजिस वगैरह ब्लू वगैरह, बट TI का वॉच पार्टी विद कॉन्टेस्ट एंड गिवअवेज विद फ्यू पीपल। रेप्लिका वो जो छोटा सा होता है एजिस का। हाँ बट वो ये ईयर का नहीं है ना, ये ईयर का 300 लेवल पे है। मेरे पास 3 है, 3 एक पर्पल वाला है, एक ब्लू वाला है या रेड वाला है पता नहीं मेरे को, और एक एक्चुअल मेटल का होता है। हाँ प्रॉपर अच्छा रहता है वो। आज तक नहीं लिया, उसके लिए बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं। यस नहीं वो लोग 3-3.5 हजार में बेचते हैं सेकंड इंडिया में। फक कॉल एकदम। भाई ये लोग के पिक्स देख रहे हैं क्या दोस्तों, नाउन्स के लिटरली सबसे क्या बोलते स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा पिक्स, एनपी ब्रू डार्क विलो। Oh, Weaver carry है दोस्तों। This is why I think Dawnbreaker comes in super handy. And also Chen, this is the hero that we haven't seen much. Weaver carry है। TI, they brought it against 9 Pandas, I believe, and it looked really good. He just dominated the laning stage. Steady cam 15 to 20 kg रहेगा भाई। आनक एक्चुअली वो फील्ड में से तो उसको पता है। My God. Like very long games, like 50-60 minute games, we've seen a lot of them. They're actually the ones who are like saying no, we're gonna like fast push and we're gonna end the game. Hello like देवेश, 20-30 minutes स्ट्रीम left, को people are स्ट्रीम not ready थोड़ा for that, like especially when they're like PG-13 dominating बनाओ, the left बच्चे भी heavily as देख they रहे do. हैं। Like it's मतलब it's कुछ बोला क्या so गलत cool मैंने? that they take this approach into the games. Yeah, the last time that Gaiman played Chen, they won in 19 minutes. It was pretty wild. Like they just Tide Hunter। normally they rotated the Chen. ए मैं आया 1 मिनट में दोस्तों, पानी नहीं है मेरे पास। BRB। They just played on that tempo. So something to fit into that kind of tempo would be this Tide Hunter who can buy the auras, can be something to center around and run down a lane with. I think Slark is an amazing pick for Nouns right now. Nope. Earth Spirit. I mean, it's another beefy tanky hero that Gunnar likes to play, and they've been They don't performing have really much well. control. The only control they have is this Phantom and maybe a leash mechanic, but that's about it. He's not afraid. Later on, when Tide picks up the shard, that's going to be the big one, and we've seen Tides picking up shard relatively early on. If this is not Dark Willow carry, I feel like there's a good potential to pick up Void. You did mention Slark because I also don't see many counters. This is the hero with time dilation that destroys and also against the Tide Hunter. So you have something, you have, you know, good later on, really good initiation where you can kill Tide Hunter from 100 to 0 with the Dark Willow with some spells coming out from the Earth Spirit. So I want to see if they are going to decide to ban it out. I don't want to see Dark Willow carry in this game. If you're playing Dark Willow carry versus tempo, you're not going to get to that mass in the game where you're strong enough. The thing about Willow is that she needs time to farm. She's a slow farmer. She needs space on the map. She needs to rack up those levels with her Midas, get to the point where she actually has attack speed to take advantage of the Shadow Realm, because she peaks with her like level spikes too. She peaks at level 20. So a carry Willow into a Chen lineup sounds a little bit on the suicidal end, to be honest. Back boys. I do think that this Earth Spirit was a great pick. Earth Spirit भाई वो सारे जो broken heroes रहते हैं ना वो दिख रहे हैं Nouns पे। Yeah, and a little surprised they decided to ban this Necro. I mean, Quinn did play it a lot, but they do have like insane amount of magical damage coming out. Spirit Vessel from the mid lane, from the Earth Spirit, the spell mechanic when Brew uses the split, but they're still gonna give it. भाई मैं मेरा स्ट्रीम क्या बोलते हैं फैमिली फ्रेंडली रहता है रे। F word is fine I think. F word तो आजकल क्या है टीवी मूवीज वगैरह सब जगह होता है। ENG and Shadow Demon in the pool, and they are usually like, you know, picked early. But in this draft, मैं एकदम क्लीन रखता हूँ भाई। it's a pretty cool गाली गलौज नहीं करते अपन। So I really like this band. I like Sven potentially for Does Nouns. anyone You play get Earth the Spirit? cleave damage to play into खेलने वाले बहुत है अपने the स्ट्रीम पे high भी है armor versus दोस्त Weaver. लोग अपने। I mean, I don't really know what's left in this pool unless Nouns are insistent on flexing the Dark Willow to carry, which I mentioned I don't think would be a good idea for them at all. Yo Fusion Jazz, what's up? By the way, that's what I mentioned. The hero Hi, is really Gattu. good against Weaver, and you know, on the lane against Tide would be. How pretty come cool. finals is best of 3? अरे ये finals नहीं है रे। फाइनल्स मतलब कैसे बताऊँ, मेन इवेंट फाइनल्स, ऐसा ग्रैंड फाइनल नहीं है ये।
they can't necessarily catch them off guard completely, but Troll is one of those heroes. भाई दोस्तों हम लोग डिस्कॉर्ड पे भी है थोड़े लोग, if you want you can join. Hi Dhruv. I think it's a free Slark game, but they have to understand how to, you know, delay the game and make this Slark viable because. But your Ember Spirit. Gonna go, and they're gonna. नहीं वो सब नहीं आएगा मुझे लगता है ये TI में. Weaver, a lot of creeps from. Hello कल्पेश. They're gonna have this ball and they need to. I mean ये TI में मतलब वैसे नहीं रे. फाइनल्स में अगर ऐसा कोई पॉज नहीं उठेगा ऐसे लग रहा है मुझे. ग्रिमस्ट्रोक की अल्टी में सपोर्ट नहीं है. I mean वो अल्टी के लिए नहीं खेलते, सच बात तो क्या उसके थर्ड स्पेल के लिए खेलते हैं शार्ड के साथ. मेन सबसे वो है थर्ड स्पेल. भाई पैंगो बैन नहीं करना है क्या? ब्लड सीकर बैन किया वो लोग ने. एक्चुअली ब्लड सीकर वीवर के लिए किया है, वीवर खेल नहीं पाता है. Terrorblade. ए वेटिंग फॉर इनपुट व्हाट? चैट ट्विच चैट देखना पड़ेगा अभी क्या करते लोग. भर देते भाई. वेटिंग फॉर इनपुट मतलब वो कैमरा पे आ गया था टीआई के स्ट्रीम पे. देखा नहीं क्या तू? नहीं मैं फोन पे था. अभी तो ये कैमरा पे आ गया था. ओह पैंगो बोला ना मैंने दोस्तों. आई कॉल्ड इट. वो ब्लड सीकर बैन किया रे. Definitely knew that one was coming. So we'll talk about all gaming gladiators draft as a whole in a little bit because right now I want to know, is Nouns going to hit these timings for TB? Are they going to be able to come up against the tempo that it seems gaming gladiators? Dota 2 matchmaking is broken. भाई वो तो मेरा भी चल रहा है. सारे फालतू लोग आ रहे हैं. भाई आज 2 गेम थे, 2 गेम में 15 to 20 के लीड था और वो दोनों गेम हारा हूं मैं. Normally you pick this TB if he has a favorable lane. वो तो मेरे साथ तो हर रोज होता है. जितना कैरी करो उतना हारो, जितना कैरी ना करो ना उतना जीतो. We have a coach's interview Oh, with pray. Against Blizzard back. I'm here with Steedy, the coach of Nouns. डोटा वाले स्ट्रीम टाइटल को क्लिक बेट कर रहे हैं. करना ही पड़ेगा ना. टीआई भाई. Can we give him one USA please guys if you could? ये स्लैक्स ओपी आदमी है भाई. Brazil. ए यूएसए बोल के ब्राजील पे चला गया. ए बंद कर ध्रुव. The question is though, are you baiting them? I mean, we हाय मोहित. ये समकित ने रखा है कैफे पे उसके मुंबई में, नेक्स्ट लेवल गेमिंग कैफे पे. मैं भी उसके साथ टाइप करने वाला था बट सैडली हुआ नहीं. The meme is real, you know. 2023 Pangolier. टीआई के बाद कोई न्यूज़ है क्या? अभी तक बोला नहीं वो लोग ने, बट मुझे लग रहा है ये टीआई में नया हीरो अनाउंस करेंगे वो लोग. Did that ever cross your mind in there? Anyone begging for Carry Willow in there? I'll tell the truth, I baited everyone because I asked the EG analyst about Dark Willow carry, and he's like, I'm gonna tell my carry to play it. And then everyone started playing it, but we don't. And then everyone was baited. So, mind games. Mind games. All right, final question for you. You guys locked in that Terrorblade. You're against very good Terrorblade players, famous for that. Are you prepared to face off against that TB? Or not let them have that TB? They know how to beat your TB. I believe Actor. Or do they? I believe Actor is the best player with illusions. So I trust my team. Definitely GG is an amazing team. They know what to do. But we are playing our strategy, no matter if they understand it or not. All right. Well, I don't understand anything about Dota, my friend, but I do understand we're in for one. पाक वर्ल्ड कप से आउट पता है नहीं, शायद से हुआ रहेगा. आज भी हारेगा वो लोग. हार गए आज. ओह तेरा बहुत गंदा आ रहे हो लोग. Finally back in the sanctuary in Seattle, the cathedral Lost. of Dota 2, the home of the best competition in the जैसा world. अपने pubs में होता है ना. To the international. And what a match that started off, right? I mean, they threw me in here with my ex-teammates, but this is definitely a grudge match if you've ever seen one. Pango mid, yes. South America Dota combining in one team to take on the Western European. इंडिया में टीआई होगा कभी पता नहीं यार. लाखों लोग टीआई जब भी देखेंगे तभी जाके टीआई होगा इंडिया में.
वो भी पता नहीं, इम्पॉसिबल लग रहा है। ESL 1 हुआ था मुंबई में। पॉज TI ग्रैंड फाइनल में पॉज और माइक। ओह नो, यस नहीं, बट उधर भी है ग्रिम स्ट्रोक, टाइड, पैंगो, उधर भी टीम फाइट अच्छा है। हेलो इटर्नल प्राइड, व्हाट्स अप? वैसे दोस्तों, आई एम स्ट्रीमिंग ऑन ट्विच एज वेल। इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन ट्विच, गो एंड प्रेस द फॉलो बटन ऑन ट्विच गाइस। ये दोस्तों गेम में प्रेडिक्शन करना है। ओहो हो, अच्छा हुआ याद आ गया। लेट्स गो। They've been on the same team before. He knows how he wants to play, knows how he wants to abuse this mid lane, and that's been one of the secrets to gaming success all इधर year. हो ही नहीं रहा है। Highest magic damage Willow. Mid lane matchups. Can you shut down the side lane with all that's happening at the same time? Player with the highest total magic और pure damage done to, एक ability है magical Willow ही होगा maximum magical damage done to heroes by 10 Willow या minutes। फिर Gunner। Get the trifecta out of there. Gunner भी हो सकता है। You give them a lead at 20 minutes, they're going to be pushing tier 3 very fast. You have Illusion heroes, you have Fury on. Gunner ने बहुत मेहनत की है। टोफू गेम लॉन्ग ग्रिम स्ट्रोक 7 to 44। नहीं नहीं, एक बड़ा गेम है। 44 to 60 है। TB वाला गेम लंबे रहते हैं। टाइम ऑफ फर्स्ट बैरक डायरेक्शन 40 प्लस। यही दोस्तों गेम का आवाज आ रहा है ना, बंद करता हूँ, रुको, प्रेडिक्शन कर रहा था। 1-1 हुआ है दोस्तों, बट TB मर गया है। फर्स्ट ब्लड किसको मिला गाइस? ओके, फिर अच्छा है। ए भाई TI गाइस, कम ऑन। गनर की 20 सेकंड में बॉटल हो जाएगी, 10 सेकंड एक्चुअली। आती रहेगी ना अभी शायद से, नहीं 649 पे था उसका। ओके, तो एक लास्ट हिट मिलेगा तो आ जाएगी। Played against Sumail a lot too, so if you're going to learn from somebody, Hi Swami, the next protege in that yes, ESL 1 Mumbai guys who have been there and are willing to do it. Swami, I will say Quinn has gotten the better of Gunner in a lot of these lane matchups, right? And if you're Nouns, you go into here, you're kind of expecting. obviously ESL and TI huge difference है. Well, the bigger question is what happens after that. And I think Gunner has but shown that ESL 1 is also big what do you call event? He's going to dictate the Major है ना? a lot more than you are. Major, हाँ मतलब they know it's not a real major so they know this match ऑर्गेनाइजर है ESL। अभी उसका मेजर कौन वाल्व किसको बनाता है, कौन सी कंट्री का ESL? पहले तो वो था ना मेजर नहीं। हाँ बट वही तो बोल रहा हूँ कि सारे ESL 1 were not majors, कोई कोई थे, वो स्टेटस मिलना पड़ता था वो। लेट्स गो निगी लाइट भाई, बहुत ओपी स्टेडियम है ये, पूरा फुल है और पब्लिक खचाखच भरी है। और ये भी अब ड्रॉ रेंजर बैंड थी क्या? नहीं ड्रॉ रेंजर नहीं था ये गेम का पिक ब्रो, दोनों टीम के लिए अच्छा नहीं था। वेलो डेड, विलो 2 लेवल हुआ नहीं तो मरता ही है। इंसेन लेन है वीवर चैनल। ग्रिम स्ट्रोक सबसे ज्यादा मैजिक डैमेज करने वाला है, पता है? 10 मिनट पे। अच्छा 10 मिनट डैमेज था, 10 मिनट में था। हाँ मेरे तो ग्रिम स्ट्रोक या फिर यस ही होगा, और स्पिरिट। So if you give him a fast start on one of his signature, jungle heroes out here, you're going to have auras up, you're going to have the pace. And you don't have a lot of outspam or tower defense. That's the one downside of the lineup for Nouns. They really want to take these skirmishes around the ults, particularly between the Brew and the Earth Spirit here. That's why the XP might be more important for them than the CS. You're talking about Bro, कितना इरिटेट हो रहा है बताइए ये पॉजेस देख के। Unfortunately, we're going to take a little bit more time. This NA Dota, बाप रे, lol, वाह ये तो ऑल चैट चल रहे भाई। This game on US West. I mean, K1 Hector, he's like, I'm used to this. This is every single game for me. I mean, I think Hector's confused because he probably has negative ping compared to what he's normally. Oh, yeah, absolutely. This man is always working on at least 90.
क्या मजाक चल रहा है को? सॉल टीबी एंड लेन मेटामॉर्फोसिस कब मारना होता है? क्या क्या? जब टीबी खेल रहे होते हो तो मेटा कब यूज करना होता है? देख मेटा है ना, तेरे साथ ऐसा हीरो रहेगा ना कि तू उससे थोड़ा भी क्या बोलते, थोड़ा भी हरास कर पाए एनिमी को। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिट मार रहा है राइटली। ए ब्रो ध्रुव बंद करना यार, बहुत इरिटेट हो रहा है तेरा। मैं बोल रहा हूँ कि टीवी का तो ऐसे टाइमिंग पे यूज करना चाहिए जिधर क्या बोलते तेरा एक टीममेट स्लो या स्टन डालेगा और फिर तू 3-4 हिट मारेगा, फिर तू उतने ड्यूरेशन के लिए तू बॉस रहता है वो लेन का। तो वो मोमेंट रहता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस क्रीप मारने के लिए ऑन कर दिया या सामने वाले को राइट क्लिक करने के लिए ऑन कर दिया। सामने वाले को पहले पोक कर करके पोक कर करके आधा एचपी ऐसा करेगा, फिर नहीं क्या एक चांस मिलेगा उनको जोन करने का पूरा लेन से, तभी तो यूज कर सकता है वो। डोटा को रिस्पेक्टफुल डेथ मिला इंडिया में विथ ESL 1। Can you bounce it out? Can you make him work? No That's comments. what's interesting about these two teams as well. They had these additions that they brought into the rest of the four. Hector for Nouns, Quinn for Gaming, and it's changed the dynamic of the team, right? It creates another threat they can play around that gives the team a lot of vision, a lot of purpose in the game. And if you make these players succeed, they will indeed carry you in a lot of these clutch situations. Hector on a Terrorblade, that is a nasty combination. We've seen him be, I think, most proactive on the Chaos Knight, right? But this is a hero that functions very similarly. You can control the map, dictate when he wants to fight. So if he's the most farmed hero, रुको मेरा लोगो बंद कर दो, तुम लोग को पैर क्या नहीं दिख रहा है दोस्तों। Unless they already have the auras up. Still, a lot of it coming down to this mid battle, and damn it, is it close. Within 2 CS here for Gunnar going into Quinn. Yeah, he's got a creep wave coming underneath tower, so if he gets these last hits, which he does with a quick kick, he'll be able to actually secure a CS lead over Quinn. ओहो बोला ना एक ये वीवर का प्रॉब्लम रहता है, अगर उसने सुकुची गलत यूज कर लिया ना लेन में क्रीप मारने के लिए वगैरह, मौत रहती है। कल ही अपन ने दिखाया था स्ट्रीम पे कैसे वीवर को अब्यूज करने का रहता है। वो सुकुची मारा ना उसने लेन में, पहले 1 या 2 लेवल का सुकुची रहता है तो भी चढ़ जाओ डायरेक्ट। Exactly what you're looking for in this early game. Quick rotation into the double kill. Shut Duracio's tempo carry down on this Weaver. Not a hero that likes to play from behind. And just gobble up. Higher route to divine. ये फाइनल नहीं है, ये लूजर ब्रैकेट के मैचेस चल रहे हैं। Biggest priority in this game is probably 6-minute power rune, 7-minute wisdom rune. You get all of those for your 2 supports. You're going to be in a really solid position to contest these tower pushes when they come with the Tide Hunter Meteor Hammer. Talon और बेडबूम का देखा था वो वाला, रो कर दिया था उन लोगों ने। Yes. डार्क पिलो था ना कैरी 23 savage. Meta going to be popped here. So damage thrown back the way of Gaming Gladiators, but honestly they walk away from that. Yes. Not too damaged at all. So meta popped, no kill found. I would say a small victory for Gaming Gladiators whenever that happens. पकास ने बेटर खेला वी लोग कैरी। Still waiting for Celery's rotation. क्या पकास ने? पकास ने भी करा ना वी लोग कैरी। हाँ। उसमें दो है ना व्यूअर को सामने, वो बेटर था। आरटीजी खेला, शीरो खेला, बहुत सारे प्लेयर खेले। आरटीजी का तो बहुत गंदा था वो विलो कैरी। अरे पब रूइन करते रहे पर पता है क्या? हाँ ना यार, लोगों को नहीं समझते। अरे अपनी तरह आते रहे फिर हो रही है वी लोग कैरी माइडस बना के। यस। उनका माइडस बनते गेम ओवर होता है। यस। मौत। ये बच गया वो। फॉग में था वो उधर कोने में। पेड़ डाला ना उसने। नाउन्स टीआई विनर हो सकता है भाई, टीआई में पता है ना अंडरडॉग वाली टीम ही जीतती है भाई। वो क्या आनाएंगे देख रहे हो कि तुम लोग, वो चेन ने क्या किया है, वो चेन ने पहले तो आइस आर्मर वाला क्रीप लिया है, फिर उसके बाद एक क्रीप पे वो आइस आर्मर डाल के एनिमी पे राइट क्लिक कर रहा है, तो एनिमी उसको घूम के भी नहीं मार पा रहा है क्योंकि आइस आर्मर है। क्या अनोइंग है रे। ये टीआई में चेन एन्चेंट्रेस किधर से आ ही जाते रे, पता नहीं क्यों। आई डोंट लाइक दोस हीरोज मैन। Gunnar did on this mid lane. He's 500 net worth up on Quinn at 6 minutes. This is a crazy net worth differential for a player we're used to seeing just win the one-on-ones. I mean, that Earth Spirit laning phase, this hero does so much with that boulder smash. 500 से आगे रे 6 मिनट पे, 6 मिनट पे बहुत ज्यादा है, मतलब 500 से आगे मतलब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से।
take a little bit of aggro here from Duraccio, and not much move. एक्चुअली उसको रून नहीं दे रहे ना, वो एनपी टीपी करके रून प्रोटेक्ट कर रहा है. नेटवर्क में आ गए ना. In fact, Moo may have stayed a little bit too long. The Lord might be able to keep him alive. We'll see whether or not Duraccio wants to complete it. He does manage to get that kill. Celery picks it up with a bit of lightning. Duraccio is going to take a lot of damage on his way out, but managed to dodge the brambles pretty smoothly there. And that's Javelin Rush. So this is aggressive build for Duraccio, using the fact he has Javelin Rush. मैं भी यही करता हूँ. नहीं मतलब मैं भी करता हूँ, but TI चल रहा है रे. No stats, nothing. Nope, एक ब्रेसर is enough. HP कम रहता है उसका, वो बहुत स्क्विशी हीरो है. हाँ लेकिन अगर 8-9 मिनट तक मेलस्ट्रॉम हो रहा है तो फिर बहुत ही बढ़िया है. एक ब्रेसर गया है, बट और एक उसके साथ एक वेटबैंड जाना चाहिए तो पता नहीं. ऑब्वियसली इज अ TI लेवल प्लेयर. देखा क्या ये ऐसे टाइमिंग पे मेटा यूज होना चाहिए, समझ रहे क्या? कि वो उसको मारा नहीं तो भी हरास तो भी होना चाहिए. वो अभी मार रहे मर तो क्या, बट बोनस रहता है, मारना बोनस रहता है. Okay, he's picking up the 7-minute wisdom rune. Let's make a play in this top lane. A big kill. Even bigger मौत. if they can get Duraccio as well. नहीं रे, बच्चा रहा है उसको वो. In fact, they push damage back. Teleport coming. चेन अच्छा खेल रहा है. सेलरी. But it looks like he may be a bit late unless he really कैसे नाम है ना रे खाने के? सेलरी और टोफू. Only 2 points in the rolling. टोफू का फुल फॉर्म पता है क्या? The one fancy unicorn या ऐसा कुछ है. हाँ क्या? ये नहीं पता है मेरे को. मुझे लगा खाने का टोफू पे पनीर. बहुत weird है. ऐसे ही कुछ. ये नहीं पता था मेरे को. 8-minute power rune though is coming up, and both teams are going to be fighting for it. The fighting continues in the side lanes as well. They really want this Weaver bottom before the time lapse comes out. This is when Duraccio is still susceptible in this lane. You have so much nuke damage. मौत दे दो भाई, ये टाइम मौत दे दो उसको. अरे क्या साइलेंस दिया है भाई, ग्रिमस्ट्रोक ने क्या खेला है ब्रो. टोफू इज अ गॉड प्लेयर, बट यामसन इज बैक. Chen creeps off this, honestly. Oh, Yamson, he's got no teleport and no TP scrolls. So Yamson is back. A 2-for-1 in that regard. So you traded Chen creeps and the Weaver for 2 on the side of Nouns. You did get nerfed to death for Moo. So Obviously bro, Topson OP आदमी है. कुछ तो देख, dazzle वैजल खेलता मेरे से. हाँ ना यार. The one fluffy unicorn. Oh. Ravage. Oh, पीछे से 2 सपोर्ट आए. परफेक्ट. Wow. पूरा वानर से ना है पीछे से. Wow. He'd already thrown out the Sunder. I mean, this is a hammer tide, a tough lane to stand on. Maelstrom हो गया क्या भी the Ravage connection's just too easy here. Now you get the pressure of the ग्रिम का थर्ड स्किल कुछ इंसेन डैमेज करता है. भाई बहुत खतरनाक है वो. मैक्स किया ना वो, वही करते हैं मैक्स. और मार पाए ना. शार्ट से क्या डिस्पेल वाला भी. हाँ, शार्ट से डिस्पेल भी है और लाइफ स्टील भी है, मतलब स्पेल लाइफ स्टील. क्या? नहीं, सिर्फ वो स्पेल के लिए. भाई ब्रू मास्टर को मौत दे रहा है वो लोग. लोएस्ट लेवल इन गेम है. एक क्रीप हो गया था लेवल 6. मिस दीस काइंड ऑफ रोटेशंस इन माय गेम. ये तो नहीं हो रहे भाई अपने गेम में कभी ऐसे रोटेशंस. For Nouns, because they haven't even taken any towers yet, which it is coming. Chen and a Meteor Hammer, you're almost guaranteed as Gaming Gladiators to have a tower lead in the next 5 minutes. इनका हेयरलाइन देख. Very high in this game with फेस वॉश ज्यादा लगता है उसको. पूरा हेडफोन. ओ एनए वाला है ना. अभी थोड़ी देर पहले किसी ने तो पॉइंट आउट किया ना कि एनए का पब्लिक सारे बॉल्ड है. जो रेज मार के बॉल्डिंग हो रहा है. The speed Ace was coming out with here. Yeah, but as he shows himself immediately as smoke up, not only they secured the 10-minute power rune, but टीबी को बहुत प्रेशर कर रहे हैं वो लोग अर्ली. it would be क्यों फिरते कंटिन्यूस फिरते. Sunder coming back nice. up. 3 seconds on the cooldown is now up for Hector. So there's turnaround potential on this play. If you cannot मिल गया. them here, it could go really. चलो. Let's go. TI. ए भाई पूरा डैमेज देना है इसको. भाई संडर होने वाला है वो. हाँ क्या रे. ठीक है, ये नहीं तो वो. ये नहीं मर रहा है. चलो भाई. ये आवाज गया क्या किसी का? नहीं, स्ट्रीम पे 1 सेकंड के लिए मेरा आवाज गया. ऐसे लगा कि
गया ना, फिर पब्लिक क्या मौत दे रही है देखना है मेरे को। PGL प्रोडक्शन ये सीज क्रीप उड़े क्यों जा रहे हैं? वो उसने उड़ाया था अभी रू मास्टर ने। इतना लंबा होता है उसका? हाँ बहुत लंबा रहता है। क्या क्या बोलता है? पैरेलल ब्लास्ट कुछ तो बोलता है। नहीं वो री ऑफ मी नहीं वो और एक कुछ तो बोलता है, 2-3 बोलता है वो। हाँ पैरेलल ब्लास्ट चिल्लाते से Barrel of lag. Barrel of lag. Use his next duel to defend mid. Yeah, the question is that too greedy, right? Because you know Gaming Gladiators are going to be. मॉडल पडल तो है कहाँ से रे? आज मुझे समझा तू मराठी है तो मेरे को ऐसा क्यूरियोसिटी हो गया है। Like you're giving up an early fighting item to go for this Midas, and you know the tower pressure is going to come back. I mean, you go in and Midas a Chen creep and say, "I did my part, team." Underneath tower, but it may not matter. Good Nice. Coming out from Laylas. This Good terrorize. Gunner some time to get more magnetized stacks onto Quinn. Nails him with the next rolling bobo as he tries to swatch both away. Locked in though. By Tofu, great spellbound, and they're going to be able to catch him inside. दो लोग पे, oh my god. But Gunner is somehow still alive, and he's going in with the magnetize. He's going to chase after Tofu. उसको शील्ड रून, oh my god. Showing up just in time. Layla's trying to finish up this support. क्या टाइमिंग पे शील्ड रून था रे उधर। On heroes right now. He shows up last of the fight, but he will claim lives here. Oh, Ace actually not too afraid. He's going to try and get this meter here. Nope. Time, but Yamson's already teleported away. The tower survives for now, but damage is done, and Ace is still here with that meteor hammer. Did clean up some Chen creep. Hammer खरंच worth it है करे? क्या? Hammer worth it है क्या टाइड? हाँ obviously bro, वो जल्दी टावर लेता है, प्रेशर करता है मैप पे, it's very good. और Dota is a game of objectives, not a game of kills. Obviously kills help you win the game, नहीं win नहीं, make the game faster. But game जीतने के लिए तेरे को टावर बिल्डिंग थ्रोन मारना है। ब्लिंक कॉम्प्रोमाइज करके नहीं रे, वो ब्लिंक फर्स्ट आइटम कभी अच्छा नहीं रहता है टाइड पे, बहुत रेयरली अच्छा रहता है। थोड़ा शिट है एट दिस पॉइंट। फेस बूट्स की जगह तू सोच ना, अर्ली गेम में तू ब्लिंक डाल रहा है और फिर ब्लिंक करके रैवेज मार भी देगा, तेरे टीम पे फॉलो अप नहीं है, डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, टाइड रैवेज करके मारता थोड़ी है, स्टन करता है बस। करंटली यूएस बट फ्रॉम मुंबई, नाइस। और यूएस से बहुत लोग हैं अपने लोग, थंडर भी है, तू है, और एक था वो, और एक्चुअली 2-3 लोग हैं, एक क्या बोल रहा हूँ, हाँ चिन्मय, वही थंडर में उसका, मेरे लिए हम थंडर है चिन्मय का। स्टिक्स फिर अपना लंदन से ये नियो, बाहर से बहुत लोग देखते हैं, उज्जवल भाई जर्मनी से देखते थे, कनाडा से 1-2 जन देखते थे भाई। गनर ओपी प्लेयर है आदित्य, ये बहुत अच्छा खेल रहा है वो टीआई में, इज प्लेइंग वेरी गुड, नो जोक। उसने लिटरली वो उसको आउटप्ले कर दिया रे लेन में। अभी वो क्वीन ने कमबैक किया वो बात अलग है, बट लेनिंग फेज में वो आगे था क्वीन के। This is your defusal timing on the Pango. Ravage back up for Ace. He's a little bit off the blink, but it did prompt the smoke from. ये किसको गैंग करने जा रहे? कोई नहीं है टॉप पे बॉयज। They vacated it. Whatever reason they knew it was coming. However, they're just going to run it back. Ace trying to control both jungles right now. Let's go. This initiation's a little difficult. Will Hector see it coming? The tree line. If they get around just around this corner and finds him, maybe it's possible. Oh, maybe he's dead. He's dead. No mana and silence, too much for Hector to deal with here. Really nice connection, just enough. पीछे से वीवर भाई आ चुके हैं। ये लोग स्मोक करके किधर गए थे टॉप पे? बट सच वीवर कौन सा आइटम है जो एक कलरफुल मार रहा है? सुकुची इफेक्ट है उसका।
कोई इमॉर्टल आइटम है, सिर पे हो शायद से वो। मुझे भी चाहिए। थिंक आई हैव दैट थिंग, आई एम नॉट श्योर। नहीं मेरे पास नहीं है। इसको यूनिवर्सल रहता है। नहीं नहीं ड्यूरिंग डेसोलेशन वाला है उसका पॉज, जिससे वो रेड कलर का अटैक है कुछ मारता है। अरे वो इमॉर्टल आइटम है बट मुझे पता नहीं है उसको क्या बोलते हैं। Any thoughts about Nature's Prophet as carry? No, not good. तो सपोर्ट से देख, तेरे को स्पेल पे मारना है हीरोज को, हाथ से नहीं मारना है, समझ रहे? तो इट्स नॉट गुड। स्पेल से मारना है, मैप पे घूमना है। कैरी थोड़ी ना घूमने वाला है मैप पे इतना जल्दी, फार्म करने वाला है कैरी। नेचर कैरी खेलता था ना आरटीजी शायद। नहीं ये मेटा में बोल रहा हूँ, जब से उसका फर्स्ट वो तो सब लोग खेलते थे, लास्ट एआई भी खेलते थे बहुत सारे लोग। हैज ब्रू यूज्ड हिज अल्टी दिस गेम? यस, बॉटम टावर अल्टी लेके ही नहीं निकाला था ना उसने। I mean, gaming were just split, right? We're talking about them abusing the fact they have a very strong ball. They were waiting for this Ravage to be back up. Rare misstep will cost them some time, and that is time for Hector to get the lanes out, or at least attempt to. इसका हुआ सबसे ज़्यादा मैजिक डैमेज। वो पता है क्या वो लोग ने, गेम में जाके देखना पड़ेगा कौन जीता करके, इधर नहीं दिख रहा है। प्रेडिक्शन ही होगा। रुक देखता हूँ मैं गेम में जाके। साइड भी हो सकता है। मीटियर इज मैजिक डैमेज। 80% प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 17 मिनट्स इनटू द गेम। मजा आ गया क्या भाई? हाँ टोफू ही था भाई, अपन जीत गए पहला प्रेडिक्शन। लेट्स गो गाइस। पहला प्रेडिक्शन इज करेक्ट, इट्स ग्रिम स्ट्रोक गाइस। ओ उसने शार्ड ले लिया है, बाप रे ये सबसे गलत चीज है। ओ शार्ड बहुत खतरनाक चीज है टाइड का। 5 हिट मारने पड़ते हैं उसको, 5 लीश करता है, लीश और स्लो करता है, बहुत गंदा स्लो करता है वो। एंकर इसीलिए वो अल्ट नहीं मार पाया। शायद से अल्ट नहीं कर सकता है, पता नहीं कर सकता है कि नहीं, मे बी। इसके प्रोबेबिलिटी नहीं मार सकता, पुश भी नहीं कर सकता। फोर स्टाफ भी नहीं यूज, फोर स्टाफ यूज करके भी वो निकलता नहीं है। स्लार्क के इससे कैसे निकल जाते फोर स्टाफ करके। बीकेबी में भी वो टूटता नहीं है, पता है, रहता है बीकेबी ड्यूरेशन के बाद। अगर रह गया तुम्हारा वो ड्यूरेशन, स्लो नहीं पड़ता। हाँ स्लो नहीं पड़ता है, बट वो तेरे पीछे आते रहता है। वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए वो बीकेबी ऑन करके। भाई जेरैक सर्च स्पीड वाज वेरी गुड। यस ओहो ये बहुत ओपी कॉम्बो किया भाई वो लोग ने, ब्यूटीफुल था ये। 20 मिनट पे रैक्स ले लिए, द कॉम्बो मार रहा है। ओह माय गॉड, ये तू किधर देख रहा है? नहीं मैंने ले लेंगे। नहीं डिफेंड करेंगे ना थोड़ा बहुत, टियर 3 लेंगे ज्यादा से ज्यादा या कुछ ऐसा, पता नहीं। भाई चेन पे इतना आइटम है, सोलर क्रेस्ट और पाइप 19 मिनट्स, बहुत ज्यादा नहीं है। हो गया रे, मरा क्या एक बार? पता नहीं, रुक देखते ना। मरा चैन को मारा था अभी थोड़ी देर पहले। 4 बार मरा है चैन। स्पिरिट ने उसके सारे क्रीप्स। ग्रीम स्ट्रोक 0 बार मरा है गेम में। And now we could just go back to farming our side lanes again. And the team items are just rolling in, right? I mean, Hector at this point. Crimson Sirede कुछ तो नाम है ब्रो वीवर के आइटम का। रिकी मारू ने ढूंढ लिया भाई। It's a lot to punch through. GG is GG. GG. You're gonna have to use buybacks. कितने का है वो आइटम चेक करिए। Extra firepower. Ato's done for Lels, looking for the extra setup. अभी तक अवेलेबल है क्या नहीं पता नहीं मुझे, रुक। I don't think होगा, क्योंकि अगर होता मैं ले चुका होता। These moves are very telegraphed right now. Hector's just he struggled to get these lanes in deep. मेरे को एक ही अरे ट्रेडेबल नहीं रहेगा वो अभी तक, ऐसा कुछ तो रहेगा। Hector आरगाना चाहिए जो कि कहीं से नहीं मिल सकता। अरे है लिमिटेड मार्केटेबिलिटी है, मेरे पास है वो आइटम।
एक्चुअली सुकुची का वो नहीं है ब्रो, वो उसके लिए फर्स्ट स्पेल के लिए। वो सुकुची वाला नाम है क्रिम्जन पीके, PIKUQK नहीं सॉरी QUE, क्रिम्जन पीक 45 रुपीज का है। क्रिम्जन पीक होगा मेरे पास ये वाला। हाँ ये मेरे पे है, पर ये वैसा इफेक्ट नहीं देता राइट क्लिक वाला। ये सुकुची का इफेक्ट देता है, राइट क्लिक वाला इफेक्ट नहीं देता। हाँ तो सुकुची वाला ही बोल रहा हूँ मैं, राइट क्लिक वाला इफेक्ट बोल रहा है तू? हाँ वो राइट क्लिक वाला इफेक्ट उससे आता है रे, वो उसके नीचे एजिस रहेगा, एजिस वो रहता है ना, वो एजिस मतलब एम्बलम आता है, एम्बलम वो बैटल पास में मिलता है। वो डायरेक्ट एड के टाइमिंग पे मिल रहा था, देख अलग अलग कलर के एम्बलम्स, एकदम एक्सट्रीमली रेयर वाला आइटम था। ये जीत रहा है गेम, पहला वाला गेमिंग ग्लैडिएटर। देखा क्या रैक्स नहीं लिया 20 मिनट पे, मैंने बोला ना डिफेंड करेंगे। टीयर 3 लिया, हाँ 30 तक तो ले ही लेंगे फॉर श्योर, 30 तक तो गेम खत्म कर देंगे वो लोग। हेलो इंजमाम, कॉस्मिकली रेयर था वो, हाँ देख उसके नीचे एम्बलम है वो, इसलिए वैसे दिख रहा है। 50-60 हजार का रहता है वो। Will you ever spend 30-40K on a game item, सिंगल आइटम? बैटल पास पे करते लोग, बट सिंगल आइटम पे। If I am rich enough, मैं डोटा पे कर सकता हूँ। अगर मैं सऊदी प्रिंस हूँ तो हाँ। They're actually going to skip past this tier 2 because they want the pressure in here as quick as possible. Now, Layla's going to be वो मैंने पहली बार देखा, वो टाइड का ऐसा उड़ के जाता है, वो प्रोजेक्टाइल स्पीड है उस पे। हाँ उसको वो कर सकते हो, डॉज कर सकते हैं। हाँ मुझे लगा कि वो डायरेक्ट नहीं, क्या हीरो पे डालता है वो इंस्टेंट। 22 मिनट पे ले लिया भाई, ले लिया भाई। टाइड का शॉट बहुत ओपी है गाइस। राइट क्लिक एम्बलम का है, यस। मेरा का शॉट क्या है अभी लेटेस्ट? मीराना का शार्ड वो वेक्टर टारगेट करता है उसकी लीप को और डैमेज करता है, और वो कुछ इफेक्ट भी डालता है ना वुश वाला, तो वही डैमेज करता है ना वो आगे 150 डैमेज करता है। जो पहले बोलते थे कि सबसे ट्रैश शॉट मीराना का वही है ना? वही है अभी भी नहीं, पहले तो क्रिट्स है ना उस पे 4 में, ये अभी क्रिट्स नहीं है, अभी डैमेज है 150। गश मारता है ना कुछ तो, और वही बोल रहा हूँ, डैमेज देता है वो। lead's not growing, but the momentum is. Yeah, eventually a wave is going to be protected, and Gaming Gladiators will put damage on those buildings once again. You have to come up with. उस सेंटर में इतना मीम बना है, अगर इनको बनाते ही नहीं तो कोई नहीं बना। हेलो घोस्ट, हाय हर्ष। भाई उसको लिटरली शट डाउन कर रहे थे, शार्ड फेंक के उस पे और स्पिरिट पे टाइड का। Let's go ahead and make sure we have the spacing. We don't get caught too much like Quinn, who may be in trouble here. Does have the agents. Just going to be his first life, not a big deal. शेजी से उस पे, इसलिए वैसे आगे बिंदास खेल रहा है। Limping along, forced to use the The Stomp game 1. But they just do not seem to have the damage to threaten. Yeah, call it. Meanwhile, Nouns are dropping like flies out here. Usually TI में इतने जल्दी नहीं कॉल करते, तो रुकते हैं। TI है तो ऐसा नहीं होता है कि गिव अप नहीं करता है कोई, जब तक 3 साइड रैक्स है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर खत्म है गेम। अरे वाओ, क्या कंट्रोल किया रे उसने, फटाफट सब बटन दबा दिया भाई ने। साइलेंस के टाइमिंग पे कर रहे रे एयर स्पिरिट गनर। मैंने खेला एयर स्पिरिट, ऐसे लगता है कि लल्लू जैसे लगता है मेरे को। स्लैपी है क्या रे? कॉल पे ऐसा आवाज आया मुझे। नहीं
entire team fight put together for Nouns, right? We haven't seen it the whole game between the Radiance Brew, which is still. अरे टीबी बायबैक करके कुछ होने नहीं वाला है, उसका गोल्ड वेस्ट होगा, उससे अच्छा वो रुकेगा. Now you have Radiance Brew online. You have to get these ults in sync. That's been the biggest problem. Ace is just continuously forcing the issue before you're ready to take that straight 5-on-5. I mean, he instantly put that. टीआई देखना है ना, ऐसे सीधे चेयर पे बैठ के नहीं देख सकता यार मैं. मस्त चेयर का पीछे लेके, ऐसा नहीं है, सीट पीछे लेके आराम से देखना रहता है टीआई मेरे को. क्या बोल रहे हैं? आपका वाला चेयर है फुल 100 डिग्री पे. हाँ 180 डिग्री. तू भी यही चेयर यूज करता है क्या? नाइस. This is where this hero is absolutely terrifying, and तू कहाँ से है? looking down the barrel of Megas, it's going to be a hero you're thinking about game 2 no matter what. Because once he gets to control the game like this, it just throws you into a tough position. Going to look for a core pickoff of their own. If they can get it, the Inkswell is going to be able to help out Quinn. He rolls up, turns around. He rolls up. And it's going to be Nouns who are now on the retreat. Caught by the Soulbind. Does manage to get out the primal split though. And thanks to Gunner's heart, he does have plenty of HP. Caught here on the river. इससे ब्लिंक आउट कर सकते हैं, पता है? He is untouchable. पांडा चल है क्या? हाँ, पांडा का टोर्नेडो रहता है ना, वो डैमेज नहीं करता है, तो वो नीचे आने के पहले ब्लिंक आउट हो जाता है हवा में ही, मतलब नहीं कैसा खत्म. यूज डैमेज करता है ना 50. हाँ 50 डैमेज करता है यूज, बट ये डैमेज नहीं करता है. रोल ही नहीं कनेक्ट होता, मेरा भी नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. कॉमेडी हो जाती है. अरे अभी इसने रोल किया और पांडा ने उड़ाया उसका. वो ऐसे क्या दिख रहा है ब्रू मास्टर, थका हुआ, कुछ तो बोझ लेके जा रहा है बैक पे. देखा क्या किसी ने अभी वो कैसे जा रहा था बेस में? जब हेल्थ कम होती है तो हीरो ऐसे भी. हाँ मालूम है, बट ये अलग दिख रहा था ऐसा. हाँ वो लगता है कि मरते मरते जा रहे हैं. हाय एनवी, व्हाट्स अप? वीवर का फैन लगता है, उसकी हेल्थ कम होती है, उसका एक दो पैर काम करने बंद होता है. हाँ तड़ा लंगड़ा जाता है एकदम. लगवा मार रहा है. वो डैमेज ही नहीं लग रहा है, वो टायर्ड को खुजली हो रहा है. थोड़ा ब्लैक बस डैमेज ब्लैक कर रहा है. यस थोड़ा क्रिस्टल्स वगैरह पाहिजे नहीं चलती. क्या कर रहे हैं? क्रिस्टल्स चाहिए डैमेज थोड़ा टेरर ब्लेड पे. आई मीन टेरर ब्लेड अकेले डैमेज हो रहेगा तो मुश्किल ही है ना गेम, और डैमेज होना चाहिए था प्लेयर्स पे. देख कमबैक हो रहा है भाई. और कोई मारेगा बोल मेरा राइट क्लिक पे. विलो सपोर्ट दादा विलो. कोर बनता है ना, वो सेप्टर बनता है ना उसमें. क्या बना रहा है वो, रुक देखते हैं उसपे. अरे 4 स्टाफ रॉड फुल रॉड 4 स्टाफ कटर सपोर्ट है वो. पोजीशन 5 का वो एनपीए 5 उसने सोलर और ग्लिमर बनाया. लैग काले. लेट गेम ब्रू मास्टर कर सकते हैं राइट. मांटा अभी तक क्यों नहीं बनाया? मांटा बना के क्या ही डिजाइन करेगा वो, इसलिए नहीं बनाया. मांटा यूजुअली डिजाइन के लिए बनाते रहे. मांटा के ऊपर उसको बीके भी चाहिए था ये गेम में, इसलिए वो याशा बीके भी गया, समझा? ए प्रो लेवल प्लेयर है ना, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सोच के आइटम बनाते हैं. ऐसा अपन नहीं क्या यूजुअली बनाते हर गेम में, वैसा नहीं रहता है. वो सोचते हैं कि उससे ज्यादा क्या अच्छा रहेगा, क्या वैल्यू रहेगा. दे आउट क्यों नहीं मारा? बीके भी था अभी वो, इसलिए नहीं हटता. Yeah, that's all the way down to 6 seconds already. It doesn't feel like we've seen a fight where he got to use it at all. डोटा में बहुत सारे ईस्टर हैग्स है एनिमेशन में, लोर से लिंक करते हैं जो. अरे वो सब लोर बीर के बारे में पता नहीं अपन को. विलो विल गो ग्लेपनीर एग्स एंड पाइक. नाइस फैंटम. उधर तक गेम नहीं जा रहा है मुझे लगता है. कितना टैंकी वो डैमेजेस नहीं है रे. चेन इतना टैंकी है ना भाई. वो चेन के पास क्या है पता है क्या? चेन के पास पाइप और सोलर क्रेस्ट है, उसके ऊपर और कुछ बनाए तो पता नहीं उसने. अबे उसके ऊपर उसके पास व्लाड्स भी है, और वो वाला आइटम है वो न्यूट्रल वाला,
ओगर्स टोटेम सील या कुछ तो रहता है ना वो. He's out. He's died. No one's pick spec. पता नहीं यार. स्पेक्टर है ना मैप पे मारता है बहुत, बट हाई ग्राउंड नहीं तोड़ता है. समझ रहे हो क्या? ये मिली कैरियर्स का प्रॉब्लम वही रहता है. हाई ग्राउंड तोड़ने में दिक्कत आ जाती है. स्नाइपर भी नहीं खेल रहे. स्नाइपर फिशर कैरी है. कोई एक चढ़ के उसको मूव कर दे तो खत्म हो गया. हाँ. Any blink hero is good against sniper. टॉपसन पक्का खेलता रहता था. लिख के नहीं खेला वो. चांस था उसके पास खेलने का. Let's go Dota. अच्छा. Oh my god. नाम ठीक से मेरे को समझा ही नहीं. My bad. If you ever had it on the side of Nouns, that's going to be a 31-minute megas. Mega. And I love the fact that they just back away. Bye bye. They're going to deal with further objectives. They've got Tormentor. They've got Roshan coming up. They are not going to give an opening to Nouns and let them climb back into the game like they did earlier. TP shard OP है ये इसका. And they will back away. Roshan is going to be spawning in just 15 seconds time. And Nouns TP shard क्या बोल रहा है? against megas for the rest of the game. We have seen our fair मिलता है ना वापस. नहीं वो कुछ तो अलग लिख रहा है. वो वैसे उसके आगे कुछ ना अलग लिखा उसने. अच्छा वो नहीं है अभी. पहले पत्थर मिलता था एक्स्ट्रा. अभी ग्रैब अलाइज है वो. पत्थर अभी ओवर टाइम मिलते हैं तेरे को गेम में लेवल अप पे. We've seen a lot of those games, but again, Game of Gladiators, that's just not their MO. They don't let you get to the ग्रैब वाला इस बहुत पहले था ना. वो टैलेंट था रे. हाँ बहुत पहले था. 20 या 25 लेवल पे टैलेंट. 20 लेवल पे था अच्छा टैलेंट वो. टाइड का शार्ड तो ओपी है भाई. I mean, what has been the answer from the entire game? And मेरे लगा भी डिनाई किया इसने. क्वीन ने फटका मारा ना कुछ तो पीठ में. क्यों एक्स्ट्रा करता. Damn, it's just gotten delayed here as Hector is still searching for the damage. Sad, yeah. The levels as well. When you don't win the fights like this, you just fall behind. He's only level 6. किसका आवाज आ रहा है भाई? Yeah, and we're seeing the 17. The carry ability of the Weaver. You talked about how this hero scales so much better than it used to. ये देख क्रिस्टलिस बनाया बोला ना. Level 20, so he's got the plus डैमेज 90 चाहिए. generate attack damage. Plus the shard. कौन बनाया क्रिस्टलिस? टीवी. टीवी. ये डैमेज इशू हो रहा है तो क्रिस्टलिस. वीवर ने एमकेबी क्यों बनाया बताया ना. प्रीएम्प्टिवली. नहीं वो ब्रू मास्टर का डिवीजन बहुत हाई रहता है. वो अगर वो कुक हो गया तो आर्मर हीरो है तो उसके अगेंस्ट. हाँ मैं वही बोलने वाला था. आर्मर हीरो टीवी. आई मीन बोथ है बट मेनली तो ये डिवीजन है उसपे. As they get these two pickups and into the base they go to now finish it off. Quinn just burning Hector's man out as well. I mean, everything is around Ace. Go with Ace. Follow his jumps. Which team I am supporting? Hello, Scooter. I think I want LGD to win this TI. I want. Yes. I want China to win. Ideally मेरे 4 टीम्स है ये टीआई के. 5 थे बट टॉपसन आउट हो गया. बट अभी 5वां अज़ूर रहे उसमें. 4 टीम्स है. LGD, लिक्विड, स्पिरिट एंड क्या था वो बेडबूम. ये गेमिंग वगैरह मेरे को पसंद नहीं है ये सब. नोप नॉट माय टीम्स. चाइना 2016 से नहीं जीती ना भाई. शेयर क्या मस्त है देख रहा है टीआई का. चाइना का पहले अल्टरनेट था ये. चाइना 2015 जीती शायद से कि 16. विंग्स वाला. विंग्स लास्ट जीता है. हाँ एक्चुअली ऐसे रहता था ना. 1 साल चाइना 1 साल ये. तो 18 में ओजी जीता और फिर चाइना का 17 में लिक्विड जीता था ना. हाँ ओजी ने कर्ज तोड़ा. तो मतलब 16 में चाइना जीती थी. उसके बाद से नहीं जीती है चाइना. नोप. बट वो प्लेयर आ गया वापस जो 16 में जीता था. ए लैग. हेलो काले.
काला नहीं वो ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट है। अरे काला नहीं रे, काले मतलब वो चाइना में बोलते ना लैग हो गया तो काले। वहाँ पे क्विन का आधा सर कट गया। It is the best of 3, so there's always the potential for Nouns to be able to come हाँ on our panel, though we had a little bit of a change up. दिख रहा है क्या वो प्लेयर के इधर बाजू में? Talking about this little NA showdown, bring the faith for the अरे प्लेयर्स का ये दिख रहा है क्या? अलग सीटिंग किया है। You know, like either way, America wins today. So that's what matters, and also hi Seattle, by the way, everyone. So fly. Fly. Hello, fly. It appears Seattle is saying hi back to you. That's nice. That's nice. That was a fantastic showing from gaming, and my God, these guys are Spotify rebellion. Pick one team बोला ना LGD bro. Spotify LGD number 1. China number 1. GG versus Team Spirit final, and Team Spirit will win. Gaming Gladiators are able to perfectly execute that one for themselves. वो GG नहीं जा रहा है किधर? Wasn't so strong for them, Rezo. GG has been the most consistent team this year. तो रियाद में क्या हुआ याद है ना? TI जब भी आता है ना क्लोज, ये सारे जो साल्वर मारते हैं वो हक दे TI में जाके। when they're like pressuring this mid tower super hard and like they know their timings exactly well now. 2016-17 OG नहीं हाँ ना नहीं OG नहीं जीतते थे। अरे हाँ ओके पहले वाला बोल रहा है तू। हाँ 17 में was hope OG जीतेगा पक्का। And then Liquid pulled it off. I mean after that jump moment, Lucas, why weren't उसके बाद ही थोड़ा टीम इन लोगों ने why weren't they able to S4 और Fly ने हाँ 2018 से पहले 18 में छोड़ा 2 महीने पहले किया। अरे लैग इज नॉट रेसिस्ट, काले मतलब उनके लैंग्वेज में लैग रहता है, वो ऑल चैट में लिखते हैं ना जब भी लैग होता है। हाथ पे टैटू क्या है? It's time to take Tide coaching from Playstyle. Playstyle? Tide? I mean Team Spirit ले जाएगा तो I won't mind. अच्छा टीम है भाई। यात्रो is a god level player, Collapse is god, दोनों support gods है उधर। वो लाल भी अच्छा खेल रहा है और आजकल। लाल बहादुर शास्त्री। What is Artstyle doing now? Coaching still? Tundra was doing it throughout the year, नहीं रे? पूरे साल गैमन ने जीता है। नहीं लास्ट ईयर बोल रहा है वो, जब भी TI जीते वो तभी साल भर जीत रहे थे बोल रहा है। टुंड्रा नहीं जीत रहा था। नहीं OG साल भर वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ ओके पिछले साल का अलग बात है। I mean हो सकता है कि एक टीम साल भर भी मारेगी भी TI भी जीतेगी, बट ये GG नहीं जीत रहा है TI, इतना मुझे पता है। Fly, you're a bit of a Chen player yourself. We got 20 assists on it, so it's a pretty good showing for Chen. But how do we make him work, and why is it only really Gaming Gladiators? OG का एक ही respect है, back to back मारा है। One of the only teams that's willing to go down this route because most of the games now they end up being pretty late. एक ही prediction सही आया अपना दोस्तों। And you're aiming to play 40 minutes. You're gonna टोफू वाला, बाकी सारे हार गए अपन। एक लेवल मिल गया मुझे उससे। Timing's pretty early, like 15-20 minutes is kind of like your critical mass. You can take any objective super fast. Your laning stage is a little like not the best. They picked a Weaver to make up for it. So suddenly you have a good laning phase with Chen. He was able to open up the small camp. He got a Harpy, which is basically what we're praying for as a Chen, you know, as a Chen player. Yes, you need a Harpy as a Chen player. They discuss this and they understand how to enable the hero because that hero needs enabling. You cannot just pick a Chen and be like, yeah, that's fine, just go play Chen, like you would pick, you know, a Phoenix. You know, a Phoenix can do fine in almost any situation. Chen needs a very specific set of conditions, and these guys understand it better than anyone, and they're willing to do it, which is really impressive on the stage. And when it works, it works. I mean, like we all said, they're able to close out a game in 30 minutes. We're going to hear, though, a little bit more information, a bit more of a breakdown, as we do have Purge standing by. Thank you, Purge. Yeah, Gaming Gladiators going for a very aggressive push strat with that Chen pickup in this game, and because Tofu didn't die, हाँ 0 death पे खेल रहा था वो. Keep your net worth high while you're doing this. So if we take a look at some clips here, we can see some of the things they did. 15 minutes into the game, they're sieging the tier 2 tower. The only way Nouns can defend this is by either grouping with the team fight or by counter pushing. They tried to counter push this, but what Pango does is he jumps in and zones out Gunner. This तीनों दिन का था from फाइनल के the tower, and तीनों this दिन. allows Doraccio now to just escape towards the right. So while his team deals with
with the tier 2 tower at a surprising 15 अच्छा, minutes. 700 for 3 days To farm the rest of the Yes. map. 700 plus 100-150 tax था कुछ It's तो. basically everything here. This is all his space that he can get farm for on the map as he moves down there with the fast hero. So this means he gets to accelerate net worth. He doesn't get behind against the enemy carries, and his team gets to further map control and gain advantage. And that map control is what finds him those kills Yes, that Writ allow Pack, them to Crimson go Pipe, high क्या ground क्या नहीं for बनाया था वो don't लोगों ने have their TI cooldowns. जीतने के लिए. They can't Nerds थे वो actually लोग. take the team fights, and that's what gives Gaming Gladiators the advantage in this game. Thank you so much, Verge. Nice breakdown there, and the visual cues. Yes, and we correct. But sometimes we're talking about team fights. Sometimes we're talking. I mean जीत सकते हैं रे जीजी. वो तो मैं मेरा बता रहा हूँ व्यू कि I don't think जीत रहे. तुम लोग को लग रहा है जीत सकते हैं उसमें क्या है? I can be wrong. Information for you. It's about one of our teams currently on stage. It's about Gaming Gladiators. मैंने नया ग्राफिक्स कार्ड ले लिया. No more Dota in 2030 FPS. Wow, क्या लिया? 4060. Nice. ये कौन है छोटू? टोफू. बचपन से ही बाल बड़े क्या भाई? कायदे से मैं भी. क्या? मैं जब 10 साल का था तब से खेल रहा हूँ. तो थोड़ा ऑन ऑफ था. Getting interested. I bought a laptop there. I started playing on a laptop. Then at some point back home in Germany, started studying. I'm like playing from the kitchen table or lying down in my bed. And eventually when they introduced the DPC leagues, I was like, Div 2? I can do Div 2. And then, I don't know, I eventually got ambitious and wanted to prove whether I can make it or not. He's still alive, but not for much longer. Eventually he will fall to Tofu. I started grinding into top 100, getting into games with pro players, eventually making contacts, friends. The golem comes down on the slash curtain on through though. GG's are called, and the series will go to the Hellbear Smashers. My first team Hellbear was Smashers back then. Tofu though, watch Tofu, watch Tofu. But I don't know, it's not really real if you're not playing against a real and big competition. From watching TIs like filled of hype and emotion, and you see these teams with like fireworks winning and sad teams losing, the whole spectrum of emotions you get with like eventually people lifting the ages and me at home at this. Bro was playing Dota on CRT monitor. भाई हम लोग भी खेले हैं. CRT monitor से खेला है मैंने भी. Starting Dota 2 CRT पे ही खेला है मैंने, पता है. और मेरा CRT monitor वैसा था कि कलर चेंज होता था, तो उसके एक मुक्का मारना पड़ता था स्क्रीन पे, तो वापस कलर नॉर्मल हो जाता था. Yes, I remember. हाँ नहीं नॉर्मल ही था, बट वो कलर वो ऐसा ग्रीन वगैरह हो जाता था पूरे स्क्रीन का. ग्रीन मतलब 2-3 मुक्के मारने पड़ते थे. पहले मुक्के पे ग्रीन, दूसरे पे पिंक, ऐसा अलग अलग कलर आते थे, फिर जाके नॉर्मल होता था वो. मैचेस के बीच में पॉज करके मैं रुको आया बोल के मारता तब माइक म्यूट करके. क्या पता तुम लोग को स्ट्रगल भाई. तब वो माउस यूज किया क्या? उसमें हार्ड बॉइल्ड अंडा डालना पड़ता है एकदम. तुम लोग को पता है क्या वो माउस में अभी अपने माउस पे सेंसर रहता है नीचे, पता है स्क्रॉल ये करने के लिए. पहले माउस के नीचे एक बॉल रहता था. तुम लोग को पता है? तुम लोग को हाँ, तो वो बॉल वाला माउस भी यूज किया अपन ने, समझे ना? अंडा सब कुछ क्या बोलते हैं, सब कुछ क्या फेरी टेल नहीं है कि सब एकदम अच्छे पीसी पे ये इधर आ गए कुछ कर, क्या बोलते तड़प तड़प के आए इधर. ऐसा नहीं है कि घर वाले अमीर है और नहीं क्या खरीद के दिया है मजे करो. तड़प तड़प क्या है भाई. मतलब ऑनेस्टली जो बोल रहा हूँ, ऐसे खेले हम लोग भी सादे पीसी पे, सादा इस पे कैफे में 5 रुपए घंटा कैफे, 10 रुपए घंटा कैफे, ऐसे खेले रेट. आप अभी जाओगे कैफे में 60 रुपए घंटा है कम से कम. हाँ 60-70 रुपए. ग्रे अंडा देखो, रिलेट कर सकते हैं लोग, पता है ना. That is a very calm and collected and very cool. स्टैटिक नॉइजेस छोड़ रहे, उसको स्टैटिक शॉक भी लगता था, पता है अगर तेरा चेयर प्लास्टिक का रहता था तो. CRT मॉनिटर पे. Well, I mean, there's not much to talk about other than like how well the Gaming Gladiators played and लेफ्ट में नहीं लड़की है like much transition needs to be made from Nouns to नहीं है, win 2 साल से है वो I सीन. think they need to make some strategies pop up there. ऑस्ट्रेलियन नेशन क्रिट की गर्लफ्रेंड है वो शायद से. They need something to break the game. They need to break the game because otherwise Gladiators are gonna like take
take this stable game and they progress very well with it. How crazy is too crazy, Lucas? Because we lacked the flair that Nouns have brought so far in TI Road to the International. So where's the line? Is this it? This is your last game? Bring it out. Potentially, do that mid-ogre? I think Nouns, they need to go back to how they've been playing throughout the DPC, you know, playing at the major, the last major, and I feel like they need to bring out the big guns because if they want to play it भाई कैफे डेज सबसे बेस्ट है अभी वापस नहीं आने वाले वो कभी और नए वाले बच्चों को पता भी नहीं रहेगा कि व्हाट इज कैफे कल्चर भाई झगड़े होते थे कैफे में पीसी पे बैठने के लिए अभी अपना अपना भाई अभी के पब्लिक अकेले अकेले खेलते रहे कैफे में पहले कैफे में एक साथ खेलते थे सारे 10 लोग पहले फुल नेट कैफे था नहीं क्या आई पीसी इतने फालतू रहते थे फिर भी खेलते थे उधर लोग तड़प तड़प के अगर टाइम नहीं बढ़ा है घंटा के डेढ़ 1 पीसी यस रेजो इज ओपी प्लेयर सीआरटी टीवी चलाया है बट तब मुझ पर पीसी तो नहीं था हाँ ना यार इतना happened and what do we need to do for the next game? Like don't overstress it because your backs are against the ropes. You're one game from elimination. You need to be able to be as collected as you can possibly be. Yeah, well, Gunnar has some good stats for himself, so in a single match at this TI. और CRT मॉनिटर आई थिंक स्क्वायर रहता था पता है दोस्तों ये अभी जाके रेक्टेंगल वाले मॉनिटर्स आए CRT monitor used to be square. Dota square में खेलते थे अपन पहले पता है? Frozen Throne bro. It's all where क्या बोलते हैं उधर से चालू हुआ है सब कुछ. Actually Warcraft 3. फ्रोजन थ्रोन के पहले वाला कुछ तो था ना वो एक ग्रीन कलर का आदमी थ्रॉल आता था वो भी देखा है मैंने क्या लगता है नाउन जीतेगा सेकंड गेम जीतना चाहिए आइडियली जो मोमेंटम लेके आए ना वो लोग PS 1.6 खेलता था कैफे में बाद में बाजू वाला दिन भर डोटा खेलता था देख के खेलने का मन किया नेवर केम बैक फ्रॉम डोटा भाई डोटा ऐसे ही गेम है तू चालू करेगा ना डोटा हाँ ऐसे कोई स्टार्टिंग में खेलता नहीं यू सी समबडी प्लेइंग हाँ मैं हम लोग का भी वही हुआ था समथिंग डिफरेंट यस भाई मेरे को जिसने डोटा सिखाया है ना वो अभी पॉलिटिक्स में है और वो लिटरली वो उसके लिए खड़ा रहने वाला है पता है कॉर्पोरेटर का ये रहता है ना इलेक्शन वो उसके लिए खड़ा रहने वाला है और मैं अभी मतलब मैं जानता हूँ उसको अभी भी बट वो आदमी ने डोटा सिखाया रे ऐसे लगता है सिखाया मतलब चालू करवाया कि चलो खेलो डोटा आओ ये गेम खेल के देखो ऐसा था ऐसा नहीं कि वो बड़ा अंकल वगैरह है यंग बॉय ही है तो कॉर्पोरेटर सुन के अंकल ही आता है ना दिमाग में यंग 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 वाला एकदम यंग ब्लड 27-28 रहेगा जिसको डोटा सिखाना आता है ना वो सबसे पेशेंट आदमी रहता है बाप रे मेरे को पूछना सैटरडे को क्या होता है ए मैं आया 1 मिनट में दोस्तों यार भी you know, it can give off the wrong vibe, but if you look at your teammate and they're just confident, they're just sitting there, they're just chilling. It can kind of instill a confidence in the rest of your team, right? Like this guy is just here, you know, he's just playing. Because I'm a veteran, right? So it's like the younger guys, whether instinctually or not, are gonna look at me and try to like how's this guy acting? Like how is he doing it? I think that I kind of have to be almost you almost have to be a role model in that sense. You know, I play with misery, I play with fear. And I remember thinking like these guys, they have habits, they've been around forever. Like whether I realized it at the time or not, like you end up copying them in a way. So I guess that's me now. I'm the old man. Old man for himself over there, but the body language is the key. Apparently that's the indicator, Lacoste. When they were walking out, did you have a look at their body language, how confident they might be feeling from their walkouts? Yeah, I didn't see anything, you know, that I should be too worried about. Maybe some slight nerves coming in because it is the first time that they're playing on the stage for a couple of players. But, you know, we've seen some of the comebacks. We've seen... Hello, Soda Lemon Pop. Let's go. Game 1, which is the only one in the lower bracket. Dota is all about misery and fear. Hey, those were like old school players. See Hector on more explosive hero. Something that comes online fast that is not, you know, this... मेरे भाई को देखता वो
जो फुल चिल्लाता है गेम में उसको देख देख के एडिक्शन हो गया गेम में चिल्लाना वही होता ही है डोटा में तू मारेगा तो भी चिल्लाएगा तू मार खाएगा तो भी चिल्लाएगा टीममेट्स पे चिल्लाएगा या सामने वाले पे चिल्लाएगा शील कांट एक्सटेंड टू फ्रेंड्स व्हाट इज डोटा अरे भाई मेरे रियल लाइफ फ्रेंड्स है ना मेरे को बोलते हैं तू क्या करते रहता है रे मैं बोलता यार तुम लोग चुप बैठो यार So it depends what they have prepared. कुछ समझ भी नहीं आता है डोटा It's on Nouns to change what they're going to do and then for gladiators to respond. If you're in the Nouns सेम मेरे साथ है मैं लाइक मोबाइल में YouTube के वीडियोस देखता रहता हूँ डोटा और मेरे को लोग बोलते हैं क्या करता है ये क्या है मतलब और लोग बैठ के बाजू में फ्री फायर खेलते हैं अरे रे इधर फ्री फायर PUBG बहुत चलता है मैं सबसे गुस्सा तब आता है जब मेरे दोस्तों के सामने स्ट्रीम कर रहा होता हूँ और मेरे को बोलते हैं ये लीग है क्या मेरा दिमाग खराब होता है Game 2 फिर भी तुम डोटा के बारे में अच्छा ही बोलोगे डोटा को डिफेंड करोगे Hello Rahul, what's up? I have played on those machines which used to have coin system. अरे कॉइन पे खेला है तो हम लोग वो घर पे वीडियो गेम बोलते थे उसको छोटा कंसोल आता था उसका ये साइड कितने 4 बटन रहते थे ये साइड वो एरो कीज रहता था एरो और बीच में सिलेक्ट और स्टार्ट 2 बटन रहते थे वो वाला कंसोल घर पे वीडियो गेम बोलते थे हम लोग उसको पता नहीं लोग क्या बोलते हैं उसको बट वी यूज्ड टू कॉल इट वीडियो गेम कॉन्ट्रा मारियो आइलैंडर गैलेक्टिकोस बहुत सारे गेम थे Galaxian. Swing Dota to someone is as complicated as quantum physics. बाप रे. Try explaining to someone what you do in the game. Oh my god, that's the what do you call hardest part. Even when I'm streaming ना, बहुत सारे लोगों को नहीं समझता है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं गेम में ऐसे क्यों जा रहा हूँ ऐसे क्यों स्पेल यूज किया ये क्यों किया इसलिए मुझे उधर हाइप क्रिएट करना पड़ता है दोस्तों तुम लोग ने देखा क्या मैंने क्या किया इट्स लाइक दैट फिर समझता है लोगों को Went for is, you pick up that shard, maybe a booster, boots of travel, and then turn the booster into heart, into aghanim. Floppy disk. Oh भाई, floppy disk भी यूज किया है मैंने पता है? किसी ने यूज किया? तुम लोग ने तो देखा भी नहीं रहेगा floppy disk. क्या समझ रहे हो? मैं 2002 का हूँ. तो तभी था क्या? हाँ, ऐसे लग रहा है. डिस्क था वो हार्डबॉइल्ड अंडे वाला माउस था. सब करा है मैंने. ओके माय बैड. नहीं रे मतलब तुम लोग बहुत छोटे रहोगे ना इसलिए पूछ रहा हूँ मैं और कुछ नहीं. ऐसा नहीं कि तुम लोग ने देखा ही नहीं रहेगा. बहुत छोटा था पर मेरी मेमोरी अच्छी है. नाइस. डक शूटर खेला है ना भाई वो गन से यस वो हंसता था और वो कुत्ता आके बाहर मिस करने के बाद यस ब्रो यस 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 ओजी गेम्स में वो सब थे कॉन्ट्रा मारियो टेट्रिस रोड रैश मिडटाउन मैडनेस ये सब डेव खेला क्या डेव प्रिंस ऑफ पर्शिया डेव 2 भी आ गया था अलादीन नहीं खेला प्रिंस ऑफ पर्शिया आई थिंक फर्स्ट पीसी गेम वाज डेव for me and then Aladdin hero that plays on low HP and also in terms of laning you do absolutely nothing. This is going to be the potential off lane necro and yeah really glad that they got rid of it and now they also have first PC I used to play with those big floppy disk like Aladdin हाँ भाई मैं भी old timer ही हूँ भाई पहला गेम डेव खेला है बोल रहा हूँ ना मेरे लाइफ का मैंने 2002 वाले बच्चे सुन के लोग भाई देख तो पता है क्या मेरे YouTube एनालिटिक्स में जाओगे ना कभी तो वो ये रहता है ना कि एज रहता है ना सो उधर ऐसे ऑप्शन रहते हैं 18 to 24 एंड 24 to 35 या 25 to 35 ये रुको मैं आया दरवाजे पे कोई तो it gives you objectives it pretty much does everything it's also a tinker for whatever reason it becomes a tinker late game we saw Ace play it it was insane right that clip where he gets a blink across the map and you can even play it as a support if you want because it is a strong laner as like a very last resort. So Spectre, while it is good against Dazzle in the game in a very like theory you can jump the Dazzle, but you might get bullied in the lane and Dazzle is also good at grouping up which is something Spectre doesn't like. So it's sort of like a double-edged matchup for me.
Yeah, it looks like gaming's not like gonna switch things up. They're gonna just keep going for this ball, super push with Dazzle already, like having all the auras and like protecting the backline. And as you said, like this Dazzle is not your ordinary support Dazzle that Spectre can jump and burst, right? This is gonna be like super fat Dazzle with like BKBs and like 3000 HP, and it's not gonna be as easy to focus him in the fight. तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो YouTube पेज पे है ना कुछ तो 16 to 24 या कुछ तो रहता है, पता नहीं मुझे, और उसके आगे का 35 वाला एज तक रहता है, तो वो 24 to 35 वाले सबसे ज्यादा है, पता है लोग अपने देखने वाली, वो एज ग्रुप है डोटा का बेसिकली। गेमन ने एक्स क्यों नहीं बैन किया? एक्स नहीं रे, वो बहुत लो, कैसे बताओ तुझे, पता है क्या, डैजल के सामने एक्स मतलब अपने पब्स में या लो रैंक में ऐसा ही चलता है। वो डैजल मतलब डैजल ग्रेव के लिए नहीं खेलते, पता है, डैजल बहुत कुछ करता है, इट्स नॉट ओनली ग्रेव। वो तो एक्स लेगा तो भी कुछ नहीं करेगा, पता है, ऐसा है। I mean, हो सकता है कि नहीं क्या वो एक्स मारे भी, बट डैजल लेन में पहले तो अब्यूज करता है, फिर उसके बाद वो अनोइंग चीजें चालू हो जाती है उसकी, और फिर एक्स लेंगे ना, और एक्स लेंगे ना तो एक्स को वो लाइक लेन में काउंटर करके उड़ा देंगे, इसलिए एक्स पता नहीं अच्छा नहीं है। And I also wanted to touch real quick. Tiny mid है, Tiny off. फर्स्ट गेम कॉन्ट्रा, अरे वैसा फर्स्ट पीसी गेम फर्स्ट गेम बोल रहा हूँ रे दोस्तों देव, पहला मेरा गेम तो वो सब ही है, कॉन्ट्रा, मारियो, ये सब। पैकमैन बाद में आए रे तुम लोग। But I'm not sure about this gaming gladiators pick up of the Chen, because it seems to me that they're double downing on the on the auras and the push with the Zaza, and they're liking like those three heroes are liking in damage for now. So they need to pair it like really well with some hero that has constant damage like Terrorblade, and if they don't get it, they might have troubles. Axe करी लास्ट ईयर, बट वो Axe तो अभी मेटा में था ना ब्रो, उसका वो शार्ड भी ओपी था। यो केल्विन विंडोज 98, यस हाँ बोल ना। टाइनी कौन सा पोजीशन है? वो टाइनी सामने वाला 4 है, 4 टाइनी 4 है, डैजल मिड है। हाँ First of all, to what Rezo said, they already picked Darks here. I mean, वो लोग स्विच भी कर सकते हैं। So that was kind of a cool call. I would like to see Tiny mid. We saw this Grim Spectre combo. वो गेम वो हीरोज देख के करेंगे। You Inkswell the Spectre and then she ultis out. That's a really cool way to get Spectre into the game. कैरी दिखाएंगे इधर अभी वो लोग। And then you can also play with the Tusk. ब्रूमास्टर, एक मिनट, ये ब्रूमास्टर ऑफलेन है, क्योंकि वो कैरी नहीं खेलता है डेराचियो, पता है? ब्रू मास्टर क्या बोल रहा हूँ रे मैं? लोन ड्रुइड सॉरी, मैं वही रिफ्रेश मार रहा था पेज की, ऐसा क्या देख लिया? नहीं माय बैड भाई, विंडोज 98 यूजर हूँ मैं भी। ओ नहीं, मैं उतना भी पुराना नहीं हूँ, मैं एक्सपी वाला हूँ। विंडोज 98 यूज किया मैंने। कार्मागेडन भाई मैंने बहुत खेला है वो गेम, वाह इट वाज फन। फर्स्ट पीसी वाज इन 1998। नहीं भाई, अपना पीसी लाइफ में बहुत लेट आया, अपन दूसरे के घर पे जाके खेले पहले, अपने घर पे पीसी आने के लिए टाइम लगा था। किसी ने मिड टाउन मैडनेस खेला है क्या दोस्तों? मेरे को बहुत पसंद था वो गेम, बहुत बढ़िया गेम था। उसमें एक येलो कलर की रोस्टर मैडनेस 2 में जो मैं दीवारों पे चढ़ा सकता था, बहुत मस्त था वो बिल्डिंग पे। डिड यू प्ले वाओ? नहीं, वो सब गेम के लिए मैं गया ही नहीं मेरे लाइफ में। वाओ, रैग्नारॉक, वो सब खेलना ही नहीं था मेरे को कभी। आई न्यू इट। GG gonna win? I think GG ये जीतेगा ब्रो, लुफर्ड। I think it's a different concept because what they're doing is basically saying we're gonna get a gold lead and this gold lead Nouns पता नहीं बहुत लेट गेम पिक्स ले रहे हैं। नहीं ये आजकल लेट गेम नहीं है लोन रोड। Nouns सॉरी, Nouns माय बैड। नहीं स्पेक्टर अभी लेट गेम नहीं है ब्रो, ऐसा स्पेक्टर रन बना के 6 लेवल पे मारना चालू करता है, पता है मैप पे एक्टिवली। वो उस दिन कर रहे थे ना, उस दिन पता है क्या कर रहे थे, वो स्पेक्टर पे ना ग्रिमस्ट्रोक थर्ड स्पेल डालता था और फिर वो अल्टी करके एक हीरो मार के वापस, ऐसा होता था। बहुत मस्त खेल रहा था। कौन सी टीम थी? वीपी खेल रहे थे शायद से, या कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है। Nouns only has one option. They have to get in there. They have to get into the center of the fight. Does that mean Pango या कुछ और? Grimstroke is going to max Inkswell. He's not going to have. ये लोग ने ब्लर्सिकर बैन किया है। They have to jump everyone, cast their abilities, and hope something dies. And I don't think they have it right now.
maybe it'll change it. और कौन सा NFS 2 भी खेले हुए हम लोग. Yes. 12 नहीं. NFS 2 Most Wanted ये वो बहुत NFS के तो बहुत सारे खेले. उनका बेट पिक बचा है ना, क्या पिक करेंगे? 12 पैंगो किसका? Nouns. फर्स्ट पिक उनका है शायद से जीजी का. हाँ पर अब क्या पिक कर सकते हैं? वो देख के पिक करेंगे ना सामने वाला क्या उठाता है. अभी तक लेन्स क्लियर नहीं है ना, लेन भी देखेगा गेम भी देखेगा. ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट रहता है या प्लेयर्स? भाई ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ड्राफ्ट. तुम लोग के ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें प्लान होती है कि तुम लोग को गेम में क्या करना है, पता है? नहीं है अच्छा, बहुत ग्रेडी है, कुछ करेगा नहीं मैप पे. और डाजल उसको रुला देगा. और Alchemist. क्या बज रहा है ये? Alchemist अपना वो बजा रहे हैं, वैसे अच्छे का डमडम नहीं होता. ओह मैं बोल रहा हूँ कि कोई कुछ तो माइक से आवाज आ रही है. वो अपने ब्लेड्स को ऐसे साथ में क्लिंक करता है. I don't think we're gonna see a lone druid mid, but I think now. So I was wondering this because Ace is known to be a lone druid player. Yeah. But when they picked lone druid, I thought this is a good matchup against Darkseer. So maybe Darachi is gonna. Ace है मैंने बोला ना. I can see being a lone druid. Darachi नहीं खेल रहा है. And this Alchemist being just safe lane against Darkseer because Darkseer does typically give your carry a free lane. कैसे कर रहे हो? Natural Alchemist. Might be Alchemist for Queen as well. Just like you're looking at the. बहुत टाइम है वो लोग के पास. If he's gonna have a free matchup mid. मेरे को recently पता चला Alchemist मतलब जो बंदा बैठा है ना ऊपर वो रहता है. हाँ. From there. Good thinking from Gaming Gladiators. They don't have the last pick. हाँ जो ऊपर बैठा है वो Alchemist है, नीचे वाला तो Ogre है. In this mid lane, which Nouns they still पूरा कंट्रोल करता है ना ऊपर बैठ के. और टेकिस मतलब टोटल 4 बंदे हैं ना? 3 स्क्वीन कुछ तो है, पता नहीं मेरे को, नाम नहीं है ठीक से पता है. एक आगे रहता है, एक बीच में और पीछे डब्बे में बैठा है. पीछे में रहता है. हाँ. And this is why this Dazzle hero is a headache to draft against because they have to pick a mid hero that's. एम्बर नहीं, एम्बर नहीं है, एम्बर को तो रुला देंगे. बट एम्बर डार्कसेयर के साथ लेते हैं, पता है क्या? वो शेल अब्यूज करने के लिए. पता नहीं क्या लेंगे ये लोग. बाय द वे दोस्तों गेम में जाके प्रेडिक्शंस करने हैं, याद रखना. I'm not sure really what else is that good against Dazzle. It has to be a ranged hero. I was looking at any other range Tiny heroes against that Puck played sucks. so far in the road to internationally. Only other one was Invoker. कोई भी spirit kind of sucks. Which he already said that he doesn't want. Let's go pick something guys. It comes down to Invoker at this point. Maybe some Queen of Pain, but not that hot. Oh nice. Cottle is good. Alright, well now, was that last pick enough to tie all of Nouns together in your eyes, Fly? Their draft is all those holes that you pointed out. कोच ड्राफ्ट कर देगा हमेशा? I'm afraid for them because कोच करता है, मतलब कोच बटन दबाता है. डिस्कस तो सब लोग करते हैं, कोच ने नहीं क्या हो, कोच रीड करता है ना कि ये करना है अपन को, वो करना है, स्टैट्स बना के आता है, सामने वाली टीम ये करती है तो वी हैव टू डू दिस. और वो भी जरूरी नहीं है कि कोच बटन दबाए. हाँ वो तो बैठता है ऐसे, वो तो रहता है. कोई टीम को है ना जिम्मेदारी नहीं लेनी रहती है, पता है क्या? इट्स वेरी हार्ड. ड्राफ्टिंग इज नॉट अ इजी टास्क. अपने लोकल टूर्नामेंट का नहीं बोल रहा हूँ, हाई लेवल में ड्राफ्टिंग इजी नहीं है. बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, तुम लोग को दिमाग में रखने पड़ते हैं, जो सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि कोई भी बैठे और कर ले. प्लेयर को खेलना भी है, दिमाग भी लगाना है, उसके ऊपर पिक्स को भी, तो वो लोड वो कम करने के लिए कोच को ड्राफ्ट करने मिलते हैं. सेव मस्त कोच था पहले ओजी का. यस सेव इन जनरल बहुत होशियार आदमी है, बहुत स्मार्ट है भाई. ही इज वेरी 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 गुड. आई गेस वो एनालिस्ट था पहले, प्लेयर से पहले. वो बना था नहीं, वो प्लेयर था, फिर वो एनालिस्ट में बन गया. हाँ, और फिर वापस प्लेयर बना, फिर कोच बना, फिर वापस प्लेयर बना, फिर ये चलता रहता है. सेव का चश्मा देखा किसी ने? प्रॉपर भिंगा है. हाँ. अंधा है भाई वो बंदा. उसकी आँख का ऑपरेशन भी हुआ है. हाँ उसका कुछ इशू है आईज में. बीच में नहीं कि एक टूर्नामेंट में वो आई पैच लगा खेल रहा था एक आँख से बस. कोई तो एक टूर्नामेंट खेला ना आई पैच के साथ वो, और वो जीता है एक आंख से सरप्राइजिंगली.
मेजर खेला था शायद से कोई तो। Well, hopefully we're going to be able to do more than 70 for this one. Game 2 of Nouns versus Gaming Gladiators, and there's no other way to say it. That game 1 was a stomp, Avery. Yeah, that was a bit of a one-sided game. Anger issues. दोस्तों प्रेडिक्शन में क्या-क्या है गेम में? आप ही बताओगे, हमने नहीं लिया कंपेंडियम। Player with highest total magic or pure damage done to heroes by 10 minutes. This is KOTL, guys. Then number of tiny avalanche toss combos. कौन खेल रहा है टाइनी? टाइनी आई थिंक सैलरी टोफू पूरे गेम में आई थिंक 0 to 6, क्योंकि वो एक साथ नहीं करते, पता है क्या? एवलांच स्लोली डालते फिर टॉस ऐसा, पता नहीं। हाँ, और टाइम बढ़ाने के लिए। टोटल नंबर ऑफ टेलीपोर्ट्स कैंसल्ड बाय स्टन। दिस इज इंटरेस्टिंग। हो सकता है ये। I think I'll take pick 2. Total number of trees destroyed by 30 minutes. कोई है क्या tree destroy करने वाला है गेम में? Not really. I think 51 to 175 कर रहा हूँ मैं। Safe. Tangos भी खाएंगे, वो बीच-बीच में पेड़ तोड़ दे रहे थे ना कोई भी। मैथ करने दो मुझे इसके लिए। 4 times 3 times 2 12 24 0 to 50 का ऑप्शन है। 20 to 30 minute high ground lineup, no way around it. They want to dominate lanes, get out to a big lead, and go high ground with the Alchemist and a bunch of sustain behind him. Chen Alk always makes सुमेश EG जीत रहा है बोल रहा है। This is like an OG lineup through and through. EG. Chen Alk with the tiny to boot. Yeah. A couple cheese. EG का है। वो बोल रहे कि वो गेम ऑफ 2066 देख रहे हैं टीआई का। ईयर 2066। अरे मजाक कर रहे थे दोस्तों। मैं आज ही एक टीवी सीरीज है, उसमें फ्यूचर से लोग आगे पीछे कर रहे होते हैं और ट्रिप मार रहा हूँ। बाप रे। कौन सा देखा? बॉडीज। किसी ने मैनिफेस्ट देखा है क्या? नहीं, विमान 5 साल बाद लैंड करता है। मैथ एक्सप्लेन कर बोल दिया दिग्विजय उसने। दिग्विजय ने एक्सप्लेन करूं? हाँ। मैंने बस टैंगोस को देखा और उसके ऊपर क्वेलिंग ब्लेड्स। 50 प्लस रहेगा फॉर श्योर। इधर में ट्विच में डायरेक्टली ब्रेड किया तो कहाँ पे जाता है वो? वो पता नहीं, वो वर्क नहीं करता है फॉर सम रीजन, एरर आता है उसपे। हुआ क्या तेरा? तो गेम में जाता है वो, तेरा गेम से अगर कनेक्ट रहेगा ना आईडी ट्विच का तो हाँ, तो गेम में तेरा हो जाएगा। पर मैंने वो लिया नहीं है बैटल पास, तो मुझे फायदा कुछ होगा नहीं उससे। 0 into 4 is equal to 44, सॉरी 11 into 4 is equal to 44, तो 0 to 50 रहेगा। नहीं रे, तो क्वेलिंग ब्लेड भी तो तोड़ेंगे ना, देखा क्या अभी उसने क्वेलिंग तोड़ा। मैं लेन्स में पेड़ बहुत तोड़ता हूँ, मैं बस क्वेलिंग ब्लेड होता है तोड़ता रहता हूँ। हाँ, मैं भी तोड़ते रहता हूँ, अच्छा रहता है। ट्रियॉन रहेगा ना, ट्रियॉन एनिमी में सपोर्ट पे देने का। हाँ, लिया था ना पिछले गेम टोफू ने ग्रिम पे। ट्रियॉन था क्या? नहीं रे, नेचर प्रॉफिट था। हाँ, नेचर एनपी था। नहीं, ट्रियॉन पेड़ में छुपता है ना, तो राइट क्लिक करता है। ओह, उसके लिए पेड़ काट देने का पूरा गैलरी में। किधर छुपेगा फिर? एक पॉइंट सेव करके रखा है ग्रिमस्टॉक ने अभी तक, तीसरे लेवल का पॉइंट नहीं लिया उसने। And you could globally just, you know, like be next to the Spectre, put Inkswell on him, have him jump onto some hero. There's a pretty good amount of kill power in just those two. It's also deceptive. You just don't expect the stun coming out from the Spectre when he hunts onto you. So the other big one's like the Bedlam combo with this hero. We're seeing it being developed a bit more, but yeah, I do like this combination. Double dagger in the fight's never bad either. But are you going to be able to get out of lanes healthy enough and powerful? बेयर ऑफलाइन थोड़ा ग्रीडी नहीं है क्या? फार्म करता है ना बेयर? नहीं रे, आजकल वो बेयर पे डायरेक्ट ये बनाते हैं,
क्या बोलते हैं डिफ्यूजल बना के बहुत मारते हैं लेन में. बूट्स नहीं कुछ नहीं, बाद में फेस बूट बनाते, पहले डिफ्यूजल जाते हैं इमीडिएटली. और बेर नहीं क्या डिफ्यूजल से स्लो करके उड़ा देता है. So you can't really measure him up to that standard. Still, you're going to be looking for a pretty fast bots into Vessel here. Micro is so good, bro. वो player का hero है वो, comfort वाला. Wanna crash Mason stream later and call him racist? No, bro. क्या? वो बोल रहा है एक अपना Twitch पे. Wanna crash Mason stream later and call him racist? Twitch की audience तो wild रहेगी. Wild ही है भाई एकदम. कोमोडो ड्रैगन है कोमोडो के अपग्रेडेड वर्जन है वो लोग. Boulder almost killed his ogre frost mage. That was random. ए अरे वार्ड नहीं तोड़ रहे वो. ग्रिमस्ट्रोक ने वार्ड देखा उधर. टाइनी का टीपी देख रहे हो. I am from Delhi, bro. I think most Delhi people would love Mason and his chat. बाप रे, दिल्ली से है. दिल्ली से तो मैं भी हूँ. नहीं वो बोल रहा है कि दिल्ली से है तो उसको मेसन वाला चैट और वो सब पसंद है, वो टॉक्सिसिटी. Real. मेसन येड़ा है भाई. It's another game of like bend on the lanes but don't break and get that one fight. I mean, man, this ice armor has done work top, but first blood for Moo is also going to be pretty damn nice here for Nouns. Try for a kill here. The top lane. Get the stun off. Trying to block away Tofu, but he's close enough for the avalanche, and that's more than enough. Underneath the acid spray, with 2 heroes hitting you and a neutral creep, healthy amount of damage. Moo falls in his lane. And this is where Gaming are happy with the lane setup right now because they're getting solo XP on their 2 cores that really want it. The Alec doesn't need it as much because टीम स्पिरिट वर्सेस लिक्विड इसके बाद नहीं है ब्रो. इसके बाद रहेगा बेडबूम वीपी, फिर स्पिरिट लिक्विड रहेगा. Your ball is going to be crazy strong at that 8 to 10 minute mark going into these tier 1s. मैं सो के उड़ जाऊंगा तब जाके मेरे को दिखेगा. मैं भी नहीं देख पाऊंगा मुझे लग रहा है. All 3 of these cores here, pretty deep behind the tier 1 tower. Gonna toss away, but Gunner's a little bit low. Fortunately, did heal himself up with that Illuminate Blast just in time. Now Quinn is here to help out, and they're gonna be chased away. Gunner still trying to finish off Tofu, but the heals will be able to keep Tofu alive, no problem. Hector getting rooted. Oh! Diracho जब भी stun load करता है, I'm scared. उसी पे फटेगा. Possibility है भाई वो player पे. उसके बहुत कॉमेडी सीन से पता है ना मैं सब वाले भाई. इसके पास वो दोनों उगर लेके घूम रहे हो. उगर नहीं गोलम्स. A fool assassin on the main stage of TI. Bet you never would have thought you would have seen it. But the hero is here. Oh, finally. I've been waiting so long for Avery to be able to talk about the hero we've been waiting for. So many years in the making for this hero to return to Seattle. But he'll do some pushing damage here. Celery decides which side lane he wants to help. I mean, there's Eternal Pride. Let's go. Down here for the lone Drew push at all. Probably not. Spectre is 4.5. I was going to say, like, okay, maybe he can get level 6 soon and, you know, participate in some kills around the map, but this Spectre is having a jungle already. K1 Hector is going to be very, very far behind for the next 20 minutes. You're going to have to combine this Darkseer and Coddle at some point. That's the big one. If you can get it around the tower defenses, I think those fights can go pretty well for you. They're a lot better than the last game draft setup-wise. And it's really unlikely Dyrachyo joins those very early pushes, right? In that Weaver game, he can join those fights, and like even if he dies, it's still a numbers advantage. It's still HP you have to get through. Here, Sleep is for the weak. Dazzle with the Chen. बाप रे. कोई चैट पढ़ना ही डर लग रहा है मेरे को. Do some lines it seems. और drink Red Bull. Red Bull पी सकते. But Red Bull रात को नहीं पीता हूँ मैं. Day time में पीता हूँ. He's going to be caught trying to hit the jungle. Good Illuminate Blast clips him there on the side, and Quinn will die. Now, Stu successfully find an opening, and they needed it real badly because these lanes are not going well for them at all.
Time to dissolve him and get some skirmishing done. Nice toss back into the bear. If he gets a root, this is all but guaranteed to be a kill on Gunner. Doesn't even need the root. The damage is there to finish up with the blood grenade. Yamson's going to be slowed down with that diffuser blade. The inhibit going to work. Nice attempt there with the block in. Keeps the heroes out. Even if the bear is still able to chase down Yamson a bit. Maybe even chase him enough down. भाई रूट क्या टाइमिंग पे पड़ा है? No response from Nouns. देखा क्या वो उस पे क्या है? वो स्पिरिट ब्रेक आई मीन क्या वो स्पिरिट बेयर पे डिफ्यूजल है. पहला आइटम डिफ्यूजल रहता है. Really great pickoff on the dazzle, but it just gets them lingering a little too long, and all of a sudden you get one coddle blast to defend this tower, and it's gone. Don't even get any creeps off of that blast. 3k lead in 8 minutes already. Behind stage after game 1, we said, like this Chen. आगे क्या बनाएगा? Not sure if you could give that to Game Gladiators. फिर वो नहीं एको सेबर और फिर हार्पून बनाएगा. कोई भागता रहेगा तो भी खींच के मारेगा. They may have thought they had a plan to be able to deal with that Chen, but ए खुद से स्टन खा लिया उसने. बाप रे 16 लेमन पॉप बेस्ट है आदमी. The push continues. Ace, he wants all 3 towers by 10 minutes here. The last one will get defended, still full HP, so this is something that Nouns have to rally behind. Get their combinations online and going. And it is time for Hector. I mean, the upside of, Ace making these rotations is, hey, your Spectre gets some free jungle time. How free is it going to be, though? Because he's immediately going to jump over to join on this tiny kill. Good timing, because Ace was just threatening him there in the bottom lane. So not only does he get away from a gank, but he also gets to join in on a kill. And that is the power of the Spectre right now with this new Shadow Step. I don't know if Hector even saw Ace down there. I'm pretty sure he was looking at the gank, but that was an absolute kill on the Spectre because Diffusal's already done to the lone Druid here. So he quite literally dodged the bullet, gets a kill into a tower push. Pretty nice. And it's just about Gunner keeping the lane equilibrium. He'll rotate bottom to get the defense. So these tier 2s are going to be a bit harder to bring down, I think, for gaming, unless they get the big pickoffs. Because you can always sit Hector in these positions, and the upside of Spectre is he can make the fast plays. He's also hard to go on, especially if you can get this blade mill out pretty fast. Total build was good when there was small cam near. Give you the damage from behind. Stack करके भी farm कर देता. कौन सा हीरो? टोटल मिड था ना मिड. हाँ वो टाइमिंग पे. स्मॉल कम था देख मिड पे. स्टैक मार तो जूबे की शक्ल नहीं पता कैसे दिखते भाई. नाइस लेट्स गो नाउन्स. Now they're going to be able to chase down Tofu on top of that one. So while Gaming Gladiators ये भी मरने वाला है. the one up there. जाते आते लोटस लेके जा रहे हैं रे आदमी. Might as well get what he can off the map. एक ही ले पाया बेचारा. Great pickoff for Nouns. We also talked about this, Inkswell Spectre, the Shell Spectre too, with this low duration Haunt. It's a great shell target in these fights. You can even shell him before. The jump here. Hello boo. But that is going to be a lot of gold in the Hector's pocket. The bear plus ऑफिशियल स्ट्रीम ये देख रहे हो? वाह ये मस्त लिखा है लूफर्ड ने. ऑफिशियल स्ट्रीम देखने में मजे नहीं आते जितना इधर स्ट्रीम पर आते हैं. वाओ यही सुनना था यार. थैंक्स ब्रदर. लेट्स गो. मैं बोल रहा हूँ ना जब भी फाइनल रहेगा ना ग्रैंड फाइनल्स वो टाइमिंग पे अपन गिव अवेज कॉन्टेस्ट बहुत कुछ होस्ट करेंगे दोस्तों. क्विजेस यू गाइस विल हैव समथिंग टू विन ऑन द फाइनल डे. अगर मैं ठीक से स्ट्रीम कर पाया उस दिन तो जो प्लान चल रहा है वो अकॉर्डिंगली. कॉस्ट्यूम नहीं होते करे आविस. नहीं ना भाई तो अगस्त नहीं बेटा थे. टाइम तो इशू है कहीं नहीं. A support and a bear wouldn't be too bad, but they're only going to get the support out of it. And a centaur and a little golem. Those count. One last little golem. You can see the rotation speed. The bots for Coddle is also enabling this. So you kind of have 2 global heroes, right? Yeah. It's another tool you can use to combat these pushes. कुंका से भी कर सकते थे ना टॉरेंट से. Taking small fights on these lanes. on Quinn. टॉप्सन चाहिए था यार आगे. ये मेन इवेंट तक तो भी चाहिए था. क्या लगता है क्या प्रॉब्लम होगी टीम में? क्या थंडर वर्सेस पता नहीं यार. उनका रोल चेंज था. बहुत कुछ चेंज था. लास्ट ईयर जो टीम थी वो अलग थी. ये साल अलग थे. एक प्लेयर चेंज भी होता है तो भी बहुत कुछ चेंजेस होते हैं. पर्टिकुलरली वो गेम जो हुआ TSM
पता नहीं यार, कांट कमेंट। कुछ तो हीरोज अच्छे नहीं लग रहे थे मेरे को उनको, या फिर वो लोग वैसा एक्टिवली नहीं खेल रहे थे जितना एक्टिव हीरोज थे वो लोग के। नागा लेड ज़्यूस लिया था एक पहले गेम में वो लोग ने। Nouns, they gotta find these pickoffs because you know what's coming. Gaming Gladiators have an Alchemist farming way. They almost have the Aghanim Scepter like you talked about on the Dazzle. Pagana और Zeus खेला था उसमें। You can get these pickoffs with the Shadow Step, but what happens when they get 5 man and they're ready? सोडा लेमन पॉप डायरेक्ट ब्लॉक हो गया तूने अगर लिंक डाला है तो। There's a good reason why he hasn't had to do anything. And that means he has had an absolutely free Alchemist game. He is omega fat here. हेलो अभिमन्यु। में वो मैसेजेस लाइक वो वॉइस लाइंस नहीं दिखाते अभी। स्पैम ही नहीं कर रहे कोई लोग, दिखाते नहीं। कर रहे हैं, आवाज आ रहे हैं। नहीं ब्रो, मेरे को आवाज आ रहा है टच के। अरे वो नहीं करते आजकल प्लेयर वॉइस लाइन स्पैम, वो ऐसा नहीं होता है कि दिखाते नहीं है। अगर किया तो दिखता है, वो हाइड बीट नहीं होता है वो टच का नॉर्मल वॉइस लाइन है। Take a little pit stops here and there while they're smoked up. Farm up these camps. They didn't see anything, I'm sure. Still nobody showing up though on the side of Gaming Gladiators. They're doing a great job. अभी हंसना डाक्सिर? हाँ तो वो हंसने वाला तो बेस नॉर्मल है वो। अलाइव हार्ड अलाव उसने। अरे ऑल चैट वाले दिखते सिर्फ, अलाइव वाले कभी दिखते थे क्या? पहले देखते थे ये लाइट वाले, बट अभी नहीं रे, आलाई वाला कभी दिखता था। दिखते थे क्या बोल रहे हो? नहीं रे, नहीं आलाई वाला कैसे दिखेगा? उसमें सब पिंग विंग आता है ना, लोग जो पिंग करते हैं आइटम्स वगैरह। पता नहीं है, मेरे को नहीं लगता दिखता था। यह सोल्ड ओजी का स्टाइल था वो। लाकड़ मतलब तंग। Otherwise, Doraccio should be pretty untouchable. इसलिए आले वाले भी दिखते थे शायद से, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मेरे को। You really want to find the back line here. उनको पता है वो बोल रहा हूँ दिखते थे। Yes. वो कास्टर पास्ट अवे। कौन सा? लाकड़ मतलब तंग। हाँ फिलिपिनो। In order to actually literally see the back line, so your Spectre can jump. Does require somebody to get in there. Do you think like Moo is going to join in with the Tusk, like some sort of Blink Dagger initiation, or do you think he just goes more for like these aura items and try and combat Gaming Gladiators who are obviously going to be sticking to that same game plan we saw? वेक्टर कितना पीछे है गेम में? 15 मिनट में 6400 नेटवर्क है उसका। I think traditionally you just go for the correct angle, right? Get smoked. अल्केमिस्ट डबल नेटवर्क है उससे। हाँ ना ते साढ़े 12। It's going to be a radius for him as well. So we'll see if he can 5000 ऊपर है। have more impact with it than that radiance from last game on Mu, which just got mega delayed, right? This is it's a पर फिर भी अल्केमिस्ट है ना वो, उसका वो a lot can happen in that interval where you don't have a fight. पता नहीं यार लैन वाला दिखता है कि कैसे दिखता है। It's going to pay off. It's a very good radiance game to go in and start burning people. अल्केमिस्ट के लिए स्पेस भी है रे, इसके लिए उतना स्पेस नहीं है। वो आई मीन ठीक है, अल्केमिस्ट रहता ही आगे, वो कुछ नहीं है, बट इतना आगे नहीं रहता है। Massively outmatched, but you could see there was just a lot more space. Aiden से उसके पास ऊपर अब तो और मारेगा। And BKB's already done, and they are instantly smoking down mid with it. Doraccio wants to put it to use. Okay, he's dead. Straight for the Spectre, straight for the enemy carry. Oh, shard is already. That stun. Good idea from Yamsin to rush that. Nice, ये नहीं पता था मेरे को। पैसा बचा है उसने, पूरा पैसा बचा है, जूते पे खेल रहे हो। ओ भाई मौत। स्पेक्टर, हाँ चली गई वापिस। ये कैसे जाता है ना? ये कैसे जाता है? अरे उसे अल्टी मारता है और रियलिटी करता है तो ऑटो क्लिक लग जाता है हीरो पे। ओह, स्मोक दिख गया इनका। Might have, honestly. Either way, a failed gank, true form goes off, and they'll give a window here. Blink on Tofu as well means that all these pushes, all these fights are a little more dangerous. You get caught, like Nouns got caught last game. You're just gonna crumble really fast around these towers. Harper ही बना रहे। Bottom from Mu when he knows they were moving here. He's tanky. I don't know if he's this tanky though. Round to tier 2. Is his team going to try to defend him here? The Surge is going to be running out, and Quinn might just be able to catch up to him. Another round, though, thanks to the Octarine. Oh, he wanted to toss back. Time for Mu.
फटा सेल्फ स्टन कितने करेगा भाई ये? किसने तो बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले चैट पे। डर लगता है। Yes. The margin for error very thin here. You do have that vessel up on Gunner. It's been up for a little bit here. He has double charge. This is generally where that Coddle would want to be taking the fights or finding big core pickoffs on the map. The downside in this type of game for the Coddle is he's great at dealing with the lanes, but gaming are not going to split. So you're not going to find this like global pickoff presence between the Spectre and the Coddle. It's just going to be 5-man down a lane. In 18.5 minutes, they said, the last game was fast. This one, it's going to be even faster. Let's see if you have the answer. And frankly, it doesn't look like Nouns are ready for it. No Crimson Guard just yet on the Dark Seer. भाई हाई ग्राउंड दोनों गेम में ऐसे 18-20 मिनट पे क्या जा रहे हैं लोग? मजाक है क्या? बाप रे। प्लीज बेस वो लोन रोड का बेर मार दो यार। चलो वो तो भी मारा। वो भाई वो बेर डैमेज दे रहा है। नहीं वो नहीं मारा। पोर्टल को भी चलो। GG 2-0 नाउंस इज आउट। एक प्रेडिक्शन पहला वाला तो सही आया दोस्तों अपने। गेमिंग को अपन ने भेजा था आगे। भाई सिलाबेर का बेर नहीं मर रहा है और डाइजल बचा रहे पीछे से कब से। ओह नाइस किल। दिस वाज गुड किल। फाइनली मारा नहीं। Before the 20-minute marker, Gaming Gladiators, they are not messing around here. They are kicking Nouns out of this tournament in record speed. They are looking for the lower bracket speed run for sure at this point. Another toss back. Hector, you got a blade mail. Nowhere, nobody be able to bail him out. They'll take him down eventually. Sad exit for the from the tournament for Nouns. Spectre क्या ही करेगा 20 मिनट But this time around he can't reset. Gets off a vacuum last second, but there's no damage to follow it up. Gaming Gladiators are extremely healthy. They've got the Chen heals. They've got the constant Dazzle heals. Quinn is sitting at 500 HP constantly, but there's nobody to actually jump him, nobody to punish him. They see all of these moves from Nouns coming a mile away. And they also have double purge creep on Celery. These Satyr Banishers, they remove the vessel. If you notice, GG का push बहुत अच्छा है. Damage that's supposed to come out from the Coddle and the Dark Alchemist doesn't Chain. exist when these Banishers are on the back line. He even has the magic resistance aura, so these heroes are incredibly tanky at this point in the game, and the spells that you were supposed to have. बहुत गंदा स्टॉर्म किया रे दोनों गेम्स ये लोग ने। गेमिंग प्रूव कर रहा है भाई। साल भर जीते ना अभी ये लोग से तो नहीं हारेंगे हम लोग, समझ रहे हो ना? कोई तो बड़ा टीम लेके आओ भाई। इसके रेडियंस के पहले गेम खत्म होने वाला है। Let's get the Tormentor, let's get the Roshan, let's build up our advantage, let's get a 20k net worth lead. Well, Gaming Gladiators get a 20k net worth by taking away your buildings, taking that lane of barracks. And Nouns, I mean, they're living on a prayer at this point. दोनों गेम चेन लिया ना GG ने? Who needs Roshan when you don't die the first time? Yeah. All these cores feeling invincible right now. Nouns continue to search for answers, and they will take the Roshan. वो लोन रोड का बेर नहीं मर रहा है रे गेम में। भी नहीं चमका। इन गेम प्रेडिक्शंस आल्सो राइट। रुको देखते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या क्या डाला था अपन ने। It'll be a DD rune and BKB almost completed for Quinn. And this is also where Lone Druid he's a really strong hero at this point in the game. If you can get over this, I think we've seen a lot of Lone Druids struggle to scale in the current game. Can fall off very hard. But right now with Diffusal Harpoon, which has generally been the meta build. Okay, player with the highest total magic by 10 minutes is Gunner. Number of tiny avalanche toss combos 0 to 6. एक ही हुआ है अभी तक. Total number of teleports cancelled none. Total number of trees destroyed. बाप रे, अपना रॉन्ग हो गया। 202 ट्रीज ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। अपना मैच वाला किधर गया बंदा? है नहीं, वो गया हो। Duracio's here now to be able to get more pickoffs. Leela's is going to die next. Ages to bear? No, you can't. And a push that's on its way. Do they want to take the time to take these top towers or just take another lane of barracks? Dazzle और courier का क्या strategy रहता है?
तीन चार कुरियर बुलाओ, उनको हील उन पे हील क्लिक कर दो और डैमेज लग जाएगा वो टॉर्मेंटर को नीचे. You can heal courier with dazzle. Yes. और फिर वैसे टॉर्मेंटर सोलो मारता है वो dazzle. वो भी टॉप सन नहीं निकाला है. वो आदमी भी बहुत दिमाग वाला है लगता है. This is like your big aura item that's supposed to help you take these tower fights, get you back in this game. It has to happen now. There is no more breathing room. This is a final push. This is a push to eliminate you from TI right here, right now. You need a massive vacuum. You need a combination. You need to lock them in the shards, get an ink squall going. And Gaming Gladiators are showing no signs of slipping up. Look at their formation. All 5 heroes far away from the high ground and letting the bear literally offering का काम कर रहा है टैंक करने का. And again, these soulbinds, these vessels just टैंक नहीं कर रहा है वो. उनके पास टावर हिट करने वाले हीरो नहीं तो वो टावर हिट कर रहा है. भी कर रहा है बट टैंक मतलब all has to come from Mu, and well is getting on the front line right now. Can wall the bear. Looking for the back into the. Oh no. Oh. Nice one. But no follow up, guys. They just got the bear. Got one bear out of it, so resummon from Ace. Yeah, if they can actually get back to the fountain somehow, but K1 Hector, he's going to be slowed down. Not Gaming Gladiators isn't worried about him. Maybe they will. They're going to get the toss back and finish him off that way, while taking the buildings in style. Gaming Gladiators, they're ending this one right now with 40 seconds. Spirit confirm है. Not that he's much of a factor. हम जीत सकते हैं. Oh my god. ये हार्पून कैसे वर्क करता है पता है ना? अगर हार्पून क्लिक किया सामने वाले पे और वो सामने वाला ब्लिंक आउट भी कर दिया तो भी वो वापस लाता है, पता है उसको? What about 4 star? वो भी हुआ ना अभी. 4 स्टार बाहर किया तो भी वो खींच के लाएगा. हवे में रहेगा हार्पून तो. Every objective down again by 25 minutes here. You're gonna have a found defense, but of course, the Tiny's not only gonna toss GG you, guys. he's gonna toss you straight out of the tournament. As Nouns will be defeated in a swift 2-0 as Gaming show why they are still one of, if not the best team in the world over the course of the year. And they do it their way too. They do it with a strategy that not many are employing, and they put it to really good work to Nouns here. I mean, you've got Lag. किसी का लैग हुआ ट्विच स्ट्रीम? Absolutely. Running with and Nouns, they thought they had Kale. it, but it proves when push comes to shove, the push certainly wins. But hey, I mean, this is a team not many people had in their top 8. Not many people thought would go this far in the first place. And I think this is a team that formed their roster very late as well. Had to overcome the NA demons. नाउन का प्रोनाउन बदल दिया. क्या बोल रहे भाई? They're still here. They can play some good Oh my god. सोडा लेमन पॉप. Which is what I respected most about this team. They weren't afraid to play the heroes that they felt. ट्विच चैटी बाबा खतरनाक है. And they'll go out with और YouTube वाले अच्छे बंदे. As this was a tough opponent to go in an elimination match on the first day of the international. And Gaming Gladiators, their heads are going to be held even higher as they're going to be making their lower bracket run starting here at the international by taking down Nouns. A massive congratulations to Gaming Gladiators. They now are a top 6 team. They do get that 2-0 over Nouns. And whilst it's only one series that we're going to be seeing Nouns for here on the main stage, it was still a great showing. They fought right until the end, having to play in front of all of their fans here. VP versus Bedboom. East EU matchup है पूरा. Honestly, I was very worried when I saw the draft how it developed because I felt like they're doing the same thing they did game 1, which is हारते हारते साइन करके जाना कितना दुख वाला है. Fight back, have a gold lead at 10 minutes. It pretty much went exactly how Gaming Gladiators wanted to play. And you know, you're waking up for a 10 a.m. match, you're playing Gladiators, you know these guys are going to come hard at you. You need to be ready. Yeah, but then the first pick spec was really rough to kind of look at as well, Resso. There wasn't anything for the Spectre to take any traction First with, pick nothing to get spec. them going. I mean, they tried to find this active hero that can, you know, fight back like very early on, but there's like कितना टाइम है अगले मैच को? They couldn't really fight a fight. Like होगा अभी 10 मिनट में immediately चालू. They had to like
make this big fight happen and just literally लिक्विड पीड़े पे 40 मिनट बोल रहे हैं। वो तो वो शेड्यूल वाइज था ना, बट रोलिंग पे रहता है कि एक मैच होने के बाद दूसरा मैच, सेटअप वगैरह करने में टाइमिंग। मेरे को एक सवाल था, इधर अभी इनका पर्सनल स्टीम लॉगिन करते हैं ना गेम में, क्या इनका पर्सनल स्टीम अकाउंट लॉगिन करते हैं ना वो? हाँ ऑब्वियसली, तो क्या है, वो लॉग आउट वगैरह कौन मारता है? खुद से करके जाते हो, और नहीं किया तो भी एडमिन करेगा। टीआई चल रहा है रे डोटा का सबसे, उसके लिए तो खेल रहे हैं। Yeah, pretty much. I mean, he's banging out some new heroes as well coming into TI, but this whole team is just so good at understanding the timing. उधर क्या आईडी का टेंशन है रे? उधर आईडी पे कुछ भी हो गया, गेबन बोलेगा भाई वापस ले, तेरा आईडी वापस कर दिया किसने कुछ किया तो। मेरा इवेंट चल रहा है, लोकल कैफे में थोड़ी चल रहा है। With the great confidence, it's kind of hard to choose who like play the best because their heroes are not dying. I wanted to see some extra like magic burst damage coming out from Nouns. Didn't happen. Like we saw 4-man vacuum wall, nothing happened. They just out healed the damage that they got. What else was Gaming Gladiators doing so well outside of those picks that we mentioned, the way that they're able to play this tempo? Sure, you can build a tempo draft for yourself, but the way to execute it, what are those keys for it, Fly? I think throughout the whole year, Gaming Gladiators have been basically the strongest laning team, or if not one of the strongest. And that is the foundation of how they draft and how they play. They choose to go for these strong lanes. They know they can play them well. And they build that up, right? They get this 1k lead on the lanes, they turn it into 2k, 3k, suddenly it's 10k out of nowhere. क्या स्पैम कर रहे हैं भाई, पीछे वाले देख रहे हैं क्या? क्या मजाक उड़ा रहे हैं भाई पीछे वाले? I want to mention the rotation from the Ace because he killed that bottom tower. He like immediately ran to mid lane. He killed that mid lane. 2k बॉस को होस्ट कौन बनाया? Like he tried to make a pick off there as well. हो गया रे उसका अभी लाइफ का, वो आगे चला गया। Ganker and like forcing objectives on the Nouns. कौन है मुझे पता नहीं, वो आदमी पीछे से वो जो कर रहे हैं वो लोग। But Gaming Gladiators are 204 them. They're going to be progressing at top 6 team now. Let's hear some words from them. हाँ ना, लॉर्ड गेबन सब देख रहे हैं। Do they get access to all skins and stuff at TI? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, जो है तुम्हारे पास वो यूज करो, कुछ नहीं है तो नहीं मिलेगा। वो पब्लिक फैंस वगैरह दे देगी अपनी। अभी गेम अपने रितेश भाई ने मेरे को कितने गिफ्ट किए हैं गेम में, तो वैसे सपोर्टर्स भी रहेंगे ना जो चाहते हैं कि ये प्लेयर का अच्छा हो या ऐसा, तो वैसे गिफ्ट भी देने वाले रहते हैं ना। Honestly, I think I've been pretty lucky overall, but also like very hard working to this. It's still unreal to grasp actually playing here. And like I owe a lot to my friends and family also for supporting, and my team for like bringing us all this way. Like we've put in a lot of work, but we're not done yet. It's hard to feel whether we can make it further, how it's going to be to lift the ages. And for now we're just playing, but we'll see what comes. Jobs not done yet. Jobs not done. कोई तो इसमें था ना रे, Jobs done. कौन से गेम में था रे? किसी को याद है ये? Chat. Jobs done. ऐसा किसी कोई तो गेम में था, शायद AOE में था, Age of Empires. Somehow those previous majors, they feel really far away, and I think for every major, every tournament, we've learned a lot along the way, and there's always takeaways you can draw, but somehow this tournament feels a lot different for us. There's been a lot of changes. इंडिया में कब ऐसा टूर्नामेंट होगा पता नहीं यार, अपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर नहीं है तो इसके बारे में बता नहीं सकते। मुंबई में हुआ था ESL 1, Well, Seattle, they're going to treat you to some more games because they are. मैंने भी गया था, मैं गया था उसके लिए। Congratulations on a top 6 finish, and we'll speak to you again. Gaben should give them that is the highest score of Dota. पता है नहीं यार, ऐसा उनके पास रहता ही है ऑलरेडी। To Rezo, Fly, and Lacoste for today, and we welcome T, Effie, and of course our prized possession right here, Owie. Owie. Hello. I wanted to see if there were going to be any cheers for you because I do know everyone at home is very excited to have you on a panel here. Insightful. Oh, he is a very smart analyst, coach, जो भी है. Falling into the TI Grand Finals, the finals weekend. Sorry. गेम Warcraft 3 Orc, हाँ विकी भाई को पता है वो, कोई तो वही तो मुझे लग रहा था कि एज ऑफ एम्पायर की Warcraft किधर तो एक जगह पे वो एक रहता था वो बिल्डर। ओगर बोलता है क्या? मैं उस डोटा के बारे में नहीं बोल रहा था मैं।
No, it's just perspective. It's वो वाले गेम्स के बारे में बोल रहा था. And like turning around and seeing like हार्डस्टोन बैटलग्राउंड में just give me a minute. I'm होता है जॉब्स डन. नहीं रे, मैं जो एक्सेंट में बोला ना वैसा वो बोलता है. और पियन विकी को पता है. I know that you're quite eloquent, so how are you feeling now? D1 स्नाइपर का भी रहता था क्या? नहीं नहीं नहीं. Nouns go, but I mean that's. What about keyboard mouse? Are player allowed to use their personal? Yes. वो तो तुम्हारा गेयर रहता है भाई. तुम्हारे गेयर पे तुम लोग कंफर्टेबल रहते हो तो कीबोर्ड माउस तुम लोग खुद का लेके आना पड़ता है. Virtus Pro Bet Boom into Regional 1. Do you guys want to start talking about it now? Sure, yeah. I was having a little bit of hype from my panel. I mean, the audience is so much fun. They're cheering along. They're getting rowdy. I thought, see? There you go. Rowdy बोल दिया रे उसने. They're getting rowdy. No, there or what? No, I was expecting it. Yes, please. You know, something. Sure. See, do you want to talk about Virtus Pro and Bet Boom? Yeah, sure. Virtus Pro. The entire year they have. ESL1 मुंबई बहुत अच्छा था. Yes. Best event for Dota in India. सुमेल और आना क्यों नहीं करते कोच या कमेंटेटिंग? पता नहीं, वो तो लगा पर्सनल चॉइस है ब्रो. उसके ऊपर नहीं बता सकते ना बस. द गाय इन डार्क ब्लैक सूट इज इंडियन. यस, वो ये बोल रहा है ना तू. You know, maybe they can be the upset that we haven't seen earlier. अबे क्या नाम है उसका? अबे नील कंडेरिया का नाम क्या है दोस्तों? Because I just got word. Slacks and Casey apparently want more airtime. ब्रो मैं उसका नाम भूल गया यार पोस्ट का. छोड़ो, केसी वाला ही अच्छा रहता है. ओह स्लैक्स आ गए भाई. We only have one microphone. Hi. Great, yay for me. We came out here and we said, okay, who are the Nouns fans? How hard was that for you to watch? It was very sad. I would have liked to see them being like the next big underdog, but I don't know. I'm just a Herald Green. Herald Green, बाप रे. Definitely. I'm a huge fan of K1 and all this story of all the teams from South America. Sadly, there's no teams from Mexico. Tsunami, yes guys, Tsunami. उसका नाम भी इंडियन है बट वो इंडियन प्रॉपर इंडियन नहीं है. वो बॉर्न नहीं है इंडिया में तो ऐसा इंडियन नहीं है. वो NRI है. NRI भी नहीं बोल सकते, इंडियन है ही नहीं वो. वो इधर भी नहीं लगाता है अगर तुम लोग देखोगे तो. इधर भी यूनाइटेड स्टेट्स लगाता है नेशनलिटी, इंडियन नहीं लगाता है. बट उसका नाम नील खांडेरिया है. खांडेरिया. Team Spirit has a lot of hot players, and they're from a very exotic part of the world, and you know they just have that air about them, that air of confidence from winning an unexpected and beautiful TI. Beautiful speech. What about over here? All right. Whoa. Yes. Convince our former Nouner which team to join. This one. AR team. Yeah. Yes, I'm a fan of Maybe. Don't look at me. Don't look at me. All right. I'm a big fan of Maybe since Dota 1. Why should he be a fan of Maybe? Since Dota 1. Because I think he is the best mid of the world. Yeah. Oh, okay. Casey, here you go. Give me one more. अरे चैट कैसे रे? माय गॉड. यूनिवर्स इंडियन. हाँ यूनिवर्स है शायद से. ये देख अपना इंडियन. Virtus Pro, obviously. Why obviously? Because they prove to be, even though they are like, you know, like teenager, they are like a young age, they prove to be at the highest level. That's right. So I think they can beat Bet Boom and they can go forward. You know, they're young, but they're like my age, right? Yeah, of course. But I'm pretty sure they will go forward. I trust them. You trust them? Yeah, That's a lot. He missed an opportunity to call me old like you did earlier. Who do you choose, Nouner? New team, Fairweather Fannin. Who do you choose? I'm really sorry to our audio department. Okay, so we have the good mid, we have the hot players, and we have the. I didn't hear that. I couldn't hear it. Virtus Pro. I'm going with Team Spirit. Supporting Azure Ray for FY. Let's go. Jump ships just yet though. Okay, Nouns might be out. You might be looking for Hello, a new Jason. team to support, but we are still going to hear LGD bro. Let's go LGD. One of their players right now. Let's go shout it. हाँ आ गया ये. Tsunami. Coach of Nouns, which
the run ends here, but like, Steeny. be honest with me, was the run ever even supposed to get to this point in the first place when you guys were struggling out through quals this entire year? Yeah, it was a Bro, rough साक्सा year. लगा I एक मिनट के believe लिए. top 8 was a good result. साक्सा बहुत Of लंबा course, है. I cannot say like, oh, I'm happy with losing today, but where we got, like being at TIs, like hearing the crowd chanting is like, it's a dream. So like today, even with the loss, one of the best days in life, something you need to enjoy and enjoy the day because it's a dream. Yeah, we made top 8. Unfortunately, I'd say especially for the fans, like the crowd was amazing. We couldn't go further, but there are like no regrets. There's not like this thing that you're gonna go sleep and are like, oh, I could have done best. No, I believe we did our best and we should feel happy with this. And you put on a show for everyone in the audience. Everyone, one last GG time is for back. Nouns, I mean, Nouns के सामने जीते रहे दोस्तों, जज नहीं कर सकते रहे. and making us all Yes, proud. Nouns is a very good team. Best of luck in the future. It was a hell of a time watching you as we send it back to the panel. Thank you so much for that one, Tsunami. It is tough, but Astini doing very well there to, still convey a lot of emotions. It's tough. वो एजिस का पिन कितना अच्छा लग रहा है यार. कोई है क्या यूएस वाले टीआई में अभी? वो पिन चाहिए यार मेरे को. कितना मस्त लग रहा है वो ब्लू कलर का एजिस. Looking beautiful, guys. Back from a little bit of a loss. Did you guys just go, all right, I'm going to just go chill out? For us? Yeah, over on Tundra. Especially as a coach, right? वो उसके कॉलर इस पे देख रहे हो? Yeah, I think our year was sort T of governor for us के. mentally anyways, and we're sort of, I don't know, we were in the best state going to this tournament, so when we lost, it wasn't like as hard as blow as usual, I think it is, losing TI. So I lost a lot of TIs, so. But well, when you say it like that now, I feel guilty for asking. I don't know. Team just, Liquid, you just try to let's go. move on, like, yep. You're working the entire year towards this event. Like we डेंडी वाली टीम नहीं डेंडी वाली टीम क्वालिफाई नहीं होती ब्रो आजकल. है वो खेलता है. But qualify नहीं होते वो. Jerax was one of the best players, bro. क्यों उसने break लिया पता नहीं. We spoke a little bit about Virtus Pro. This was a team that you Washington didn't buy. No problem, bro. महंगा था वो. 700 is too much. Plus taxes. But I do wonder what the 4-day break did to them because it felt like Virtus Pro came into this tournament a team that was, undervalued by the enemies, not really studied. So they came in with their strategies, they came in with their hyper aggression, and they caught a lot of teams off guard. If they can continue down that path and play in that way, Miracle भी क्या player है यार. बेचारे का वो दिग्मा के साथ गेम हो गया लाइफ में. बंद कर दो यार निग्मा. दे दो वो Miracle को. Miracle को दे दो यार. Miracle को अच्छा टीम दे दो यार. As heavily as one-sided in this matchup that people might believe. Virtus Pro is full of those players. Again, a tough year for themselves, whereas BetBoom is deemed as that powerhouse for Eastern Europe. Is it really that lopsided? Missing Ame, bro. Like I love that player. He's one of he's the best carry. या तो उसका level match कर सकता है. I don't think any other carry can match that kind of level. Which is also weird because I feel like BetBoom was sort of the same story. The thing about BetBoom is like they're supposed to be like a Slappy. roster. They have all these really high skilled players, really high ranked. आया क्या call पे Slappy? A bit under the pressure if as soon as anything goes wrong. काय करतो है? Another team from the region, sometimes the emotions can flare up, which I वही तो म्हणून तो बोललो मी तुला असंच टाइमपास. Today, the difference between a player stage and a main stage. I think first of all, हाँ ना यार मेरे को भी लगा था Nouns थोड़ा तो टफ देगा. एटलीस्ट एक गेम जीतेगा. I mean गेमिंग ग्लैडिएटर जीतने वाला था वो पता था मुझे. मेरे प्रेडिक्शन में भी वही था. But I think Nouns ने एक गेम उड़ाना चाहिए था. Their games are just a bloodbath. And if you bring that type of Dota to a team like BetBoom, Still no female player in TI. Female player तो नहीं है. Analyst वगैरह बहुत है. your draft should have won at maybe 35 minutes, 30 minutes. Jerax को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था. सैच. Jerax का NA जाके सब खत्म हो गया. NA गया था मुझे पता नहीं उसके बारे में. Matu was good but कैसे बताओ वो कैरी हाई लेवल वैसा नहीं था रे वो. Matu अलग प्लेयर था. बट जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कैरी रहता है ना वो है आमे याटरो. ये हाईएस्ट लेवल वाले कैरी है. ये बाकी सब लोग है बट गॉड लेवल कैरीज नहीं है. आना भी बट आना अभी खेलता नहीं है ना तो उसका पता नहीं है क्या करता है क्या नहीं. लेट्स गो. चालू हो रहा है. ये किरिटिच मस्त खेलता है. ये किरिटिच प्लेयर बहुत अच्छा है. वीपी का कैरी प्लेयर. ये लंबे वाला है ना? नहीं लंबे बाल वाला तो उनका कैप्टन है. FNG है वो. पोजीशन 5 है वो. सर्वेशने तिकडनं व्हिडिओ कॉल केलेला.
अरे यार सर्वेश को एक एक्स्ट्रा पिन ला सकते क्या बोलना, वो ब्लू एजिस वाला पिन, मतलब वो गले पे रहता है ना, वो सॉरी ड्रेस पे लगा रहे हो लोग। मेरा तो आ रहा है, पूछता हूँ। आई थिंक जैकेट कैंसिल करना पड़ेगा, 8000 बहुत ज्यादा है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। लिया है क्या उसने? नहीं वो हाँ, पूछ रहा था। नहीं कैन कर दो, 8000 इज टू मच ब्रो। मार्टू वाज एसेंट्रिक जस्ट लाइक ATF। हाँ यूनिक था पर ऐसा गॉड लेवल प्लेयर नहीं था। या तो आमे है गॉड लेवल प्लेयर है कैरी पे। ओनली मिरेकल इज केपेबल ऑफ 15 मिनट्स बैटल फ्यूरी, जब बैटल फ्यूरी की रेसिपी अलग थी। हाँ मतलब मिरेकल भी गॉड लेवल कैरी था, नो जोक। यस मिरेकल भी था बट अभी नहीं है। आना भी खेलता नहीं है ना अभी। पिज्जा अभी मेरे पास कुछ ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं है मेरे लाइफ में, वो नीचे जाना पड़ता है और मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ। ये प्योर भी एक खिलाड़ी प्लेयर है। ये बेडबूम टीम मुझे पसंद है, 5 इंडिविजुअली हाई स्किल्ड प्लेयर्स है, बट ईगो क्लैश होते हैं वो लोग और झगड़े कर सकते हैं वो लोग एक दूसरे में, एक दूसरे को मार भी सकते हैं ऐसा लगता है कभी कभी। हेलो रमन जॉर्ज, व्हाट्स अप? Quite possible Russian जैसा बोला। मुझे वो फोटो स्टाइल वाला इंट्रोडक्शन ज्यादा सही लगता था। हाँ म्यूजिक रहता था ना उसके साथ। Let's go आनंद, वेलकम बैक ब्रदर, थैंक्स। क्या बोलते हो भाई? And it's going to drive them moving forward. I think that when you win series like that, right before you go into the main stage, it just propels you further forward instead of making you more nervous. Are you still thinking about that 4 days later? Most captains are support players. Yes, most. Not all, but most. Practically 60 minutes there, and they were able to put. Why there is less Dota player in India? There are a lot of Dota players in India, bro. But you can't compare it to PUBG and all. PUBG का device सबके पास है, Dota का device सबके पास नहीं है। ऊपर अलाउ नहीं करता यार, वो गेट पे जाके लेना पड़ता है 12 बजे के बाद। नहीं वो दे रहा है उसको एडमिन को, रख दे करके। अच्छा वो लॉगिन के लिए रहता है। हाँ लॉगिन के लिए रहता है उनके पास। मिरेकल्स मैच सेम इशू है रे, 12 के बाद अंदर नहीं भेजता रे, गेट पे जाना पड़ता है। आनंद बहुत अच्छे टीम्स है फाइनल में, कोई भी जीत सकता है फिलहाल तो है ना। रुक बताता हूँ, इनमें से ना कोई भी जीत सकता है सच बोलूं तो। स्पिरिट, लिक्विड, LGD और बेडबूम, ये 4 टीम में से कोई भी जीत सकता है अकॉर्डिंग टू मी। बहुत हाई भाई, बहुत हाई लेवल डोटा चल रहा है। टॉपसन टुंड्रा में खेल रहा था, टॉपसन बाहर हो गया, फिर शॉपिफाई RTZ वाला टीम बाहर हो गया, और क्या बोलूं, गेमिंग ग्लैडिएटर्स है बट मुझे नहीं लगता वो जीतेंगे। अजूर रे है, वेयर मे बी सोमनस मे बी, और 40 और कौन है, FI खेल रहे हैं। लिक्विड भाई जीत सकता है, लिक्विड इज प्लेइंग गुड दिस टीआई, लिक्विड जीत सकता है। नाटी या एफई कौन सी कास्टर बेटर है? No comments bro. Stages, it was this team, a lot of people were like, okay, they could potentially be playing tiebreakers to be eliminated. Then all of a sudden टोरंटो टोक्यो को सीधा मिड से सपोर्ट नहीं, वो खुद का चॉइस रहता है रे, ऐसा नहीं रहता है कि तू सपोर्ट खेल। कैफे का टूर्नामेंट चल रहा है रे, अब मिड अच्छा नहीं खेला तू लास्ट गेम सपोर्ट खेल ले। iteration of Virtus Pro really identifies मेरे or हॉस्टल embodies the spirit ये of हरकत EE करता Dota है of खाना खाने hyper-aggression का। in a अरे way रे that रे PUBG सैड। doesn't, and Team Spirit doesn't even, because I feel Who is the youngest and oldest player in this TI? I think oldest was Solo, 33 years या 32 years, and youngest नहीं पता ब्रो मुझे। I think क्योटाका था कि कौन था पता नहीं मुझे, ये नहीं पता मुझे, youngest नहीं पता है TI का।
I'm supporting LGD, bro. Let's go China. Who is the youngest हो गया वो? High level of Dota but low level of prize pool. हाँ, prize pool अभी public ने पैसा ही नहीं डाला है. ऐसा shit compendium निकाला है वो लोग ने. I really like VP support duels. They always have one support that is sort of like a tank killer in this meta. They pick like some A, Dark Willow. तुंड्रा का हाल पिछले TI में EG जैसा हो गया. If they have like FNG on the Treant, then they always have a Dark Willow on side. Liquid final में नहीं रहे, TI में नहीं आएगा. अगर गया तो. Sayush is the position 4 player of VP. Like the map became really big. So you want to be able to make. ये सेयुश भाई एक्सॉर्ट वाला इन्वोकर पोजीशन 4 खेलता है. देखना है मेरे को उसका रिप्ले. Now you just want to make some plays with like 2 or 3 heroes max. And I really like their drafts for that. इस बार you were expecting crazy skins, भाई skin एक भी नहीं दिया वो लोग ने. No skins. Maybe plot holes that VP could take advantage of. So I think Bet Boom is really good when the game is stable, but as soon as you add more chaos into the game, they start to sort of lose their foundation. ए मार्स प्रैक्टिस कर रहा है कोई तो उधर. Can make mistakes there. I think if Bet Boom are able to just like play lanes, everything's stable, you know, you rotate to the room. Who has the highest MMR? I think Watson था. Watson rank 1 था वो EU में. But I think VP, from what I've seen, they're like really 12,500 वगैरह रहेगा या उससे भी ज़्यादा पता नहीं. Oh, this play shouldn't happen in our opinion, but they just like push through and do it anyways. Yeah, one of those methodical things. PasoLL, I feel that you will be top 100 in 2024 and get recruited. भाई ये ऐसा हुआ तो कितना अच्छा रहेगा. कोशिश तो मैं फुल ट्राई करता हूँ भाई, बट मेरा पता नहीं यार नस्तर लग जाता है. सोचना ब्रो, राइट नाउ आई एम 7K फ्लैट. लास्ट मंथ आई वाज 8K. एक मंथ में 1000 में मर गया मेरा. 1000 क्यों पता है? क्योंकि मैंने अनाउंस किया गाइस आई रीच्ड 8K. नहीं ब्रो, कोमोडो के वजह से. कोमोडो तो अलग है रे, वो कोमोडो मिलने लगे ना उसकी वजह से. कड़क लिंबू मिर्ची वाला नस्तर लगा. अरे स्लैपी गया क्या? गया. Point in the game where they didn't really look like themselves and that they were constantly looking to make these plays. I still like Miracle. I guess I am a fanboy for life. Miracle है रे, अच्छा player है, but पता नहीं अभी खेलता है कि नहीं. For me, this series is going to be a matter of preparation. I mean, I feel that there are some key. Will any skin come out after TI? हाँ, वो लोग ने बोला है कि TI के बाद आर्काना या ये सब skins निकालने वाले वो लोग. But TI में कुछ नहीं निकालेंगे, ऐसा बोला वो लोग ने. ओ भाई ये पैसा कमाना चाहता है क्या? कि TI के बाद OP वाला skin निकालेगा तो लोग खरीदेंगे. Oh my God, Gaben, कितना पैसा कमाएगा भाई लाइफ में? They're so lane focused. You have to focus on breaking their lanes, but they're one of the harder teams to do that against Awi. Yeah, I think so. Actually, I really like what T said about the. झाड़ू फूक के मतलब PC पे भी करना पड़ेगा कुछ तो. एक ऐसा एंटी नस्तर वाला एक क्या बोलते हैं वो, ये रखते हैं ना कुछ तो मूर्ति वगैरह, वैसा कुछ तो रखना पड़ेगा यार. दिखाओगे दोस्तों तुम लोग को? रुको दिखाता हूँ, मेरा MMR शीट दिखाता हूँ तुम लोग को मैं. आज डेट क्या है? 28 राइट? 28 ये दिख रहा है इधर. 22nd of September को I was 8K. समझ रहे हो दोस्तों? 22nd of September को I was 8K and 28th को मैं 7K फ्लैट हूँ. समझ रहे हो दोस्तों? ऐसा हुआ है मेरे साथ लाइफ में. नींबू मिर्ची लगाना ही पड़ेगा लग रहा है. Because not everyone wants good from me ना, कि मतलब मेरा अच्छा हो कैसे बताओ, मेरे को बोलने नहीं आया, बट मेरा अच्छा सब लोग नहीं चाहते ना. है अपने कोई हेटर्स जिनको नहीं लगता है अच्छा कि मैं आगे बढ़ूं, और मेरे पास कैसे बताओ, मेरे पास बहुत कुछ प्रूफ्स है कि लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगता था मैं. ऐसा लोग बोलते थे कि पासोल नहीं होना चाहिए, पासोल नहीं जीतना चाहिए, और मैं बोलता था कि क्या भाई क्या बिगड़ा है तुम लोग का मैंने. Yo Rohan, what's up bhai? How are you? The lobby is full and our game 1 between these two teams is beginning. Bedboom easy win. पता नहीं भाई VP वाले अच्छा खेल रहे हैं. I want Bedboom to win, but I wouldn't be disappointed if VP wins. बहुत अच्छा खेल रहे VP क्योंकि. Game 1, let's go. We're going to see a draft coming up very soon. I do want to go back. I want to circle back around to these runes, maybe even the potential. Lag, hello.
lanes as a Gabe whole. Newell. Everyone always wants to win lanes, but with this twin gate, is there just more focus overall to be fighting on the side lanes rather भाई than फटाफट बैन हो रहा है opposing jungles? बीबी ने फटाफट 2 हीरो बैन कर दिए ये लोग ने म्योरता बैन किया ये लोग ने बीबी और स्पिरिट ब्रेकर इतना फास्ट बैन किया ना 6 and 8 minutes, like if you weren't on the mid runes, you were just done if you played the team like Gladiators. Now, like I can see with what T said, like if they managed to get a gank off on Nightfall during the 6-minute rune, even though you secured a rune, if your safe lanes died, you're the one who's under pressure. यार हर गेम के पहले जा कमोडो जा बोलना पड़ेगा यार if you get a sponsor then can you go pro can't promise स्पॉन्सर की कमी नहीं है लाइफ में मतलब स्पॉन्सर की कमी तो है ही बट कमी कैसे बताऊं कमी मेरे में ही है रे मेरे को और ट्राई हार्ड करना पड़ेगा मेरे को एकदम फुल फोकस के साथ डोटा खेलना पड़ेगा लिटरली मतलब अभी घर पे रहता हूँ ना मैं तो बहुत कुछ अलग अलग डे में चीजें रहती है अगर सब छोड़ के सिर्फ एमएमआर पे फोकस रहेगा ना 9-9.5 हजार तो एमएमआर पहुंच ही जाऊंगा मैं और उसके बाद आगे और सीखूंगा ना वो गेम में खेल के बट ऐसा स्पॉन्सर की वजह से नहीं जा रहा ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नो झूठ नहीं बोलूंगा स्किल में लैक करते हैं अपन अभी भी सीखना बहुत बाकी है Well, look, किधर गया भाई the draft is we've seen the Storm Spirit being taken out, so you already highlighted it, and it's nice to know. Yeah, Virtus Pro on top of that one. They pick up the Phoenix for themselves, and then communication ही तो important है वही नहीं होता है ना Can I just say that outside of the Storm Spirit threat, there's another. मेरे नाम का पिज़्ज़ा मंगवा लिया एंजॉय कर ले ब्रो एकदम दर्द है भाई आनंद कोमोडो क्या है पता नहीं कोमोडो इज गूगल करना कोमोडो ड्रैगन और वो देख के फिर इमेजिन करना कि वो कोमोडो ड्रैगन पीसी पे बैठ पे डोटा खेलते हैं अपने एमएमआर गेम्स में I think Phoenix is not bad for center and lane, but Stampede is really good against the egg. I'm not too sure if Toronto Tokyo has played it, but I think the 5 centaur would actually be a really good matchup here. I think generally how 5 centaur series is that they want to contain the pressure from the offlane. So Phoenix is really good at preventing the enemy from pressuring you. Yo, Wencliff, what's up? Safe lane. How are you, bro? I think centaur, if Gambino like would do a good job of prevent. Like I don't know. I played some pub versus some centaurs 5. मैं बोला ना स्पॉन्सर का कुछ लेना देना नहीं है रे कमी अपने में स्पॉन्सर की कमी नहीं है वो भाई तू बिना क्या बोलते हैं अच्छे मैकेनिकल मतलब तेरे पास मैकेनिकल नहीं है ये नहीं है तो भी तू आगे जा सकता है कीबोर्ड माउस अच्छे नहीं है तो भी जा सकता है तो डिवाइस स्पॉन्सर पीसी ये सब रीजंस रहते हैं जाना है तो आदमी जाएगा ही They're going to see information before they lock it in, but it'd be pretty cool if they did have flexibility in the tank. I think the idea is Troglodyte is a better word. Super high value right now. Troglodyte मतलब caveman. लग रहा है बरोबर है वो because you can just commit for the egg or you can reset on the egg. Evil Eye statue रहता है क्या कुछ? Phoenix like you can't match with Warlock anymore. You can't I don't really know what fights this hero. ओ ये वाला है मेरे घर में हॉल में बट लिविंग रूम में ये लगा देता हूँ किधर तो या इधर रोज गले में पहन के ही बैठता हूँ The struggle that Betboom had in the last series that I watched versus Talon, where every I play with 2-button mouse. is that when they didn't have that तो आप मैं भी 2 ही बटन वाले माउस से खेलता हूँ मतलब 2 ही बटन यूज करता हूँ साइड बटन वगैरह यूज नहीं होता है अपना consigned to playing for that late game, whereas भाई वेनक्लिफ तू वापस बीच पे बैठा है क्या that sets up for plays all around the map. It sets up for picks like Invoker, for example. So I do like that they managed to get this pure pick secured. Pugner. यस वो भी है एज ऑल्सो मैटर्स सब यंग बच्चे लोग के हाथ बहुत चलते हैं दिमाग बहुत चलता है दिमाग नहीं चलता है हाथ चलते हैं वो लोग का मैकेनिकल स्किल हाई रहता है जो ओल्ड रहता है उसका दिमाग चलता है वो बहुत सेफ खेलने की कोशिश करता है ये यंग बच्चे लोग घुस के मारने की सोचते हैं अभी तुम लोग को एग्जांपल दूं तो मेरी टीम में ना आई एम द ओल्डेस्ट ओके जो मतलब अपना इंडियन टीम है अभी उसमें ना लोगों को है ना टियर 3-4 घुस के मारना रहता है और मेरा सोच ये रहता है कि अरे अंदर मत घुसो टियर 3 तोड़ो रैक्स ले लो वैसे भी अपन गेम जीत रहे खाली फुकट उधर जाके डेथ हो गया तो कमबैक मिलेगा तो ये फर्क रहता है ओल्डर यंग प्लेयर में यंग प्लेयर को घुस के किधर तो मारना रहता है भाई बस मारो गरम खून रहता है एकदम गरम खून अपने प्लेयर्स अपना ऐसे नहीं रहता अपना चिल भाई पीछे रहो ऑब्जेक्टिव ले लो मारने की जरूरत नहीं है
It's a scary lane because if you do misplay it, suddenly they have. But thanks Rahul भाई. Your tower's fallen. Centaur with a Vanguard can naturally just take over your. Big Boss की आग लग रही है वो. Big Boss की आग भी वैसी है भाई. Break your own half of the map very quickly. Sitting at the station. Why, bro? What are you doing at the station? VP will win this. VP should win actually. भाई एक तो underdog team होना चाहिए जिनका अच्छा ये रहेगा. क्या बोलते हैं? TI run. Old players इसलिए तो support player खेलते हैं ना सारे. It sort of depends what the matches are, because the Pugna support can be sort of weird. Like some games. I dream every night of finding 4 seconds and beating him up. The shot is really strong once you get the eggs. Oh my god. Like, you want it so that he just becomes sort of a support. Like you're jumping someone and he's like trying to play for saves, and I think Sam is sort of good at that. Like if you bolt plus. TT नहीं है भाई Gambino. Gambino बहुत high skilled आदमी है real life में. मतलब एकदम प्रोफेशनल ये वो क्या बोलते हैं उसको जगलर प्रोफेशनल हाई लेवल जगलर है वो ऐसा मतलब मजाक वाला भी नहीं है आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम कभी देखना उसके वीडियोस देख के ही अच्छा लगता है वो कभी तो लाइव देखेंगे बट एक बार लाइव में just because of how good the matchup is, but if you look at these two supports, कुंका गलत ले लिया गलत कैसे रे कुंका मेटा हीरो है ब्रो आई थिंक कुंका के सामने मंकी किंग जाने वाला है Usually the issue with Monkey King is that he can die quite early on. He can be punished against. But when you have a Vengeful Spirit behind him, you give him the additional security of you have the swap out. You have that kind of plan to take you into the mid game. Also, असं कधी भेटणार हातात गेला just life drains you. There's not that much backline jump coming out of Virtus Pro. भाई स्लैपी ने ना उसका दोस्त अभी टीआई में रे तो उसके दोस्त ने वो एजिस हाथ में लिए के फोटो निकाला असली वाला एजिस दोस्तों. And it's pretty cool as well because Vengeful Spirit coming into this 35 games, 40% win rate. People can just say, oh, it's pretty bad. But like everyone mentioned, वो टीआई देखने गया है तो लोगों को अलाउड है उधर हाथ में वगैरह लेके फोटो निकालना. If Monkey wants to Wukong and stand his ground, killing him is going to be a little bit difficult. But VP, they get their. He killed the scene. वो तो अलग ही नशा है यार. वो किसके बारे में क्या ही बोलो. Throughout the road to TI and they have a lot of setups to some degree. I think it's mainly going to be Kunkka leading the charge. It is sad that old Arcanons cannot be bought. हाँ ना यार वो सब नहीं करना चाहिए रे. इतने अच्छे वो अर्शेकर आर्काना, विंड रेंजर आर्काना कितने अच्छे आइटम्स है वो. रिच किंग आर्काना, स्पेक्टर ड्रो आर्काना लॉक करके रखे है वो. और वो भी वो टाइमिंग पे इतना पैसा डालो फिर मिलेगा. अर्ली गेम एडवांटेज है बीबी के पास. कुंका वाज नॉट गुड. नहीं रे कुंका अर्ली भी मारता है लेट गेम भी मारते हो. एक बार हार्ट आने के बाद तो तबाही मचाता है मैप पे पता है ना. MK4 नहीं MK4 नहीं है MK मिड रहेगा कुंका के सामने. कुंका ग्रिम ऑफलेन भी हो सकता है. वो लोग ने वो फ्लेक्स पिक उठाया एक्चुअली देखा जाए तो. आइडियली मिड पे खेलते हैं बट पता नहीं अभी वो क्या करेंगे. वो मंकी किंग कैरी भी हो सकता है ना. कैरी भी तो हो सकता है. क्या बोल रहे हैं. हाँ वही तो आइडियली वही दिख रहा है ना मैप गेम में. नेक्रोबैन अच्छा था. कुंका के सामने अच्छा, स्पेक्टर के सामने अच्छा. यो सयंतन 26 months already. Wow. Thanks भाई. Thank you very much for all the support. यार चैट मेरा किधर चला गया. कुंका टू बी यूजफुल उसे एटलीस्ट 10 लेवल होना पड़ेगा. नहीं भाई 6 लेवल पे तबाही मचाता है मैप पे. क्या बोल रहा है तू. हाँ +1 के साथ किसको भी मार सकता है वो. I think they'll probably go for all damage. I think support on Alpha का damage. You need all that scales back, get some damage, and can work well with the Grimstroke. No Nigma OG Secret Toxin अब मजा नहीं आ रहा है. अरे यार वो I mean वो है वो तो है वो मिसिंग. बट बाकी टीम्स भी अच्छा खेल रहे हैं इधर.
Conquer on the off lane, we're going to have a strong lane in the Lina. Like, it gives us at least an angle in the lanes. The answer as well is for BetBoom. They have very good back lanes to protect. And Let's go! Sayantan has become a member. Thanks, brother. मैं कैसे बता सकता हूँ? तेरे को दिखेगा उधर? Lina? Eh, Lina mid है, हाँ. Yes. Wencliff was right. Kunkka and Grimstroke off lane. Sort of a losing lane. Your Spectre losing lane, and Lina, she's a strong laner, but she doesn't do anything until at least like travels. Like 2 items plus, yeah. Lina off lane नहीं होगा. For GPK Invoker. Impossible है. We're putting the Monkey King versus Conquer on the off lane. Invoker sounds good. ये Lina off lane रहेगा तो suicide है भाई. TI क्यों खेल रहे हैं? Good at this hero, and I feel like there is an opening now versus this Lina. I mean, what else would you pick to lane into? Pugna mid भी भेज सकते हो लोग, but नहीं खेलता है वो GP के. Invoker mid. Let's go. Any range hero where you can sort of rotate a bit and just make sure that you're getting your farm. Crusader level पर कुंका लोग खराब खेलते हैं. हाँ वही तो बोल रहा हूँ. उधर खेलते रहेंगे खराब तो तेरे को लग रहा है. BB पे 10k खा लिए. If BB loses, I win 25k. Wow, good luck, bro. उसने पैसा लगाया रे बेटिंग पे. 10,000 लगाया है तो 25,000 मिलेगा. इससे बोल रहे हो. I think VP's lineup, it might look quite slow on paper, but I think they're the type of team that can make drafts that look, slow, very high pace. So watch out for those Spectre moves that aren't as characteristic, but मैं तो चाहता हूँ बीबी जीते, बट वीपी जीता तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा. इट्स अ गुड टीम. वीपी बहुत अच्छा खेल रहे हैं भाई ये टीआई में. Who's the best invoker player? बहुत सारे हैं. BZM, Stormstormer, Miracle. सुमिया नहीं रहे, वो पबर है. प्रो प्लेयर सिंगर. टॉपसन, यस. स्लैपी भी खेलता है, अपना ध्रुव भी खेलता है. बहुत सारे. इन्वोकर सिंगम 30 लेवल. हाँ ना, स्लैपी बोला ना मैंने. तो तेरा 30 नहीं बोला, स्लैपी भी 30 है दोस्तों. माय बैड. मेरा 16 है. Wow, Spec really is an early game. I think she won't have a lane, so she has no other option, is what you're she's gonna saying. have an urn, and like she'll have a good game if you get kills, which is very possible. Like वैसे इधर R-Codon players कौन है मेरे अलावा? Honestly, even Invoker sort of a vulnerable hero. ये क्या बोल रहा है रे पुराना? बीच में बैन लगेगा बोल रहा है. ये लोग किधर से कर रहे हैं? गेम से वॉच कर रहे हैं क्या लोग? गॉर्ग वगैरह? नहीं रे, गॉर्ग उधर से देख रहा है. मे भी उसके पास लाइसेंस रहेगा. सिंग भी उधर से देख रहा है. ग्रबी भी उधर से देख रहा है. और कोई लोकल वाले देखते हैं. फोरेव भी उधर से देख रहा है. क्या बोल रहा है रे? ए जी करके एक प्लेयर था, बताइए. पुराना प्लेयर है, गॉड नाम था उसका. ये मिड भी खेलता था, बाद में 5 भी खेलता था. I'm like ancient 2 now. I recalibrated from Immortal. I don't know anything anymore. But this is how you beat the good. I think they're good. What do you guys think? Good heroes? All right. So pretty good. What do you think? What do you think? I don't know. I ask you. Okay, that's not a good sign. All right, no problem. So let's talk a little bit about you and FNG. Came in here 2015. You were both players. He's still a player. You are. Yeah, I'm not a player. No. All right, no worries. But how do you guys feel back in the arena? Did you give any advice to? सुमेल भी अच्छा इन्वोकर खेलता है. Yes. First time in front of this roaring crowd. टॉपसन कुरियर से मिड जीत सकता है. क्या बोल दे रहे? Oh my goodness, thank you so much, Slacks and. अरे वो कुरियर वाला बग हटा दिया ना? क्या? वो बग थोड़ी है, वो डाजल हील करता है वो. अच्छा है क्या वो अभी भी? हाँ, डाजल कुरियर हील कर सकता है. उसने फर्स्ट गेम में भी किया था शायद टीआई में. हाँ, टॉपसन नहीं निकला है वो. टॉपसन मेटास निकालता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. यस, इम्प्रोवाइज करते हैं. That was a trade-off of bounty runes, 2 apiece. So no really early first bloods. I thought it was an interesting thing when you have these Eastern European intra-regional matchups happening.
I was मतलब anticipating an early Spectre ban. मतलब इधर रास्ता फिक्स हो रहा है ना तो क्या बोलते हैं दिन में तो कितनी ट्रेन जाती है उसमें से 200 से 300 लाइक शेड्यूल जो रहती है ना ट्रेन हाँ तो वो कैंसिल हो गई है और मैं तो कॉलेज भी जाता हूँ हर रोज ट्रेन से बहुत दिक्कत तो अभी ठीक है मतलब मिल जाती है अगर नसीब हुआ तो बट वो भीड़ भी उतना ही रहेगा ना Same thing with the Pugna as well. Save, definitely a hero he loves, as you can see up there. Squad X मुझे लगता है देने वाले हैं उसको Spams it all the time. So also GPK को get that for his team and what should be perhaps a more contested hero, I think, as this moves along here. You think the Pugna will be? Yeah, I think Pugna's super solid, alongside the Phoenix as well, right? We hit a lot of teams talking about this Phoenix because you know we got hard blade mail, we got percent damage, percent healing, super solid. So expect more nice. Fiery Bird here too. We'll see indeed the first wave already going very much into Squadix's favor. 8-4 right out of the gate versus 2-0. I mean, this is just going to be Quaswex Invoker, but I feel like he's really taking it to him. I mean, you got to do this as Lena, right? This is the whole idea of the hero, is that you better be winning that mid lane nice and early, get an advantage, and hope that you can make something of it with this hero. Because she's still, you know, she's had her days of dominance. We were all a little tired of her, but she's seen her. Yeah, definitely. Well, and, you know, like let's I go. Was saying on the panel, Korg. They want to see some early Nice rotations, Korg. maybe making things happen, particularly towards trying to shut down that safe lane. Because you imagine that Nightfall has got to get off to a good start. Somebody that is already taking a bit of a beating up top is Kiritich. Yeah. The Spectre, not a great. What about Lahanat Invoker? I mean, can you think of a worse duo? लानत भाई हाई लेवल एकदम TI के आगे का प्लेयर है वो ऑलरेडी TI 33 खेल रहा है No bonus items. That's just how it is on this hero. You just keep running back and forth, throwing these. लानत नहीं आया. And then if you get too close, Nether Blast. Maybe you get two heroes at once. Korg is saying काय झालं? Nothing, bro. All good. And almost impossible for them to punish these two heroes. And look at him. Every time he comes up, Pure is just going to spam this double edge. I mean, Kiritich is just going to have a bad time. And this is what they were talking about, needing to sack this lane. But at some point, I mean, this is why it's so important that the Lina does well, because they're going to need her to help out with this. Yeah, they're going to need her to do very well. And of course, you got to slow down the Spectre because we have seen the power of this hero. Oh, yeah. It's one of the winningest heroes in the road to the International. Just kept on winning and was being ignored in a lot of drafts. So we've had a lot of days off now. Teams are looking through like what heroes we're doing really well. But, you know, should we be adding these heroes to our repertoire? And, well, Virtus Pro, they were on the Spectre pretty early. But they do love it in combination with that Tree and Protector, which they weren't able to get here. Of course, that was banned out right at the start. You can see the pressure being put on Denies in GPK's face back behind the tower. Whereas Apen, yeah, did they have quite enough damage? Wow, let's go. Save. Here in this series. Hi Parth bhai, what's up? I mean, he has cast double edge so many times in this lane. Yeah, he's got क्या बोलते हो? there too. He's got 3 rings, so lots of bling here. यार कैंसिल करना पड़ा है यार. I mean, yeah, this is really going to continue to be tough. आवाज कम आ रहा है. We haven't really looked at it all so far. Has been the Notice Kunkka down bottom with Sage on. आवाज बहुत कम आ रहा है. Stroke, and at least at the early going, he's been able to stay pretty consistent with Nightfall, which is pretty impressive. Kunkka not loving to go matchup. Yeah, certainly a counter pick matchup here. They were just going to follow you over. But with the help of the Grim Stroke, I mean, you can already see, right? Potential for turnaround. And a chance maybe even for a kill. The Stroke of Fate, they try and get out, but with 2 stacks of Jingu, it's too scary. That's how much टाइमिंग का इशू हो रहा था और कुछ नहीं. Yeah, you really don't want to throw away this even lane you have. You know how quickly you can go south here. FNG down low, he's right click, but he does eventually get him. So Save finds himself another kill. The support's getting stuff happening, and top lane continues to be a kerfuffle, we'll say. हाँ नहीं यार आना चाहिए था मजा आता था टॉपसन स्टेज पे मतलब बेस्ट रहता था मेरा वही एक अकेला वो प्रेडिक्शन मेरा गलत निकला सेकंड उसके अंदर they knew that they wanted Spectre, they prepped for this the whole time, and you know VP said bet never doubt Lahanat, never bro, never. I know, I mean so far it's definitely hurting, and the slowdown with the Icarus क्या Nether Blast Acer जीतेगा will go down, so FNG can even चाइना जीतेगा तो अच्छा लगेगा मेरे को. They need something like that because LGD मारेगा बट उनको. Yeah, maybe not on the Phoenix, but you know, that's what you got. Noticed. Will get the Jingu, but the X will keep him at distance. Yeah, you can see it's a tenuous situation down bottom. And so, because they are missing that Tree and Protector, like in this mid game, what we often saw was this. Hello, Slow Hand. What's up? Long time. How are you?
shard abilities where he's invisible and he's just like punching people, and that would help set up for the haunt. That's going to be noticed this game on this Kunkka, right? He's going to be the one who's going to be very responsible for trying to get these good plays warmed up here for Kiritic to get back into the game. Well, of course, the benefit here is Pure is going to TP out right in his face. Base पे TP मारा उसने. Spectre's dying with that urn charge does manage to get it refilled, and well, only level 3 on the Spectre as Save tries to hunt down Squadix. Eventually, you're gonna maybe be able to make some type of a mid lane difference देख रहे हो? Invoker 25 creep, Lina 33. यार Lina जंगल भी मार रहा है, but फिर भी. Ready to go here from Beppu. Regen. Sayush not gonna be able to get the Sayush. Well done. हाँ ना, Topson spraying, voice chat, ये वो spray मारता था मिड पे loser करके. Topson का वो सब अलग ही था यार. वो तो पूरे OG का था ना. देखने में मजा आता था. ऐसा लगता है वो स्ट्रीम देख रहे हैं हम. हाँ ना. हाँ. जो सामने वाले को स्टॉर्म करके ऐसा भी क्यों क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं मार के. They're bringing a lot of people to kill noticed. So this one should be an easy bring down most likely. Torrent not going to connect. They continue to die. ये नाइटफॉल भी अच्छा प्लेयर है देखा जाए तो. बहुत कम टाइम मरता है वो गेम में. 0 डेथ, 1 डेथ, 2 डेथ ऐसा ही रहता है उसका. Few deaths and maximum गेम प्ले ऐसा रहता है उसका. भाई 2 विजडम मिला. 7 मिनट का 2 विजडम मतलब बहुत अच्छा रहता है. Super important right now to try to balance out that XP a little bit. Yes. Does mean that FNG is kind of massive on the XP now. He is essentially even with Kiritic despite rotating quite a bit. Twitch chat है ना भाई, खतरनाक चीज है. I mean that could really come back to haunt this BetBoom team a little bit later on as Notice separates and gets away. If he can actually make some solid moves with the Phoenix, we've seen before at these big events, the team fight from Phoenix can be insane if he's over leveled. A bit of a hard hero to make the ganks happen, but if you get that perfect edge and that rotation down that bottom lane, obviously you do have a Kunkka to set it up, so it could happen here. And he's trying to make it work, right? He's dead. Oh no, Invoker. But Perfect timing पे आया. Nice, debated. Oh, that hurts. All right, bit tough. Well, a stun now from Squadix with Sage right on top, and another kill going in the direction. क्या? Yeah, GPK won the coin flip, got an arcane on the top one. Center violence down bottom, or rather top there. Dream team. So they try and create some separation. Dream team ऐसा कुछ है नहीं ब्रो, सच बोले तो. अगर ऐसे वर्ल्ड के सारे प्लेयर्स ओपन रहेंगे और ऑप्शन रहेगा मिक्स करने का, तो आमे कैरी. मिड पे किसको डालूंगा मैं, वो नहीं पता है मुझे यार. वही है टॉपसन ही है कि और कोई है क्या देख रहा हूँ मैं. मिड टॉपसन आमे कैरी. ऑफलेन इंटरेस्टिंग रहेगा. Couple neutrals, but yeah, they're setting up bottom. They're trying to recognize this too. Toronto Tokyo just put down some vision as well. Seb offlane. Does spot the pillar, but obviously no one. Position 4. Again, shadow step at the ready. They find one. Stun is. नहीं खेलने वाला चाहिए ना अभी. Steps up. Are they going to go for this? It's tough without boat. Notice is so close. If they can get one kill in the boat, that could be huge. Position 4. Oh, cut down. नहीं, Insignia तो 5 है. Nightfall, if you get caught up on a tree, that could do it. LSA connection. यार 4 कौन है? I mean, you just randomly find a tree cut down. FNG 4 नहीं पता है दोस्तों. doesn't have egg yet. Would love to get it, but 4 क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा एक नहीं है. They do have level 6 on Kunkka. Sets it up for the torrent off the mark. Kiritich still standing tall. Squadix is down. They're starting to tear him apart a bit. They have enough damage. हाँ 4 था Jarex. Back away. Toronto Tokyo in the area tries to take it off. Nether Blast connects, but it's not enough damage. Finally thinking about throwing it out. It is going to 4 का बाद में बताते हैं. और position 5 will be. Oh, the chase down. Nightfall's trying to find him. Position 4-5 पता नहीं यार. You can feel there's some tension going on in the room. The spells being missed and नहीं पोश का हो सकता है 5 पे एक्चुअली देखा जाए तो.
No, not boxy, bro. No, not GH. बाकी सब प्लेयर के साथ सेट हो ऐसा भी देखना पड़ेगा ना। क्या? हाँ वही तो। माइंडसेट सेट हो वो भी। हाँ तो वही भी देख रहा हूँ ना मैं, इसलिए तो ये सब लिए ना। सेब ऑफलेन टीम का पूरा कंपोजर रखेगा, टॉप्सन मिड आमे के लिए स्पेस क्रिएट करेगा, आमे कैरी गेम जीता देगा। 4-5 आई एम नॉट श्योर गाइस, थोड़ा देखना पड़ेगा। क्रिट नहीं, आई डोंट लाइक दैट मच। 5 YU स्माइल, LGD का पोजीशन 5। सबसे ज्यादा एक्साइटेड TI 9 के लिए था, वो भी उसी बार गुरो की लिखा है एक ने। जैसे क्रिकेट में BCCI वैसे डोटा के लिए इंडिया में कोई बोर्ड है नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है। वो रहता तो अपन आज बहुत आगे रहते थे, पता है। इंडियन ये सब चीजों में लेट रियलाइज करते हैं ना थोड़ा हम लोग। अरे खेलने वाले प्लेयर बोल रहा हूँ, नहीं तो बिग डैडी लेता था मैं। अभी जो खेलते प्लेयर्स वो लेने हैं ना। 4 पता नहीं यार दोस्तों। 4 पे साक्षा ले ले। नहीं यार। No bro, no, not Saksa. Again, Shadow Step ready. This should be an easy pickoff on a save. Does get the Nether Ward down first, but that type of a move, and no real counterplay coming from Betboom as of yet. They're just trying to farm up and get to the items. Hey, Catapult's still up here. Why not? Keep the pressure on. They sit now. और खुद में यो लो नहीं रे, अपन उधर वो लेवल पे नहीं खेल पाते, पता है अपन, सच बोलूं तो ऑनेस्टली, मतलब एकदम दिल से बताओ तो नहीं खेल पाते वो लेवल पे अपन। वो जरा बहुत हाई लेवल डोटा है, वो सीखने में थोड़ा टाइम जाएगा अपने को, सीख जाएंगे वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सीखेंगे कभी अगर उनके साथ खेलेंगे अपन, समझ रहे हो ना। रेगुलरली MMR के भी वैसे रहता है, इफ यू कीप प्लेइंग MMR और तुम लोग एक ब्रैकेट में स्टक हो। भाई बेडबूम तो मार रहा है, तो मैं बोल रहा था कि MMR अगर तुम लोग एक ब्रैकेट में स्टक हो तो तुम लोग को उतना ही डोटा आता है, समझ रहे क्या, वही ब्रैकेट का। अभी मैं 7 के ब्रैकेट में अटको तो मेरे को मेरा लेवल 7 के वाला ही है, भले मैं दिमाग लगा सकता हूँ, बट गेम प्ले वाइज या मैकेनिकली स्किल वाइज उधर का डोटा चल रहा है अपने दिमाग में। इसलिए MMR बढ़ाना इंपॉर्टेंट रहता है, पता है, अगर आगे गेम में जाना है तो। MMR बहुत ज्यादा है। FY भी आई एम नॉट श्योर। Position 4 देखना पड़ेगा guys. 4K gold lead. I mean, this was relatively close just a few minutes ago. And again, you do have some crazy team fight potential coming out from Virtus Pro if they can hit all their spells. 4 player का लिस्ट देख के बोलूंगा मैं TI का. Right moment. Are they going to be able to find pickoff into pickoff with these X marks the spot plays? I mean, Conquerors right now only level 8. He's just now getting that second point into X marks, which is normal, but it's offlane Conquerors that hurts for it. Now they are wrapping around. Kiritich. Hey, they're closing in. About see him trying to dodge away. Where's the help? Swap back. Gets a little bit of separation actually, but the tornado lift up and with the sun strike, that's going to be. Let's go. Easy peasy there too, and of course the Stampede is even back up now for Pure as well. So if these ganks get a little bit scary, they can just bail out. But ideal situation, right? You're ganking onto the spectre, so harder to turn around. खेलने वाला नहीं है ना अभी TI में, या ऐसा रेगुलर प्लेयर ही है। काका खेलता है कि नहीं पता नहीं मेरे को। And now GBK immediately comes bottom here with the Ghost Walk. Trying to hunt. This is Blade Mail going to be completed for Noticed. And again, sort of measured aggression taken on is what it feels like the plan is for Virtus Pro when they get opportunities, but haven't really found anything good going for themselves for a bit now. They're just all over these runes. डूब गए किसी के 10,000, पता नहीं ये फर्स्ट गेम पे लगाए थे कि सीरीज पे लगाए थे उसने। देवेंद्र को याद है भाई 10,000 लगाए थे वो आदमी ने। ऑल स्टार बंद कर दिया, पता नहीं होगा कि नहीं। करना चाहिए मुझे लगता है ऑल स्टार, मजा रहता है ऑल स्टार भी। ऑल स्टार में वो म्यूटेशन वाला मोड है, ऐसा कुछ वियर्ड होता है ना तो मजा आता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं मजा आता है, नॉर्मल कुछ हो तो वही का वही। अंडा तोड़ो अंडा तोड़ो अंडा तोड़ो भाई। नाइस।
It was almost amazing for Virtus Pro, but they come out on top, and now the chase down onto Notice. He too is in trouble. Inkswell won't matter. Damn. Oh, nice play there with the Invis Rune. Gets right up to catch Squadex, trying to catch them on that rotation into the back line to punish Good night, Varun. first. And every time it feels like they're this close on Virtus Pro, but Baboon keeps shutting it down. Not allowing them to get back into this game. One hurts. And, I mean, now you've got किधर? Midas done on GPK, so he's going to start scaling already. All of the cores कितना हुआ है अभी तेरा? are on top of the Virtus Pro roster. नहीं उसका कितना हुआ है? वो Aegis का. See this replay, how good it could have been, but they didn't even need to get the finish. मतलब मेरा Aegis का 170 है. मीनिंग नहीं है इतना पैसा खर्चने का इस बार. नहीं वे उस पे पैसा खर्च करना वर्थ इट नहीं है. मेरे को Aegis चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए. क्योंकि वो Aegis बहुत अच्छा दिख रहा है ब्लू कलर का, और कुछ नहीं. That's the reason I want the Aegis. 16 minutes, a 7,000 gold lead. Yeah, that boomer just playing immaculate right now, truly. Like, मेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा पता है Aegis के लिए? रुक देखता हूँ. बूस्टर भी काउंट करने का रे, समझ रहे क्या तुझे उसके साथ? मेरे को बूस्टर लगा के 6,000 लगाना पड़ेगा. एग्जैक्ट 5,925. आज का डिफरेंस है अपने लेवल में. हाँ बट मैंने एक 24 लेवल खरीदा है. I think that was Aoi that was saying that the Centaur can definitely snowball the game. It also feels like in a lot of ways. नहीं रे, वो मेरे को 300 लेवल करना है. वो Aegis मेरे को बहुत मस्त लग रहा है. ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल लग रहा है. Been able to set up a ton of these kills. Firing on all cylinders. It's all looking good. I mean, Save is just farming their jungle, right? Like they're in desperation mode on Virtus Pro. They're trying to get as much farm as possible wherever they can on the map, and to have the position 4 of the enemy team just taking what little camps you have doesn't feel very good. They've had a great vision advantage throughout a lot of this. Many sentries now placed down though, as you can see here on our graph, and that's what we're trying to counteract. Trying to get rid of that vision so they can find some better places, safer places to farm here for Virtus Pro. But they're really failing to create any sort of shadow step plays, unfortunately, because it's just hard, right? Yeah. Like they have not been willy-nilly with the Stampede, so it's just always there. That defensive maneuver being available just puts a thorn in their side whenever that opportunity comes around. Now, we do have some more time before the next item is going to come out. Shard is queued up for Lina at the moment. They do have Shard on Kunkka, and of course trying to get towards that Water Park Aghanim Scepter. हाय शिवा शो. नहीं आज TI देख रहे ब्रो. अभी 2-3 दिन अपन सिर्फ TI देखेंगे, खेलेंगे नहीं. Manages to escape there though with that X, keeping himself safe. We've talked a lot about Notice's hero pool as well in terms of like what looks like a good game. Slappy क्या प्लान है कि नहीं अपना फिर? Has come down to this idea of a scaling hero, and the Kunkka, yeah, much Slappy है क्या? trying to enable his allies. Well, let's see if they can find the setup finally here as they do manage to come in, but there it is. Stampede run together, but करायचं आहे हा प्लीज. तू एकच बेस्ट ऑप्शन राहिला आता लाईफ मध्ये. TI फायनल साठी माझी मांजरं चालणार असतील तर नक्की. काही प्रॉब्लेम नाही, उलट भारी होईल. कंटेंट आहे. तुझ्या घरात तू ठरवणार ना, तुझे रूल्स भावा, आमची थोडी. बेडरूम जिंकते. इजी सवाल ही नहीं आता है. बेडबूम इज डिस्ट्रॉइंग. सैड रे. तुम लोग पता है क्या होता है, ये क्यों हो रहा है पता है क्या? अगर वो जो ग्रुप स्टेज का मोमेंट, ग्रुप स्टेज नहीं अभी पहला प्लेऑफ्स में जो जीते ना ये लोग, नाउन्स वीपी, वो उनका मोमेंटम चला गया रे इतने दिन का ब्रेक रख के टीआई में. कितना गलत है ये टीआई फॉर्मेट. वो एक तो यंग बॉयज है, जीत रहे तो एक मोमेंटम रहता है पता है. व्हेन यू आर विनिंग ना, यू आर हाइप्ड, यू आर लाइक रेडी टू डिस्ट्रॉय एनीवन इन द वे. बट उसके बीच में ब्रेक डालोगे इतने दिनों का, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है, जोन आउट हो जाता है आदमी. बहुत गलत है ये. नहीं करना चाहिए लोग को. फालतू गिरी है वो. भाई नाइटफॉल आहा ए केस नहीं करने दिया उसका. चल सेव इज टैक्टिकल फीड.
but it very much feels like it's a stop the bleeding type of game at this point for Virtus Pro, and so far they haven't been able to. Oh, and Save knows they have a ward there. So, nice snipe by him. See if they clean that up. किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मैं 4 टीम्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, but I want LGD to win. LGD, Bedboom, Liquid Spirit. These next few minutes, this is where things start to become a serious issue. Like cricketers do by delaying last over. हाँ, वैसा कुछ तो. मोमेंटम खराब करना पड़ता है सामने वाले का. तो ये TI में वही हो रहा है. इन नए बच्चों का बिचारों का मोमेंटम खराब कर रहे हो लोग. Whatever is there. No. Well, we've seen this one go awry a couple times. No, not this time though. Fine. They're gonna be fine. 4 heroes. Nobody's dying to the Tormentor today. Exactly. I mean, FNG does do some damage. कितना स्लो है ये टॉर्मेंटर? 1 लेवल का है भाई. Almost done with the Radiance. 1 लेवल का टॉर्मेंटर को इतना टाइम लग रहा है लोग को. What? Oh, Sage. Oh my goodness. भाई साहब. So here's the thing. That's a great upgrade though. They got Phoenix. That's huge, right? 4 points in the Sunray. We'll actually be able to keep helping out during those eggs. Can be a little bit more liberal with the eggs. Just hop right out there. I mean, the big thing to me is that this Supernova keeps on just getting brought down right at the edge. It feels like if they can buy a little bit more time, you get level 12 on Phoenix. I mean, it just can't happen though. How many free jumps and initiations have they found on this Lina? She's getting demolished. Let me just check here. Demolished. To about 7. Yeah. If I had to guess. Yep. Save, getting the tips from his team for setting up those kills, getting the vision down. My goodness. It is appropriate that we have a stop in the Centaur game. That's true, yeah. Very thematic here. I mean, what's so nice about this is that they are giving up some parts of the map, but they're still getting enough gold that they're keeping their lead. Like, it has shrunk, right? It's down to 9K, so it's not as if it's constantly growing. But when they are missing out on some of that lead and this ability to just like farm and spread across the entire map, they're taking these objectives one by one, right? So knocking those down, in the end, that's going to give you a bigger economic advantage. Even if you do offer up a little bit more space, it's more important to just not give up these free kills because they have the Shadow Step, right? They have Kunkka. That is a lot of setup damage if you are alone. Yeah, it is still possible that you could die, as if the Kunkka's setting up, the Stampede might not be able to save you, obviously, as you can't run from the X forever. Right, well, and it feels to me that the real time when this team for BetBoom is going to completely take over is going to be when Invoker gets his BKB2, and then they can play freely wherever they want. Oh, they just got double Wisdom? Nice. FNG, they're not opting to go, so a little afraid of what could be happening. Thought he got a freebie, but not seeing anybody else. FNG gets away with one. All right, GPK playing it safe. I mean, you can tell there's still a ton of respect for what could happen if things go wrong, and we'll see if they can close out the game, because building up a lead is not winning. They need to be able to finish the job. They do eventually have to go high ground. It is true. Pure का कैमरा blur हो गया है पूरा. No, nothing good ever happens going up there. But also, if you don't tighten the grip enough, and they're able to keep farming a 10K gold lead right now. All right, there we go. That's hope. That is hope. That Radiance. Yeah. That is what it signifies here for Virtus Pro. Radiance आ गया Spectre का. Finishing that one off along with अरे. Let's go. Here with Roche. Radiance से कुछ भी हो सकता है भाई गेम में. Nope. We're just not going to hang out with Roche anymore. Okay. No, don't want to go for it. Nope. I mean, this little bit of indecision, anything right now that buys time for Virtus Pro, like I was saying, if a 9K gold lead at this point is good, if it's still 9K at 30 minutes, I'm feeling a lot better about Virtus Pro. Yeah, no doubt. Keep it stable. But again, same idea. Giving space on the map in order to get big objectives. So get the Aegis for themselves here on the side of BetBoom. A little bit of help there from Save. Oh, and there's a closeout item for you right there, the gem. Oh yeah. Make sure that they can clean up all the wards across the map here. They don't want to offer those opportunities. Vision is crucial for the Spectre lineups. That's why that Treant Protector works so well with it. Kunkka, not quite as sneaky unless you get set up there with the Shadow Blade. So in this case, you're just going to have to try and rely on some observer wards that you sneak in behind them. Well, and I will say that as much as this looks very rough for Virtus Pro to hold, basically the decision to take the Spectre was the call that we can hold against this high ground push that's going to come. We'll see if that's a bet that will pay off, or if it's going to be BetBoom that are running away with this one. Yeah, or if they just made the right call and let it get through, like knowing that they were going to take it. Yeah. It's definitely a possibility.
I mean, we sort of saw a similar thing too in our first series, right? पता नहीं यार शिवा शो ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ. We've heard everyone talking about that's worked out very well for GG versus Nouns, and now again here these signature heroes that you can expect. We've had a lot of days to look at those drafts and think about, you know, if we give them the opportunity, what hero do we know they're going to take? Oh, they find her. She still has a haster though, trying to get away, can't escape even with the haste. Nice. They're just as fast. Oh no. Everybody hasted. Oh man, and Kiritich now also going to get chased maybe. They go for the shadow step, excuse me, onto GPK to get out of trouble. Yeah, that's definitely an escape shadow step. Nicely Please, played. let me go. Pure though, not so sure, he wants in. Right there on top of one. Still scary, they have Aghanim Scepter on notice. No buyback on the Lina, but can they chase down Kiritich? Still scary to make that move, but they jump in, able to find it. So much damage with the heal. The heal coming in from FNG, actually keeping the carry alive. That was so much heal as the Supernova will end. They managed to keep him alive. They're getting a little custom fancy there with the swap, and the meatballs already coming down when he sent down the swap there too. Trying to alley-oop a kill onto Kiritich, but not enough damage there thanks to that shard. So good thing they went for the Tormentor when they did. Absolutely. दोन्ही साइडला नुसता heal game चालू आहे. हाँ ना. Phoenix आणि इकडनं पगना. सेंटर बट बॉस है गेम का. कैसे खेल रहे हो? Pure is very high skilled player bro. प्योर पहले कैरी खेलता था ना. हाँ. एंटिटी का कैरी था, उसके पहले वीपी का था, और फिर वो वीपी का वो सीन हो गया था वो लोग का. हाँ, रशिया वाला. हाँ. फिर इधर आके भी उसने सीन किया ना. वो स्ट्रीम देख रहा था ऑल टैप करके. अच्छा, प्योर था क्या वो? हाँ. उसके बहुत मैटर हुए भाई लाइफ में. एपिक था वो सीन. देख रहा है. I do have the gem on Pure, so he's just running around, dewarding everything. It's going to be a very hard hero to bring down, of course, between this Kaya Sanj and Pipe. अगर मैं रशियन होता ना, मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स रहते पता है, क्योंकि रशिया में बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रीम देखते हैं डोटा के. बहुत व्यूअर्स रहते हैं. GPK is god like. Not sure exactly what they were trying to do there. Maybe bait out the BKB or something, I guess. But he stood stall. Yeah, almost feels like just like wasting time at this point, eh? Yeah. See if they can just draw them all mid. But GPK, he's going for the game ender here. He's getting a blink dagger. Okay. I love it when you see these players get blink daggers in this day and age, because there's so much scaling. There's all these big items. Blink, I feel like, has been pushed to the side a little bit for a lot of heroes. Right. But now you got a Shadow Blade up on the Monkey King and a blink dagger up on the Invoker. So this whole map just got very dangerous for Virtus Pro. And of course, the blink dagger, one of the best things is just actually going high ground, right? You want that perfect moment. You don't want to miss it. That's what blink dagger always gives you. Nightfall. Spots Kiritich, goes right under him. Oh, bhai. What if he cut that tree, though? Gotta get out, gotta escape. Tornado lift up, but everybody there. Oh, no. That is a painful loss. Taking out. It's easy to become Russian. Drink vodka. They're hitting hard. Nice one, bro. I mean, she did a lot of damage, but drink vodka, play vodka. Not looking great. Two का play up. Gonna connect on the Nightfall. The heal is going to be there from Save as they start to see high ground. And yes. Without Spectre, you got to imagine it's going to be tough to make any type of a move. Okay. X pulls it back in. And as far as the hold goes, I mean, that's something. Aegis is wearing down soon. The tier 3 tower starting to fall. Looking for an X catchy tune था. Will get punished there as the boat goes out. The land dead. Oh, nice save. Save को save किया भाई. टोरंटो डोकियो ने. Gets the kill onto one. Can they find any more? GPK gets that Ogre Seal Totem to separate. All right, Batboom gotta, don't throw a bad fight here just to save. Let him go. Be the unsaved here. Just trying to secure that tier 3 there with the Nether Blast. No one has buyback in the game. No one. Left में देख रहे हो दोस्तों? Oh my god. 0 buybacks. Bench का आ गया. Sadly. Keep it going. See if they can for sure. I mean, you are starting to get into these items, and with no Aegis, the worry is still that you have this. One, pretty substantial gold lead, but two, the BKBs, and they really don't do that much through BKB at this point on the side of VP. You know what I love too is GPK going for the Ogre Seal Totem. Yeah.
on the Invoker. It's like he knows his job, right? Like he has to be a little bit in there. And he knows things can get a bit dicey and a bit risky there when you're stampeding your way in there or using this Blink Dagger, and so just has this opportunity to escape and be a little bit tankier. Or perhaps go in. Maybe he'll be the aggressive Ogre Seal Flopper. And he does a little damage, right? Why not? So 30 minutes in, and Virtus Pro maybe could be thinking about another Tormentor when it comes back up again. And we're 2 minutes until Roche is capable of respawning. As BetBoom. We'll see if Notice is feeling lucky here. Maybe he's got a couple Crimson Witnesses, right? Maybe get 4 or 5 of the event. Feels like he can hit some Torrent Storms. Well, they find one right away. Kiritich, the heal. It's not going to be enough. He's not lucky. भाई सेंटर किधर खेल रहे रे योलो डरता नहीं है वाव But there's just no follow-up. The Supernova is off to the side. They can't do anything. उसका आइटम भी देख रहे हो काया सांझ बनाया उसने And that is going to be a tier 2 tower that they give up off the death of another Spectre. Almost certainly, yeah. It's hard to imagine they'd want to stay around and try and defend this. They don't even have Supernova. You can't really do that. There's a creep wave coming in, but they're still hanging out here, Virtus Pro. I mean, the gas station's hard at work here, Pugna. You know, Save is just filling up Pure, giving them lots of mana. It's tough on those Centaurs, right? GPK. Connects. FNG. I'm not sure what the goal is, but the LSA connects onto 2. They are going to be able to slip out of there and barely surviving on the Phoenix. But Virtus Pro, they just feel a little lost. And they're showing that they're willing to just jump on anything right now. Oh yeah. On the side of BetBoom if you offer it up. And now they're taking a look at that Tormentor, thinking they want to grab it. Oh, this would be they scan. It doesn't hit Notice right now. Oh, they take that really quickly. Nightfall with alacrity on him. This Monkey King is a monster. Yeah, okay. And everyone just TP's out. Nobody gonna get caught here. Dun, 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 dun. Pick up the Wisdom Rune. Go get another one. Everybody gets a Tormentor. That's what you love to see. The supports are just, guys, come on. We gotta go get that, right? Hello? Hello? No. It's tough out there for Toronto. I mean, that's a great shard, too. Like, he wants it. He's pinging. Guys, get back. Come on. Please, help me out. Please. Oh, no. Somebody's going to die here. Tokyo. Tokyo might die. No. HP. He's going to be fine. Off to the races with another one. This gives us the bouncing magic missile here. Very frustrating to play against. Oh, yeah. Double rounds of those is pretty nice. The only people without it right now on BetBoom team are going to be the Invoker and the Monkey King, actually. Yo, Squadix, though, just bought a Blink Dagger on this Lena. Dude, what's he doing? Squadix is gaming. That's what he's doing, all right? If you hit this move, you don't get caught out, this is just high skill. Very high risk, very high reward, right? I mean, if he goes BKB, he's not going to help. He's going to get swapped. The target he's trying to hit, if he's like going to right-click mode or something, is just going to get decrept or something. He's going to be inside a Wukong's command and just die. The way that he has to play the game does feel just dramatically different from what's been going on so far. There's no doubt about that. And you don't think he wants to get stunned 100 to 0 every fight? No, I don't think so. Okay, we're going to find a different tactic here. But, I mean, they're running in. 5v5 fights feel really bad. Notice, smoke breaks, Save is there. Again, front person in these fights. You got a Centaur, and it's the Pugna that's running. They're trying to outskill so hard. Tries to jump, gets onto one, stun is there. They don't even have enough to bro FNG, though. It doesn't quite look like it. Why Kunkka ko? Oh my god. The egg is down, but they've already lost the Kunkka. And I think with that, everybody is just going to reset. No, never mind. BetBoom, they want to battle. Hunt, who do they find? Stun onto one. They connect now onto Sage. He's going to die. They managed to get out with the rest. I think any fight where Notice just gets completely blown up is going to be a bad time, right? He's kind of the centerpiece of these engagements. He's trying to be the one who's नहीं जीत रहा है भाई GP ये गेम नहीं जीत रहा है दोस्तों possible ही नहीं है not possible and so when he just goes down and they have free reign then it's just never going to work out for Virtus Pro. Well, and for BetBoom now, Nightfall is just so impossibly 93% win probability है ये impossible 7% भी नहीं देना चाहिए next and this Roche was a 20-second spawn. So they are comfortable at this point going in as far as they need to. Yep. To break these teams down. I mean, it's a little stompy, but can we just all agree that we're happy that it's not a Battle Fury Monkey King? Oh yeah, you can buy other items and fight and kill people. It's pretty sweet. I like this. We can see some more of this. Absolutely. Well, and seeing it is just an answer in general, because I mean, for a very long time, this tournament,
we're trying to come up with answers. How do you beat this Spectre? How do you deal with it? And we're seeing some of the results. The Centaur, the Pugna worked together, made the lane terrible, and then just kill the mid of the Spectre, I guess. Absolutely miserable lane, and then never leave their side of the map. Yep. Which is tough. That is actually a very hard game plan. There's a reason why Spectre was working so well. It's because it's proven to be a bit of a difficult tactic to actually achieve, right? I mean, we've had teams like Nouns who have just managed to claw their way through games despite being down in similar situations by finding these heroes like a Spectre for some teams, or for them the illusion heroes, and just waiting it out. But staying aggressive here from BetBoom, and again, this idea of just super clean play. It's every single time Virtus Pro think they have this little tiny moment where they're going to get back. 7% because someone can abandon. Well, it's something that was said multiple times by the panels. If BetBoom have a plan, if they can execute their strategy and keep things non-chaotic, simple, then it's all going to look pretty good for them. And so far, that's definitely been the case in this one. VP, we'll see if they can insert a little bit of chaos into this game. Goes in, down, but it's just not anywhere near enough damage. That's Laguna Blade with just firing up the stacks. That's all. Building, trying to do what they can. Torrent connects. The save heal is there. GPK a little off the mark with the tornado. As tries to force them back with the EMP, but in a similar fashion how they've been playing this game, slow and steady, it's going to win the race for BetBoom if they just keep coming in and right-clicking down these buildings. It's the first set of racks done. Nightfall gets pulled up to the high ground, has the X mark, the connection with that Torrent. There's just no follow-up. They can't do anything. And they're not even hard committing here from BetBoom, right? Save is just chunking away there, throwing out nether blasts. Very safe and secure as the Wisdom Runes return here. One already gotten, the other still remaining there. A bunch of creeps spawn too, so they can go farm those again. Perfect. They do that every minute, Trent. Just in case anybody out there was wondering. That's good. Someone needed to do now. Exactly. You know, they probably were wondering a little bit. यार सिंड्रिन और वो कभी कास्ट करने वाले हैं यार सनस्पैन वो डुओ बेस्ट है But they want to try and find a pickoff. GPK there hits the disarm. Blade mail out, jumps away. He's like, look what I can do. Hey, it's every 40 seconds now, right? That's true. Level 18, so chuck him out there. And once again, BetBoom playing just too tight. You force those types of rotations, it's pretty good. If you can get any type of BKB charge or anything out of that, it's going to be a nice window for them. The problem is that this Venge is still very tanky and has freaking Boots of Bearing like a maniac. It's a good choice. And I think Aghanim's just completed too. Oh, perfect. So now wanting to die here as Boots of Bearing actually कुंका के सामने अच्छा है क्योंकि वो टॉरेंट उड़ने के बाद जो ड्यूरेशन रहता है ना, चल हीरो उड़ा नहीं तो उस पे चल के भी जाएगा ना तो स्लो होता है, तो वो जब भी टॉरेंट स्टॉर्म यूज करेगा तो बूट्स ऑफ बेरिंग दबा के भाग सकते हैं फटाफट, अगर पकड़े नहीं गए तो अच्छा है. If he starts stacking up these double edges, I don't like. They don't have enough damage to even tickle him. Yeah. I don't know what you do. It's like the most damage is probably going to be FNG, but I mean he has not been able to get the sun rays to full duration with the sun ray going out. I'm pretty worried about this. As they get set to head up towards high ground, DD about to wear off for Nightfall. And on the opposite side of the map is GPK. I mean, FNG has like 10 mana on the high ground. If that Boundless Strike hits him, it's not looking good. No. Oh, plants a ward from up above here. Pure does not have the gem right now, so they don't actually see this. So a bit of vision. Oh, they put down a sentry though. Now they're going to see that ward off the side here. Pure passes that tree. Just in a moment, jump in, stun immediately there. FNG trying to heal. The double force staff gets him away for a moment. ओ मर गया था वो, बट ठीक है. Kills him off. Kills the Pure, not the GPK. All right. Yeah, that one hurts. But Wukong's down. With Wukong's down, maybe they can make something happen here. Although onto him already, couldn't get the egg off. FNG is going to die. Oh, Pure, he's just in there. He's just waving at. क्या सनस्ट्राइक से स्वैप किया और फिर मारा मर गया रे वो, नहीं तो सनस्ट्राइक से मर ही जाता था. Looking that way, I'm not gonna lie. They did manage to bring down the Monkey King one time. Buyback comes out from Kunkka. Can they find any? ए हम लोग ने ये गेम का प्रेडिक्शन किया क्या रे गेम में? कि भूल गए हम लोग. Let me check. भूल गए शायद से हम लोग. ये गेम का प्रेडिक्शन नहीं किया दोस्तों हम लोग ने. Sad boys. क्या कर रहे थे यार अपन?
ये किया ही नहीं अपन. This is not good enough from VP. This is not good enough. अरे यार प्रेडिक्शन करना चाहिए था यार. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वाला करेंगे. Standing tall, pure. They just have to walk away from him at this point. Oh, he wants in. He's still totem. The chase, he's so big. 6,000 HP. And with Lina dying, SquadX goes down. The continued hunt. I mean, it's just, they don't have an answer. Certainly can't find one. And again, save just fueling up here. They don't even feel comfortable dealing with the creeps. They got to go heal up. Nightfall, Alacrity, another Wukong's command will secure the second lane of racks for BetBoom team. And start heading over towards the third. With 33,000 gold lead, Virtus Pro just have not stood a chance in this one. There's always concerns about regional rivalries, of course. You know, we've often see these upsets when you're coming from the same region here, and BetBoom perhaps a little bit subject to that already by Nine Pandas, of course. Oh yeah. If it's maybe not call that one as much as an upset, but ये जेम पड़ा है रे उधर. want to come in here today and ensure that it doesn't. जेम क्यों नहीं उठा रही ये लोग? Absolutely. Take down their regional rivals here in what's looking like a very clean game number one. Oh, for sure. And I mean, going into game this one, like I was wondering, like if it felt like the battle was just going to be Spectre versus everybody, but who? Exactly. There just hasn't been an opportunity. It felt like no options and no ways to take the fights. A smoke up for what feels like it could be the last one. BetBoom repositioning themselves. Was that another Radiance queued up or something? Maybe Nullifier. I think it's probably a second Radiance. अरे जेम क्यों रखा है ऐसे भाई? Yeah, it goes for the disassembly here, so okay. Nullifier done. And that's going to help you cut through these plays here from the Pugna. Waiting up on high ground. And Radiance returns. BetBoom together. SquadX caught for a moment and again pops the BKB, tries to escape, but अरे साज Pure chasing, punching, fighting, प्योर ने तो घुस के मार दिया भाई इसको. get away from the Pure Centaur, and well, Virtus Pro hoping to do anything here, but they just don't have any damage at all. क्या घुस के फोड़ा है ना प्योर ने. The second Wukong's does manage to get four-stepped out of trouble there. So they'll reset the fight, but with another death on Lina. I mean, they didn't even want to kill Toronto Tokyo because it would just refresh his abilities, you know? And then you just get chain stunned and someone else dies. Oh, it hurts. And, I mean, it's just destruction. All right, okay. Running into the fountain. I mean, you got to be a little careful about the Kunkka there, but it's not looking like it's an issue. The Torrent, the tidal wave, the Sunstrike's there. I'm expecting another voice line here soon from Pure. Oh, yeah. There's probably a couple. It's pretty much everybody. We have both sides there, spamming the voice lines here. Virtus Pro, they're looking to put this game behind them as well. Absolutely. BetBoom, they run in, they find another stun. Stampede, notice, tries to get away, not going to happen. The damage is just not there at all from Virtus Pro, and, well, they did manage to get Pure into the fountain. Hold on a second. He ends up going a bit too far. I like that. Pure is going to die in the fountain. Maybe a little bit of cathartic energy from, our own experiences getting fountain farmed. Those two catapults, though, they're doing work on that Ancient. Oh, it is indeed. Until they get hit by Fire Spirits. A couple of tips out. Oh. FNG, careful, buddy. So they're going to back out again. Third Roche is up. That one has the Aghanim Scepter on it. But with mega creeps and no towers remaining, it is it's going to be a bit of a tough hold for V. अरे यार कैमरा बंद करके चेयर पीछे लेके आराम से बैठने का मन कर रहा है. Okay. ओ भाई साहब नींद आ रहा है ब्रो अभी. बहुत नींद आ रहा है दोस्तों. पता नहीं सो जाऊंगा मैं ऑन स्ट्रीम ऐसे लग रहा है. बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है. Well, they're going to head in now. Still in position. They have Kiritich back at home, trying to deal with the creeps, while BetBoom are setting up to take Roche for themselves. Now, Sunstrike comes out. Get the D1. आवाज सो गया था. Tokyo drops one of his own. Stun is there.
Laguna Blade, half HP. You don't want to kill this Venge though. FNG runs forward, drops the spray. But like we've seen many times, just Twitch पे किधर कुछ चल रहा है? That's even without the Stampede. Like it's already नहीं चल रहा है कुछ. these fights as you can see, but imagine if the Stampede is up and available. Probably what made them feel like they could actually go for this. वो TI Twitch का बोल रहा है तू? नहीं वो नहीं पता है भाई मेरे को. Oh, he's chasing. Gets a little bit of separation, but 2 already dead, 3 dead, and now time to run it down lanes. Also, creeps are hitting the. लाइट बंद किया तो मैं दिखूंगा नहीं. देखना है क्या कैसे दिखते हैं. जी. डायरेक्ट अंधेरा आ जाता है. उससे अच्छा लाइट भी बंद करता हूँ और मेरा कैमरा भी बंद करता हूँ दोस्तों. बिना कैम का देखते हैं. बंद कर रहा हूँ मैं. Why the Invoker was being mentioned as one of his signature heroes here? I think GPK, I think Storm Spirit, I think Invoker. GPK. Nice combo there with the Storm Spirit, so the Invoker comes out at the end of this draft and just absolutely cleans up this game. Fantastic performance from GPK for sure. Right, well, the recognition of like what they needed to accomplish. This is what you get when you get last pick. They see that Lina, they say, all right, well, we have what we need, and feeling a little bit of good stuff coming out of the booth. BetBoom team come away with the victory, and the crowd appreciating, of course, ex-TI winner as well. As we head on back to the panel, let them break down the action. It's game number 1, Virtus.pro BetBoom. They take it, this Pugner. We wondered if they'd have questions for him in the later part of the game, but the Invoker last pick as well, Effie. You predicted it, and it did damage in this game. It did numbers. Yeah, I mean, if there's one thing that I've learned watching GPK throughout the years, it's that you cannot give him his signature heroes in a game where they go unaddressed. And honestly, I feel like it's just due to the genius of this Batman build that Monkey King really threw a wrench into their plans and forced the Kunkka flex into the Lina pick mid, which then enabled the Invoker pick. But overall, it was not just हाँ वो पता है. जोएल कुछ नया इमोट है क्या? impeccably well on his Monkey King. He was the core that carried them through that early game. They rallied around him. He had that beautiful Luca's लिखा हुआ आता है triple kill. जिसके पास एक्सटेंशन नहीं है It उसके was the पास. first clean initiation that he got that game, but Nightfall just turned it around completely. Yeah, I think it's one of those differences as well. When you have the Monkey King at minute 19, he's got Echo Saber that disassembles for BKB. सम्राट किलविश बघितलंय का तू? खूप ओल्ड स्कूल है भाई जयंत तो. Blade Mail, and like अंधेरा कायम रहे. Just the fact that you have this Monkey King constantly leading the charge, joining the team, and yes, lanes went so well for BetBoom that it just amplified this aggression that they were trying to bring, right? Like, you see the Centaur Pugner lane go well, you see Nightfall happy to leave his lane, happy to jump around the map and apply this pressure, and VP, the entire game, it just felt like they were reacting. We never really got to see them successfully make a move of their own because of how well BetBoom were just dictating the game. I mean, the very, very early part of Virtus.pro's game wasn't the worst. I know that BetBoom are a very lane-focused team. That's what you guys have been telling us a lot here. But for Virtus.pro, there was a little bit of hope in the lower lanes, like the side lanes down there in their off lane, in BetBoom's safe lane, that kind of gave some glimmers of hope, Owie, right at the beginning. Yeah, honestly, I thought VP was doing better than expected in lanes. Like top lane, they already knew they were going to lose. Lina had a pretty good lead on Invoker mid. And bot lane, they for some reason, like the Conquerors was yes. 20 CS. School से आने के बाद वही देखते थे. Correct. Their lineup was set up to do. Their lineup is very kill heavy. You want to set up any opportunities for Spectre to join. Haunt is a really low cooldown now, but we saw like they made one play to bottom. It looked pretty good to me. They were starting to go on the Monkey King, stuff like this. But they ended up like trying to go for objectives instead. They tried to chain their kills into objectives when they should really just be trying to hit their next timing, going for more kills. And as soon as you lose one fight against a BetBoom lineup, I feel like your lineup doesn't really have that many options. I think in the next game, they're going to look to either have more active supports, like Phoenix Scripture are a bit awkward together, or like better cores for them to play with, because Lina doesn't offer anything to the supports, and Kunkka can't just set up everything. It's too like telegraphed that only one hero can do it. Well, that Kunkka, we weren't really sure where it was going to go. We thought mid was going to be it, that they were just going to run it there no matter what the matchup was going to be, and build around it a little bit differently, pick themselves a different carry. But the Lina ended up going mid. That was their last pick. Did you feel the effects of it, Effie, or would you have liked that Kunkka to stay there, and they could have picked something else when it comes to offlane? They felt the need to flex the Kunkka just to not get owned by that Monkey King. Maybe they thought that the Kunkka was too important for their tempo, but I mean, I don't think we necessarily got to see Lina play Dota because it became just a really heavy snowball game from BetBoom after one play went really wrong for Virtus.pro, which was pushing that mid tower. So I don't think we can get a really good read on Lina in this kind of situation. They just didn't have the initiation to come back into the game after losing the net worth lead.
right? But because of that, I want to commend Toronto Tokyo, because I feel like the smoke usage in that game was the reason why they were able to get that net worth lead. Like the first double smoke mid to defend that mid tower, into the 3-man smoke that got the Spectre kill, into the 2-man smoke that they went into the triangle where Monkey King was setting up for them. I mean, they got 10k gold off of that, so that was really excellent shot calling in game. I mean, they're great points, a lot of highlights, especially with the smoke plays there. Second game भी ऐसे मारने वाला है भाई. Don't worry, we got Purge, he's got clips, he's going to break it down even more for us. Bedboom second game same style में मारने वाला है. जल्दी मारेगा इनफैक्ट. But execution is even more important, and that's what we saw in this first game. भाई तेरा आवाज इतना कम आ रहा है ना. But they transitioned it okay into some tower pressure in the clips here. They got this great kill. वो तो मेरा भी है prediction. While he defended tower. अरे वो पहला गेम कौन जीता? Bedboom. Bedboom जीता. वो बंदा हार गया मतलब. Yes. They basically disabled the cover here, putting him in trouble. Lina thinks, oh, I can save this guy. But Unplayed heroes at TI. Abaddon, Anti-Mage, Dragon Knight, Draw Ranger. भाई Draw Ranger TI में खेला नहीं है अभी तक. Ember Spirit. कोई सरप्राइजिंग है रे heroes. Husker, Lion, Mars, Meepo, Shaman, Sladar, Timber, Ursa. Ursa भी नहीं खेला है भाई. विंटर भी नहीं खेला है. इंस्टा पे Dota 2 वाला पेज है, ऑफिशियल पेज. वो लोग ने डाला. स्ट्रीम पे भी देख सकता हूँ ना, वो लिक्विपीडिया पे दिखता है. लिक्विपीडिया पे दिखता है. स्टैटिस्टिक्स में जाएगा ना तू. अनपिक्ड हीरोज इधर दिख रहे देख सामने स्क्रीन पे. Begs the question then, Aoi, after that mid-rotation fails for his Virtus Pro, what in a hindsight, like अभी देखना चेंज होगा ना. How would you have come back into this game? How would you have given your Spectre a little bit more space? I think it's a bit harder with the heroes they have. Lena's sort of a useless hero unless you start like you have the space for it, and Spectre I feel like is a bit of the same. But I think they had to keep going bottom and just trying to force reactions there. You have to give the Spectre the opportunity to like choose to join or not, and if not, you're just going to force some reactions, and hopefully you only lose a couple supports on the way out. I think it's like not PL कोई ban नहीं किया है. these invisible invokers and monkeys that are very mobile. If you're IO unbanned है रे TI में surprisingly. Reaction so that you have space. You can't just like hope they give you it. IO pick नहीं किया कुछ लाग ज़्यादा लोगों ने. Pick हुआ है, ban नहीं हुआ. ज़्यादा लोगों ने मतलब. पर की तरफ तो धोखा भी नहीं है लोगों ने पता है. उधर आंख तक नहीं डाली है. Virtus Pro has lived in the shadows of all the other Eastern European teams. They finished 4th every single time. They have been like one series away from getting to a major, but they've never been good enough. But we were not proud of the result. Not a whole lot left for Virtus Pro. They have looked so good this entire time. हर एक टीम में एक तो टिम्बर तो दिखता ही है. हाँ नहीं ये साल नहीं है. Even if you lose some tournaments, it's not the biggest part of your life, and being a competitor at any tournament is good enough for me. So I'm like, okay, thank you, mom. That's a good thing that I can say to myself to keep going after the loss. मार्स भी पिक नहीं हुआ है और सब विंटर हुआ है. वन अभी तो डिसेंट सपोर्ट है विंटर. इतना भी अच्छा नहीं बट डिसेंट है विंटर भी. Still, I love Lion pick नहीं हुआ है. We got Virtus Pro and Entity here, and I want to just straight up hear your thoughts. Skill is not something you grow up just to be skilled at Shadowfin. Skill is the thing that you need to bring to official match, that you can repeat what you learned before. खत्म. टाटा बाय बाय. They control the map for what feels like 40 minutes. And it's not only that we played a lot of Dota to become good, but then I realized that crucial parts were missing is also a psychological thing, how not only to win now, how to improve with time. This was a really nice gameplay. Honestly, I have to give and then suddenly something started clicking that, okay, it's not only about, to play heroes, it's also about to build a team, to move them in a good way. वो कौन था ये मीपो स्पैमर जो अपने लॉबी में मीपो खेलता था? भाई 2 प्लेयर थे मीपो वाले अपने लॉबी में. मैं भूल गया नाम. बेडबूम 1 भाई शाह. बेडबूम क्यों लॉस्ट? Keep talking to yourself that you can do it. शाह ने पैसे लगाए थे क्या? शाह ही लग रहा था वो आईडी से. पता नहीं. तूने ही पैसे लगाए थे क्या रे? 10,000 रुपए लगाए थे. What does it take for a player to be a TI winner?
I mean, I'm not a TI winner myself to be the judge. I'm still trying to figure out 9 the formula. पंडास खेले ये बार टिंकर पिक नहीं हुआ ना ही बैन हुआ. You will never be a TI winner. हाँ ना. 9 pandas though. I don't gamble, bro. What the fuck बोल रहे हो? Oh, sorry. What's up? मुफ्त में नाम लगा दिया किसी का. Right on time. That's so sweet. He talks about his mom, all the motivation that she's clearly giving him, especially out here on a big main stage. And she's calling him, checking in, making sure what he's doing on his off days, in between groups, playoffs, in between playoffs and main stage here. But it's a hard equation in the top formula. Let's go. We can ask you, Howie. You would know all about it, wouldn't you? इधर है भाई मेरे को वो स्क्रीन दिख नहीं रहा है. I think it's a lot of hard Jason work, Jones. but honestly it's a lot of luck. Like you go into a tournament and you know you put all this time and effort into boot camp for tournament preparing, and sometimes you just have to be a bit lucky that you're showing up on form and you're able to like perform what you practiced. You know what they say about luck? It's when opportunity meets preparation. Yeah, that sounds true. Sounds good. I'm glad it resonates with you as well then. Look, Virtus Pro are going to need a little bit of luck for themselves, or at least a much better draft than what we saw in game 1 for them to be able to. I put 2 months rent. भाई तू बंद कर. ये सब बंद कर bro तू. Regional team of yours to lower bracket and then Gambino, Van Cleef. Team of yours to be eliminated from TI here. Yeah, that's where the mental क्या? recuperation aspect comes Gambino in. हाँ. Gambino is Van Cleef. Good job, job Shah. Gamble वगैरह मत critique करना of, दोस्तों. after the regional qualifiers, and they basically asked FNG what his motivation was after they qualified and how he feels about Dota overall. He said he doesn't find the game very fun anymore. He's been playing it for so long that it doesn't excite him, but competing is what excites him. Competing is what pushes forward. The idea of potential unless players like that, top they can 10 be में आ very जाओ. discouraged after वो भी losses. split होते हैं That he क्योंकि has a support अगर system, you know, from his mom and समझना whoever else. 3 लोग के same Makes me point feel है तो a little तीनों में bad for split them हो after गए. this loss. That's why you surround yourself with the young players. TI चल रहा है Like if दोस्तों. he's losing that, you know, that गलत love जगह पे to- मत maybe he's still discussion got love, लेके but जाओ. maybe that's same level. Like little fresh talent, they're going to be every day nipping at it. Like let's do this, let's do that, let's do this. And then Twitch feature wise अच्छा है but पैसा कम देता है bro. What really needs to be done, and of course that's what we'll be talking about Imagine now. number 1 पे कोई गाड़ी और 1 करोड़ जीता. They're going to need to leave 4 with number 1 है. the tenacity of the young guys to find kind of that secret sauce to actually Offline muscle up बात against करेंगे. that Offline discuss कर Yeah, a लेंगे. little bit of an insane concoction there between the experience and the अरे tenacity. वैसे On जो the content देखते हैं ना, अरे side of कितने Bedlam, time से they're one more content game नहीं away देखे. from making it to top 6. वो So अपना how do you keep yourself calm? And are you hoping that you're going to get the same heroes, the same playstyle? Like, what's नहीं the यार plan going into मैं कल ही देखा हुआ है बहुत हंसा मैं बहुत हंसा bro मैं. I think mostly they should be thinking like, oh, our plan coming in is working. We don't need to make any significant adjustments. We can maybe top order something सोडा लेमन small. पॉप You don't पिज्जा want तो to be ठीक learning है from a match, तेरे but you can make, like, पैसा गया oh, I 10,000 want to bro. draft a bit more for this. I think they saw that in this series they had a lot of pressure in the offlane, उसने and they मैं should तू feel ले really सकता happy था with that to TI continue का with that as their game plan, and Aegis. just you know just look at the counter picks on the other lane and making sure they're stable. Do you think some picks are going to be Post changing gla- up post because gla- we had gambling Nurta, clarity. Dazzle, the Storm, which is a very targeted one on the side of VP? Should they be staying Oh pretty my stable? god. I think VP's first phase bans are good. Post-gambling I think their second clarity. phase bans were honestly a bit weird for their game plan. They banned out the Willow and the ENG, which are like support bans because बहुत it seems सही like चीज होती they're है. I don't know, Nah, just, nah. like afraid of the offlane of Betboom, but they ended up giving them Pugna Center anyways, which is probably one of the strongest lanes. I feel like if those bans were targeted at making their mid and offlane, the heroes that they're going to pick on the second phase easier, then the draft would have ended up a lot better. And as soon as they picked this Conquer and there was a monkey in the pool, like, साला ये लोग Betboom was हर एक super मैच eager. Like, they पैंगो were को probably जितना भी नर्फ really करे happy साला that they saw आता ही है Conquer मेटा monkey, में. that they're able to flex for खेलते हैं stuff. लोग. पैंगो की कितना मेगा नर्फ हुआ है पता है फिर भी होता ही है. वही अरे डिजाइन हटा दिया. वही रख दिया फिर भी. ऊपर से डैमेज इसका कम किया फिर भी वैसा ही है. भाई बूस्ट सेकंड भी लगा रहे 8,000 किस पे लगा रहे हो भाई पैसे भी से मत लगाओ इससे दोस्तों. देखो तुम लोग को पैसा ऐसे भी वेस्ट करना है ना किसी जरूरतमंदों को दे दो कुछ अच्छा तो लाइफ में मिलेगा तुम लोग को. अरे ये एजिस ले लो. हाँ ना पैसा देके वो एजिस ले लो मार्केट में बेच रहे लोग. And on the other hand, ऐसे हवा में क्यों उड़ा रहे हो. that when Bedlam played versus Talon, they really kind of या फिर exposed इन्वेस्ट how कर लो long रे these games can go, or इधर how तो उतना पैसा लगा ही रहे तो. the aggression of Bedlam when Pure isn't on those 8,000 के short छोटा cooldown amount है क्या. initiators. I really feel like it makes a difference if you're putting Pure on a hero that
can start the fight for his team. If you're taking away these centaurs and these spirit breakers from him, then you're already in a better place. Gamblers win in the long run. After that laning stage. Ah, no. I really think that They'll always lose in the long run. Never giving this centaur away. एक बार अंडरवेयर निकल जाएगी ना They'll always lose in the long run. Rebel was a hero bet boom bad for themselves, so now it really does have the question that is there anyone else hero-wise that could hit similar things like that if Virtus Pro were to change up their bans चलो and थोड़ा देखते हैं take away content. the centaur as well. भाई साहब कोई गेस कर सकता है कौन से कंटेंट की बात कर रहे हैं? खाली सर जोएल लिख के ट्विच घुमा दो। सर अकड़म तिकड़म करके पीएसजी एलजीडी को जिता दो। एक मिनट कुछ तो गलत हो गया। हो गया बराबर। किधर है भाई अपना सर्च द ग्रेट खली। दोस्तों पता है क्या तुम लोग को कभी खली का इंस्टा पेज देखा है किसी ने? चैट सबसे ओपी कंटेंट, मतलब सबसे ओपी कंटेंट। मैं वीडियोस की बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम लोग को बस कमेंट दिखाऊंगा इसके। नहीं ये नहीं रे, ये हो गया है। अभी रिसेंटली मैंने कौन सा देखा पता है क्या? वो बॉटल के साथ खेलते रहता है। किधर है भाई वो? रुको यार जस्ट नहीं, वो मेरा पीसी लैग होगा फिर सब जगह स्ट्रीम करूंगा तो। दोस्तों ये देख रहे हो, ये आदमी ये पुशअप्स कर रहा है और फिर उधर लोगों को कमेंट देखो, सर धरती को और नीचे ढकेलते हुए। ओह माय गॉड, सर आपकी शूज की लेस देना सुसाइड करना है। भाई कैसे? ओह माय गॉड डूड, सर मेरे प्लॉट पर आकर पुशअप मार लो बेसमेंट। बेसमेंट बनाना है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये आदमी कैसे रहे? वो बॉटल वाला है ना, मैंने कल किधर तो एक ही देखा, वो ऐसा बॉटल से खेलते रहता है वो और बॉटल गिर जाता है और लोग, ओह माय गॉड, रुको ढूंढना पड़ेगा मेरे को। वो सबसे खतरनाक था। मेरे को ये भी नहीं याद आ रहा है उसने कपड़े क्या पहने थे। साइडली पुराना वाला था कि क्या है, वो रील्स वाले सेक्शन में सजेस्ट हुआ था। हिस्ट्री में जाके देख लो ना एक बार। अरे लाइक नहीं किया, वो रील्स में बोल रहा हूँ मैं। नहीं क्रोम की हिस्ट्री में बोल रहा हूँ मैं। नहीं पीसी पे नहीं देखता हूँ, मोबाइल पे देख रहा था मैं। सैड यार, नहीं मिल रहा है, छोड़ो। इतने ओपी कमेंट थे ना उस पे, कुछ तो बॉटल गिर जाता है उसे हाथ से खेलते खेलते। सर आईफिल टावर को लेके खेलो, ऐसा कुछ तो था बॉटल की जगह पे, कुछ तो मैड था। सी लेवल राइजिंग बिकॉज ऑफ हिम। बाप रे भाई, ये सच में तो दबा के तोड़ सकता है क्या किसी को? ऐसा कर भी सकता है। आदमी खतरनाक है। सर रावण नहीं कुंभकर्ण हो। नहीं कुछ नहीं। रिस्पेक्ट बटन फॉर खली, इसमें कुछ नहीं दिखाई रहे। बॉटल वाला वीडियो नहीं मिल रहा है यार दोस्तों, कैसे ढूंढो बॉटल वाला वीडियो? परफेक्ट वीडियो था वो बॉटल वाला, पता है। लिपसिंग 0%, हाथ का कुछ तो 100% लिखा है। सर दशहरा देखने मत जाना, रावण की जगह आपको ही फूक देंगे। भाई इतना बड़ा है ना ये आदमी। हाँ सर, अपने हाथ पे प्लॉटिंग का बिजनेस कर लो। भाई वो हाथ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं सर, बुर्ज खलीफा से खेलते हुए। भाई कैसे हो सकता है रे इसके, ये लोग कैसे सोचते रहे? कॉमेडी नाइट्स विद कपिल खली सर, कमेंट सेक्शन इज, हाँ वो तो है। आपकी बीवी, ओह नहीं 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 नहीं, ये गलत वाले नहीं पढ़ने चाहिए दोस्तों। यस सर अपना टी शर्ट दे दो, आसमान को उसका कलर लौटाना है।
आपका फोन देना टीवी देखने फोन इतना बड़ा ही रहेगा क्या उसका? ओह माय गॉड सर अपने हाथ दे दो, कानून के छोटे पड़ रहे हैं। ओह माय गॉड सर आप सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स से कंचे के दो। ओह माय गॉड डूड Only for PM. यू आर ऑन। हाँ यही था रे बॉटल वाला, देखा ना अभी मिला ना, वो बॉटल हाथ पे बैलेंस कर रहा था। Only for PM. Yes sir. Only for PM. Next PM. कैसा है रे आदमी? उसने भी एम्ब्रेस कर लिया बट ये सारे मीम्स। नहीं वही ना, वो टिल्ट नहीं हो रहा है इससे। हाँ ना, डिलीट नहीं कर रहे, ब्लॉक नहीं कर रहे, करने दो। वो भी लाइक मजे में ले रहा है, ऐसा नहीं वो सीरियसली ले रहा है। हाँ वो मजे ले रहा है इसका, वही तो अच्छी बात है ना। भाई कैसे लोग रहते रे। वो भी ऐसा नहीं कि एक टाइप के कमेंट है, सारे अलग टाइप के कमेंट है। सर अपने प्लेनेट पे जा रहे हैं करके बैग के साथ है तो। ओह माय गॉड साहब भाई लिटरली ये सबसे ओपी चीज है। ये क्या आंख है भाई, इतना गुस्से में देख रहा है भाई आदमी खतरनाक है भाई आदमी। सर खड़े होके प्लेन में छेद करके सनरूफ बना। इतना बड़ा है क्या भाई वो? ओह माय गॉड सर सारे प्लेन का ऑक्सीजन एक सांस में खींच लो। ओह माय पीछे वाला दीपल कलल जाए छड़ा। लग रहा था वो एक्चुअली, देखना। ओह माय गॉड ड्राफ्ट चालू हो गया दोस्तों, ये बंद कर देते हैं। Also need to deal with Spirit Breaker. This is here you need to shut down in laning phase. That's the key thing. They go Oh भाई आदमी खतरनाक है। nice slow, some good fears, pretty good early aggression for sure. But for me, when I see Spirit Breaker, you need to shut this hero down inside laning phase. Okay, BB ने Spirit Breaker first pick उठाया, let's go. I'm farming my Midas. If they go for the Octarine build still, it's still a lot of just backwards logic. Delay the inevitable of ये him. लोग मोर्टा को सपोर्ट फिक्स करके बुलेट सीकर उठा सकते हैं। There was a video of some guy commented, बाप रे ये सब नहीं पढ़ दे, ये सब नहीं पढ़ सकता मैं। क्या some guy नहीं मत प्लीज इधर पढ़ना मत। Okay. If you can put pressure on here in this like these teams matchup, I think VP becomes a way ahead. I think more Thanks Akshay. Whether it's carry, whether it's 4, the 4 is really good at rotating to the safe lane, and the carry's like Slappy झोपला का है? I mean we've seen like Spirit run some Tusk or Morta. I don't know, you have minus 50% level 2. एकटा से? So I think this is not a bad एकटा trade से? for VP at all right now. कार्यक्रम चालू है वाटतं तुझा। I think in terms of gameplay, when I mentioned earlier that Pure on Centaur, Pure on Spirit Breaker really simplifies the game for पण उद्या Valkyrie, नक्की it आ, just enables बोलू। them to fight on their own terms उद्या बोलू, instead of kind of परवा being करू। consigned to the enemy's timing. अदर When you टच pick the पॉइंट Spirit डाल Breaker रहा for हूँ। Bedlam, it's suddenly opening कल up मैं the शायद से ability हैलोवीन for पार्टी के लिए जा रहा हूँ something दोस्तों। like a Storm Spirit from mid lane. And Ali mentioned अगले earlier पार्टी ले how चल रहे। often Bedlam have been running the ठिकाना। Storm, but it is something that अच्छा। Storm gets gunned down. हाईवेज ना ठिकाना। ये तहसील तरी है? lanes that can अरे play Spirit Breaker, because if he बोलू doesn't have the उद्या। strongest lane, if they're ठीक है। setting up for it from now, he just needs to be able to play with active heroes, specifically. 6000 लगाया मैंने बेडरूम पे। I think Channel every points, time we've talked not about it, money. it's pretty much been the ban straight afterwards when we mentioned that story. Channel points मेरे पास 13,300 है। Still in the pool. Virtus Pro savoring it. 12 वाला ड्राफ्ट मेरे को रिस्की लगता है, पता है सच बोलूँ तो। Obviously not 12 मिलो है मतलब तो। I think they just need to make sure they have a better exo target. Last game they Mireska has really right. made the Grim stroke work. And they also sort of picked it into like a theoretically losing lane. I think this hero is strong when you're the one who's like running your opponent some small kill squad, 2-3 heroes, and you can really just cast your spells and let them go in. I like this Willow. 8000 VP पे लगाया। क्या 8000 क्या लगाया भाई? The Muerta flex in VP's draft is honestly addressed by the Willow flex. Like Willow conceptually, as a carry flex, plays very well. Virtus Pro, Undying? You just press Shadow Realm, right? And you're on a lower cooldown. ये and क्या he is उठाया? to be effective. But as the game progresses,
Muerta is a much stronger hero in terms of sheer. दिखा दिया वो लोग ने कि Undying, I mean 12 कोर है. She can play into it, and the flex is still open. That's what we saw in the BetBoom Talent series game. एक बार थंडरा नाइन का I think TI में स्पिरिट ब्रेकर देखा भाई डिस्पर्जर विस्पर्जर भाई मिड खेलता था वो कि तू 4 वाला बोल रहा है अभी वाला हो डिस्पर्जर बनाया फिर क्या क्या नहीं बनाया आदमी खतरनाक है they feel like they have to ban the storm and then they feel like they have to take the Grim because they don't want to give them Grim Spear Breaker. 6 सेकंड के आसपास का तो चार्ज कूलडाउन रहता है फिर pick actually for VP. Like it's a lot better for Spear Breaker. You stop the charge with the Brambos. You're a decent kill threat on him. Just feels a bit more awkward for him. 12 पे लोगों को लिंकन बनाना चाहिए ये नलिफायर और यूल्स ब्लॉक हो जाते हैं फिर super potent into any aggression from VP. You're playing into high ground tombstones. You've got, like we already mentioned, the defensive capabilities of Willow. And then the lane as well. Spearbreaker plus Dark Willow, it's quite an aggressive lane. If you step up and भाई 4 सूट्स मिलते हैं ना 12 पे तो खत्म है. There's not a lot of combos. Literally खत्म है गेम. Do you ever feel that your gameplay is same to any TI level player? No bro, I'm not there yet. For this just formidable safe lane once again. अपने लॉबी में खेलता है लानत करके एक है. वो तो TI level से आगे वाला player है वो. We feel that he is very good and he can beat Thompson in 1v1 mid lane. Spearbreaker lane sort of hard. Like I don't think you have any chance to really fight back into that. No, yeah, और लानत टॉपसन के साथ डुओ लॉबी भी खेल चुका है. It's a playable. लानत का ये याद है क्या हस्कर यस खेला रे उसने मैं उस गेम में था मिड खेला उसने कैसे तो और खेल लिया उसने वो आइटम चॉइस देख के मेरे को डर लग रहा था स्टार्टिंग का अरे उसके कॉल भी खतरनाक रहे थे अरे तुम लोग जाओ जाओ टेंशन मत लो मैं कर लूंगा को गेम का याद मत दिलाओ प्लीज लानत सामने था ना लानत मतलब खलिया अपना तो सामने टिंग करता शायद हाँ मैं वो गेम कितना मतलब ये किया रे फिर भी हार गए डेंडी को लानत नहीं ट्रेन किया है करेक्ट PA without boots will be legendary भाई PA तो अलग है PA Flark without boots and Ursa without boots Juggernaut without boots Tiny Battle Fury माना जंगल लाइफ स्टीलर बैटल फ्यूरी और क्या था और अनगिनत है उसके अभी याद करेंगे तो बहुत इरिटेट हो जाएगा Okay, one more time GP के इन्वोकर let's go and you also have a means to pressure whichever carry comes out from BetBoom because the second Doom Grim get levels they can just run down the carry. There are very few carries that can survive. Spirit Breaker carry खेलेंगे क्या? मजा आ जाएगा. अरे मैं तुम लोग को बताया कि नहीं मैं एक बार स्पिरिट ब्रेकर खेल रहा था कैरी बहुत पहले पता है ना बहुत पहले जब ब्रोकन था स्पिरिट ब्रेकर आई थिंक एग्स बनाते थे तो सामने पीए था राइट क्लिक बिल्ड खेल रहा था मैं 45 डैमेज पैलेट लिया सिल्वर एज बना के एमके भी बना के 2 मूनशॉट बनाया बेचारा सामने वाला पीए हिल ही नहीं पाया So this could be like what BetBoom should start looking for. They even have the Invoker. मारने में मजा आएगा ना वैसा अटैक पे बहुत ज्यादा मजा है तभी राइट क्लिक पे खेलते थे लोग ज्यादा And with the Sunstrike and the Tombstone, Luna ban like sort of overwhelm this more to Tosca lane that's supposed to be really लोग लेट गेम असॉल्ट क्यूरास बनाते थे पकड़ के मारते with their supports where if the lanes do go well for them तो पूरा मैजिक वाला try and break Luna TB that's what we were kind of lacking that previous game they had very kind of एक दोनों को काउंटर करते हैं मोरता so this is a development from रेत for sure and 2 big carry bans for VP Luna Terrorblade when you have Doom off lane रेत किंग उठाए लोग ने with the Undying again you're expecting free farm for this hero so taking out some of these bigger statement carries for BetBoom's Red King good old Wraith King okay this is the traditional historic Doom counter right you get doomed you फिर कौन का उठाया अभी VP ने तू स्पॉइलर क्यों दे रहा है पीछे था रे मैं easy spoiler इस बार शायद मिड खेलेंगे उनका yes Quadix when you have Spearbreaker and Wraith King in your side lanes इन्वोकर के सामने को उनका अच्छा रहता है then you're expecting Invoker maybe to fill in the लास्ट हिट की लग जाती है ऊपर से आजकल कॉस्वेक्स खेलते हैं वो हील भी नहीं होता है ना हील भी नहीं होता है डैमेज भी नहीं रहता है a little bit more points of aggression just because Tusk and Grim they can do a lot of things in this map and actually seek a lot of engagement भाई बहुत chaos रहने वाला है Undying के zombies उसके skeletons बराबर बोल रही है
Yeah, I completely agree with that. I think Boost second. But फिर late game में लोग का बहुत strong रहेगा. VP का. उनका भी रहेगा वैसे. क्योंकि उनका refresher Aghanim's आएगा तो बहुत cancer रहता है. The skeletons are really strong now. Like they keep buffing them, and I think with Undying, like they have insane kill potential when they hit level. Draft समझना भाई बहुत मुश्किल रहता है. मेरे को 240 हर्ट्ज मॉनिटर पे खेलना है यार, कभी नहीं खेला. डोटा में नहीं फर्क पड़ता है. वैसे FPS आते नहीं है इतना ही. 60 to 144 बहुत फर्क पड़ता है. 60 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज के बीच में. उसके आगे उतना नहीं फर्क पड़ता है. भाई मॉनिटर कौन सा है तेरा? Oh, Gigabyte. Alrighty, there we go. We know नहीं, what they Samsung. want to do. Let's see if they're going to be able to do it. But first, it's Bet Boom's coach. Thank you so much, और वो 27 इंच है. मैंने 1440p है ना. Great draft that we saw in game 1. Excellent draft in game 2. तो 2K is 1440p. Correct. I mean, very reminiscent of the road to the international. Have you guys learned anything since that road? Has your opinion changed on any hero? Отличная первая игра, классный драфт во второй. Вы опять используете Bristleback и Dark Willow. Это те же герои, что вы использовали в групповой стадии. Вы что-то новое для себя вот за эти дни вынесли после групповой стадии? Slacks भी स्टार्टिंग में बहुत मोटा था, फिर बाद में पतला हो गया. Конечно, мы с каждой игрой выносим для себя что-то полезное. भाई क्या लिख रहा है भाई तू? ये संतरा कौन है बोल रहे? तो все увидите в будущем. कैसे लिखते रहे तुम लोग? हेलो रोशन. भाई रोशन आ गया अपने चैट में. No, this is loser bracket, bro. काय बोलते हैं? ESL1 इंडियाचा मला स्ट्रीम पाहिजे रे. सापडत नाही YouTube ESL कुठंच नाही. रहेगा ना? क्यों? क्या हुआ? मेरा इंटरव्यू है. ओह. Ну, скажи, кого ты думаешь? मिल नहीं रहा है मेरे को. उस टाइम पे था. Я думаю, победит дружба. Friends will win. Friends will win. Friendship. Fantastic. Thank you so much to our casters. Hey, we got him. That was amazing. No RTZ. I love seeing it too because like at some point I thought I बाप रे. Twitch chat. I'm not sure if that was पीछे क्या-क्या चल रहा है? Asking Slacks questions. And that's for the better. That's the way it should go. I heard Bristleback. रुक मैं सर्विस को बताता. उधर मिलिट्री की जगह देख ले. हाँ, उधर जाके कुछ तो कर पीछे से. भाई मेरा नाम, तेरा नाम, दोनों का नाम लिखने बोला अपना. मैं पूछता हूँ एक सेकंड. Slappy and Pasol. Let's go. इधर इतने लोगों की जलेगी ना इंडिया में, जो भी देख रहे टीआई और उधर पीछे से आए तो. अगर नाम पड़ा तो ऐसे. समझा नहीं मैं. अरे वो कास्टर के पीछे नहीं क्या वो लोग बैठे हैं. In the previous game for Notice, considering the situation, being such a hard counter pick, but now you know you have the counter pick, right? You got the Conquer and the नशे में क्या? The Conquer players want again. So hoping to get some great rotation in this game. 32-inch curve. तेरा curve monitor है? Slappy? Throw it away to draft or something, and maybe they could do that. Slappy call करने गया. Spectre, they were obviously ready, and it didn't work out. But the level. भाई सोडा लेमन पॉप तू क्या? तू क्या मराठी आते क्या तुझे? भाई मेरी इतनी चल रही है ना अभी. क्यों क्या बोला वो? वो बाहर गया है. ओजी की टीम आई है. ओह नो. सेफ नोटल को मिलने गया है. ओह माय गॉड. बाप रे. सिद्धांत जादव तेरे को गाली दे रहा है चैट में. अरे वो सिद्धांत जादव या नहीं, वो L2 के जो अभी आया था डिस्कॉर्ड पे. आया था क्या? मेरे को नहीं पता है. अरे आया था, उसको भेजा था. इधर है कौन से चैट में? YouTube पे. हाँ. Right, and this is something that they were talking about during the panel. कोई ऐसा ranged hero बताओ जिस पे लोग radiance बनाते हैं. क्या बनाते? Radiance on ranged heroes. कोई नहीं बनाते. कोई तो hero होगा ना. कोई नहीं बनाते. Skeletons and zombies.
रेडियंस भाई तू रेडियंस का ये ही रहता है, तू मिली हीरो पे ही बनाएगा ना, रेंज पे क्यों बनाएगा तू? सोच रहा हूँ वीवर पे बनाते थे लोग पहले। बहुत पुराना है वो, बहुत ज्यादा पुराना है। लोन ड्रूइड के बेयर पे बनाते थे। But with the Muerta, you don't have to hard commit. It's just if FNG gets the good position, that you can do it with a. But oh, they immediately want to try and punish. नेक्रो पे बनाते हैं ना भाई, क्या कर रहे हैं? हेलो? ये देख, बू सेकंड इज स्मार्ट। वो क्योंकि वो आइडियल मतलब देखा जाए तो अंदर जाता है वो फाइट में। नेक्रो ओहो FNG खिलाड़ी। Has to walk away from the brambles though. FNG taking too much damage, still has obviously a lot of regen. Has a blood grenade stashed away too, so might find an opportunity a little bit later to actually get aggressive here. But I mean, last game our first blood was 3 minutes 19. Same-ish here, just before the 3-minute mark, but already a lot more. अरे तो GH का पुण्याचा है, सातारचा है ना? स्लैपी गया क्या स्लैपी? तो मग येणार आहे फक्त यासाठी? तो आलाय ऑलरेडी पुण्यात आहे तो. ओके. त्याचा मित्राचा वाढदिवस आहे त्यामुळे तिकडे गेलाय. बाय द वे तो L2K सुद्धा एक का टाइमला होता डिवाइन इमॉर्टल. तो डॉमी आणि याच्यावर खेळलाय रिया बरोबर एका टीम मध्ये. काय आयडी होता त्याचा? L2K. तो पण दुसऱ्या आयडी वरनं खेळायचा असं काहीतरी. नाइस भाई, ये गेम VP जीत सकता है, पता है दोस्तों? जैसे तू बोला वैसे मार खाने लगे. साताराचं गावरान चिकन लय भारी आहे. कोण आहे? बू द सेकंड. ट्विच पे. अच्छा भाई कितने सारे लोग हैं रे चैट में, कितने मराठी लोग हैं मेरे चैट में. मराठी लोग ओपी है अपने. साला एक ये अलग वाला स्ट्रीम है अपना. स्ट्रीम मतलब कैसे बताऊं, मतलब एक अलग एरिया है जिधर मराठी लोग एक दूसरे को खींच नहीं रहे, आगे ढकल रहे हैं मेरे को, समझ रहे हो क्या? मतलब सपोर्ट कर रहे हैं. तो अपना पता है ना कैसे रहते हैं. मतलब ऐसा कॉमन रहता है ना अपने इधर, कोई किसी का अच्छा हो रहा है तो नहीं होने देते. कितने सारे लोग मेरे को पता नहीं था कि मराठी है करके, आज समझ रहा है मुझे. मॉडल पडल अब ये बूद सेकंड. जय महाराष्ट्र भाई लोग. मिड लेन चल रहा है फिर भी ठीक. भाई हाँ इन्वोकर ने जिंकलं कशी ले. हाँ ना. 610 है तो. हाँ रिप्ले डाउनलोड करके देखना पड़ेगा उसका क्या आइटम चॉइस, क्या स्पेल बिल्ड. और कॉस्वेक्स खेल रहे हो. 3-3 पॉइंट है उसके कॉस्वेक्स पे. पता नहीं. अरे यार ये गेम में भी प्रेडिक्शन भूल गए दोस्तों, अभी याद आ गया मुझे. क्या कर रहे हैं? हाँ ना खली भाई. Drops down the blood grenade, wants to hunt. The fear pushes one away. Can Kiritich survive through this? Trying to take down that zombie house. One more hit, it's there. Toronto Tokyo will come through with save for the finish. But in the end, FNG able to get a return kill. I get one trade, but it's certainly favoring BetBoom, of course, to slow down this Muerta. A hero who's trying to get as much fire as possible in the early game. Up top as well, the stun on the notice here with the chase down of the Skellies. Just loses half of his HP. That's a tough one here. Still has the highest net worth, though, as you can see on the predictions there for everyone watching in-game on our Muerta. 7-minute mark coming around now, and Virtus Pro last game were able to steal away the double Wisdom Rune. This time around, it does look like BetBoom team are in a better position to go and claim those ones, so should be a trade-off of one apiece. Let's go! Super chat 5 USD. Oh yeah. Thanks bhai. Thank you very much. स्वतःचं नाव ओमकार आहे. Zinix.
जिनिक्स भी मराठी है, वो भी ओमकार है. Wow. See you, bro. Thanks. Once again. Model Puddle. All over the place. It does become really disgusting. And again, if you're tuning in for the first time in a while, you're like, Spearbreaker Core, what the heck's going on? You're going to see this guy run all over the map, just farm up absolutely everything. He might end up with the most last hits by the end of this game. Just it has happened. That's how it works. Yeah, you just charge right through that creep wave, you get all that gold, life's good. Oh boy. Let's see if they can slow down this Spearbreaker at all here. As it gets or he phase might boost. Die like 10 times. That could happen. Yeah, you know, it's also possible. Give and you take. EMP. एकदा मराठी स्ट्रीम केली पाहिजे. डोटा मराठीत शिव्या बिव्या देऊन ठेवू. Thanks. एखादी सब गेम करू शकतो. Only मराठी. Only Marathi players. Calls पण मराठीत द्यायला पाहिजेत. विशेष नाही. I mean, that's got to feel great after that last match, right? I mean, he spends the entire time just terrorizing him, bring him down. See if they can continue that type of a play as this game gets later and later. Lucky bash. Keeps pure. Perfectly fine and dandy. And in the meantime, we talked about this as a counter. अशा टाइमला मी फक्त विचार करतो, imagine true side मध्ये Nice son. मजा आएगा. भाई लोग तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. आज आपण जिंकणार आहे. चिल करा. मस्त गेम खेळा. अच्छा मी टीआई जीतना रहा है या जो भी मैं डिसेंट मराठी बोलता हूँ इतना मराठी नहीं आता. Circles right back for a bounty rune. कहाँ से तू ध्रुव? Happy to spend a little bit of time Mumbai. here in the mid lane here. अच्छा. Level 5 in this Undying, trying to get to level 6. नाईटफॉल चे डोळे तर एकदम बाहेर आलेत. Alright, gotta watch the. Oh, he's gonna get the kill. मैं सातारा से हूँ, but पुणे में रहता हूँ. Between the silence and the grimstroke, not a chance at all. They do have a lot of frustrating lockdown running off of the Spearbreaker, actually. Yeah, it's frustrating to play against. I mean, you know, there aren't many things that he hates to play into, but if you can catch him before he gets that charger bulldoze off, it definitely hurts. कुछ टाइम पहले तू ही पूछ रहा था ना आर्कोडन कोई खेलता है क्या? मैं भी 30 लेवल आर्कोडन हूँ. परत से 30 इन्वोकर के सामने मैं खेला था. तेरा एक इन्वोकर के सामने सब गेम्स खेला था मेरे को याद है. अच्छा. स्लैपी का ओडी बहुत अच्छा है. बचाता ही नहीं है. He's a part of so many of these kills right now. 5 into the 6. GPK. Oh, immediately cancels that regen. What a frustrating fellow. वॉस्ट अप यार. हाथ नहीं चलते अब. फटाफट. सच में आर्कोडन 30 लेवल है तेरा? हो. बघ ना प्रोफाइलवर आहे तो वरच असा डिस्प्ले. आर्कोडन ओडी था और ये इन्वोकर. ओडी है ना तेरा हाई लेवल की नहीं? हाँ ओडी 28. अभी नहीं है डिस्प्ले पे, कुछ दिख नहीं रहा है ब्रो. अच्छा वो चेंज किया ना, वो नया है कुछ तो मैंने किया नहीं अभी तक. ओडी 28 है, शैडोफिंड 25 है, पच 24 है. मेरा एक ही हीरो था 30 की. दो है, मिराना और अर्शिकर एक्चुअली. Not anymore actually. दिग्विजय भी पुणे में. किधर है पुणे में? हाँ आजू बाजू है अपना सब पब्लिक. कुठे आहे दिग्विजय? नाही माहिती, पुण्यात आहे कुठेतरी. लेट्स गो VP. गेम जीतो यार प्लीज. डॉमी कुठे गायब आहे? अरे डॉमी कॉलवर पण येणार होता, आलेला आज तो. झोपला असेल. हाय सत्यजीत. व्हाट्स अप ब्रो? झोपला नाही काय? Are a nice little injection. So Kiritich makes the move. They're going to give the kill over that Morta. So important to slow him down before that Midas, and also catching him before the Willow is level 6, because you're almost playing a bit defensively there. सत्यजीत पण भारी पूर गया. 25 किलोमीटर टू व्हीलर पे आया था वो मेरे को मिलने दूर बैंगलोर में. See if they can keep these feet under him and keep this momentum. और टाइमिंग भी अच्छा है. वो आया और वो बहुत ओपी गाड़ी आ जा रही थी. नीचे सारी स्पोर्ट्स कार थी. लैम्बोर्गिनी और कुछ बहुत कुछ थे. एस्टन मार्टिन. मजा आ गया उसमें. 7-2 right now is the score. Only 1,000 gold separate. Camp. Nice. Stacks on stacks. Camp में रहता है.
कैम बोल के किधर तो दूर रहता रहेगा कैम से भी. Thinking about joining up with this push, but waves are coming in mid, so. Instead, gonna go on to GPK. They find him there. Snowball Inkswell got him caught and can't dispel it with that tornado. They do have the ghost ship already out, but not going to be enough for the kill. Oh, भाई कितने हीरोज आ गए इधर Avengers. Can they get the kill here? This would be huge. If SquadX goes down, he's in trouble. Soulbind, is it going to be enough? No. Oh, and turns the fight. Nice fight. What they needed. Oh my goodness, the XP on save is killing them right now. He was so close to 6. They're going to turn everything, right? Yeah. One Terrorize, one Bedlam, even just putting that right on top of Pure while he charges in. And suddenly you're the one getting GPK does survive. बहुत ग्लास कैनन है रे. पकड़ा गया तो इससे ठुकता है ना. ब्लेड मिल्स के सामने तो और खतरनाक है. उड़ ही जाता है वो. बट मार नहीं मिला तो बहुत मारता भी है. वो याटोरो को याद है क्या? यस यस यस. इनके सामने ही था. वीपी के सामने. वो टस ने बचाया था. यस. वीपी के सामने सेकंड गेम था वो. ओह, इस्कॉन टेंपल 1 किलोमीटर. मैं उधर आते रहता हूँ ईरानी कैफे. अपन उधर ही मिले थे, याद है ना? स्लैपी लाइफ में फर्स्ट टाइम. यस. ओह यस. चाय पे चर्चा. Yes. He's full HP with a tier 1 and a Vanguard. Also has Where's my team? स्लैपी को स्ट्रीम के थ्रू मिले थे और फिर वो पुणे से समझा था. फिर हम लोग फर्स्ट टाइम लैंड पे उधर, लैंड पे क्या बोल रहा हूँ, लाइफ में उधर मिले थे. ओह ओह, नाइस टॉगल. ओ भाई, still enough for the kill. GPK, he's going to try and turn this. Nice. भाई VP is doing it. मेरा बहुत भाई मस्त मार रहा है. बहुत मस्त मार रहा है उसने अभी. वो डेड शॉट अच्छे मार रहा है ये. ओह हो. Sayush. If there is game 3, I will cry. Why, bro? Did you put some money on bet boom? मैंने बोला ना, स्पिरिट ब्रेकर पे नहीं ट्रस्ट कर सकते. ड्राफ्ट में पहला पिक हुआ था, कोई तो बोला मैं उस पे पॉइंट्स लगा रहा हूँ. ध्रुव बोला था. और फिर मैंने बोला स्पिरिट ब्रेकर पे नहीं ट्रस्ट कर सकते. स्पिरिट ब्रेकर ऑन पेपर डायनामिक हीरो है, पब का बादशाह है. टीम गेम में बहुत हार्ड है. How similar will Virtus Pro play this game compared to how BetBoom did last time? Getting across that river, getting into your jungle, taking away the space. I put on VP win. Nice. And, well, similarly, BetBoom probably going to be waiting on that Radiance. Much like Kirtis was on the Spectre, that's going to be the problem for Nightfall here on this race. जीतेगा ये गेम VP. JBB it seems. On the side, most likely of BetBoom if they can get there, but that could be a big ask for him. अब भी मैं तेरा स्टोरी देखा वेनक्लिफ. किधर गया है तू? ये क्या कर रहा है? जगह तो अच्छा लग रहा है. रेडिसन ब्लू गोवा. नाइस. गोवा में रह के भी गोवा के 5 स्टार होटल में ये कर रहा है. नाइस. भाई पकड़ के मार रहे हैं लोग. मजा आ रहा है देखने में वीपी का गेम. सट्टा का पैसा जमा कर रहा है. नाइस. सबको कैट भी इफ वीपी विंस. कैट भी अच्छा लगता है एक्चुअली. बहुत साल हो गए खाया नहीं. मेरे कॉलेज के इधर था, कमला नेहरू पार्क के इधर. उधर लास्ट खाया था मेरे लाइफ में. फुल्ली चॉकलेट लोडेड रहता था वो. ओके, दिख गया उन लोग को. पिंग हो गया पटापट. हाय पुरुजीत. जीतेगा तो बेटबूम. ये गेम वीपी जीतेगा. सीरीज बेटबूम जीतेगा. भाई बहुत दूर गया. टॉप पे स्मोक करके बॉटम पे. गलत होने वाला है वीपी के साथ.
ऐसा कभी नहीं करने का, never, should never do that. But the turn, oh, 2-man doom. Let's go. Sorry, my bad. I doubted VP. He's dead. Deny कर दो. Nightfall able to move in. Save still on the run here. Will escape down to the south. Should be all right. As they make their way back towards that mid lane. GBK, however, has cut all the way up top here and is going to try and push this out. Try and pull that. WK no alt है ना? कौन बोला no alt? Eats up the creep. उसने deny किया वो undying को. Still not easy, and yeah, they're going to get the D ward. Sage so retreats before any extra action comes through. And at this 18-minute mark, he's already thinking about that Aghanim Scepter on the Grimstroke. So wanting to have that big answer to Nightfall when he comes around. Yeah, and of course he's getting up there now too with that Radiance. Very close after getting a kill in that last fight and managing to not go down. When they started that initiation on a Nightfall, it was like 15 seconds till his ulti was back up, so could have gone poorly if it wasn't for all the assistance that came through from Toronto Tokyo on that TP. Yeah. Well, the next couple of minutes are going to be pretty telling as to what the pace of this game looks like. Squadix trying to get into that Aghanim Scepter, and I want to see what the next set of items are. If with no BKBs, there is a window here where maybe BetBoom can do something. Yeah, I mean, a lot of that comes down to Pure, right? And this is one of the most tenderized pieces of beef I've ever seen. He's 0-6-1. Oh, jeez. Yeah, that's a tough one. Yeah, Spirit Breaker's not usually down that low at this tournament so far. That means it's less tough, isn't it? Well, I mean, he's been beat so many times. That's गरीब है वो. He's 0-6-1. बहुत Spirit Breaker. It's a lot funnier when you explain it. Yeah, I think so. Thanks for the help on that. Listen, I can't turn off my chef brain, okay? Gotcha. This is the curse I'm afflicted with. 19 minutes and getting close to and now completing Octarine. Dude, he's so big on this. Just better Spirit Breaker. He's just, that's a nice build, you know? He's a monster. Octarine किस पे? Doom पे. मैं बोला अभी बोला मैं गरीब है और उस पे आया कैसे? Doom पे. Oh yeah. Get this nice safe Muerta. That's the idea. Really help them push forward on the map. Get whatever objective they want as they create some space. Somebody has a new thumbnail on stream. What's up? नया thumbnail stream पे? नहीं, तो रोज थंब नया लगाता हूँ मैं. ओ वो वाला बोल रहा है तू फोटो? ना ये सर वाला हाँ. यस. तेरे को वो वाले फोटो चाहिए क्या? तेरे फोटो शूट वाले? मिल गया आई थिंक. ग्रीन स्क्रीन वाले दे दिए क्या? फिर ठीक है. पता नहीं. दिए थे. कर दूंगा. वो लोग ने दिए थे. अगर चाहिए रहेगा तो सबके है. बस उसने बोला कि नहीं क्या उसमें कुछ गलत मत करना एडिट वीडियो. अपने पर्सनली कर सकते हैं, उनके ड्राइव पे एडिट मत करना. इसलिए वो शायद से सबको नहीं भेजा ड्राइव लिंक. कैसे जा रहे हैं गेम्स? देख रहा? क्या यही देख रहा हूँ बस. खेलना ही बंद कर दिया अभी. आज 2 गेम 18 के लीड 20 के लीड और हार गया मैं. वो देखा मैंने. अच्छा खुद के गेम्स का? खुद के गेम्स. भाई मैं एक गेम खेल रहा था लायन. मुझे समझ आया लायन क्यों नहीं चल रहा. हाँ. अगर फाइट नहीं हो रही और सारे फार्म कर रहे हैं. वही खत्म. जाता ही नहीं लायन पे. अरे मैं 50 मिनट सिर्फ ब्लिंक पे बैठा हूँ. सिर्फ ब्लिंक और शार्ड भी खुद बाय करना पड़ा. कुछ नहीं करते वो. सामने मोर्टा पोस्ट ड्राइव है, फुल फार्म है. मैं क्या करूँगा? स्केल ही नहीं होते वो. तेरे को मारने ही पड़ते लाइन से. सब स्केलिंग ही चाहिए रे इस मेटा में. यस. 5 हीरोज. वीवी वाले कमबैक कर रहे हैं भाई. अच्छा खेल रहे हैं. और ये गेम में मेरी मुएरता है. 0-7-0. Oh, damn. You're so fat. दोनों गेम उन्होंने सैलरी चेन बैन नहीं किया. दोनों हार गए. बहुत गंदा ठोका और वो लोग ने. 25 मिनट अंडर. हाँ ना भाई. 20 मिनट में दोनों गेम में हाई ग्राउंड तोड़ा है वो लोग ने. सेकंड गेम तो एपिक ही भैया. वो लॉन ड्रूइड वो गलत ही लगता है यार. खत्म ही कर देता है. वो डिफ्यूजल बना के हीरो सपोर्ट की तो वाट ही लगा देता है वो. और एक पाइप बनाया सैलरी ने. कुछ नहीं कर पाई. हाँ वो तो डैमेज ही नहीं लग रहा है. चेन कोई नहीं डैमेज लग रहा है रे. पाइप सोलर क्रेस्ट लैड्स इतना डैंकी था ना वो.
ये वाला गेम इंटेंस रहेगा, नॉकआउट है ना? यस, ईस्ट यू है और दोनों टीम। निक्स की स्ट्रीम पे 1.5 लाख लोग देख रहे हैं। क्या फकर है? 1,20,000 बाप रे। और मेन स्ट्रीम पे 1.5 लाख है। हाँ ना, नहीं निक्स फॉलो नहीं करता तो मेरे को पता नहीं है। नहीं वो इन ईस्टर्न यूरोपियन वालों का ही है ना बंदा। वो प्योर उसका ही तो स्ट्रीम देख रहा था टैप करके वो टाइमिंग पे। A lot of these fights are on the Roche pit, where you know where it's Pop's ultimate, they take it quick, but then the fight happens afterwards and you lose the fight because you don't have the ult. Oh my goodness, but you know you're seeing it now though from here, right? Yeah. इतना सब है, but lead 1,000 का ही है बस। क्योंकि बेड बूम वालों को फार्म बहुत पसंद है। फार्म कर लेते हैं भाई, बहुत पैटर्न्स वो लोग के अच्छे हैं। वो माइडस बना के अभी मैप पे इतने चार्ज लगा रहे, सब क्लियर कर रहे हैं वो वेव्स। 12 पता है ना वो कितना नीचे था? मैं तो अभी देख रहा हूँ। नहीं मैं इनको बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले मैं बोला कि 12 कितना गरीब है और 12 ने पूरा नहीं मर जाएगा, बट वो हील नहीं होता है ना बेस में। अरे बच गया वो बच गया। ओह शिट, टैंगो लिया है वो। क्या हील होने के लिए क्या? चलो मैं खाना कर लेता हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो। चलो See ya. And you're just going to be seeing Pure moving through, trying to catch as many waves as possible. Slow this game down. I would be feeling pretty okay with this game if I was Betbo. Yeah. I mean, there's definitely, problems that have come up, but only a 2,000 gold lead at 24 minutes. This definitely मला पण भूक लागली पण आकडे ऑप्शन नाही आपल्याकडे. I think back to the last game, and when Virtus Pro was in the bed boom position, that they were लिंकन नहीं बनाते आजकल, बनाएंगे बाद में बनाएंगे, जल्दी नहीं बनाते, फर्स्ट आइटम नहीं बनाते। वो डूम मतलब कैसे बताओ, खाना ही है, कुछ भी करो। वो तो एक क्रीप खा लेगा सिंगल टारगेट एबिलिटी वाला, तो ब्रेक करके डूम मारेगा। हाँ ना, it's not going to be easy. They really have to make sure that they're hitting their spells right and that they're getting some kills. खाना मतलब भूख लगा है रे, ऐसा खाना खाना नहीं। वो आदमी अलग है भाई, वो अकेला रहता है एंड देन उसका काम का वगैरह टाइमिंग अलग रहता है, तो वो लेट नाइट खाना खाता है। What time does Zomato shut in Pune? Zomato doesn't shut in Pune, bro. It's just the different restaurant options you get at different times. Why would Zomato shut, bro? 24 घंटे चालू रहता है। Like they're everywhere, and all of VP is stuck right behind this Kiritich Muerta. Like he was just behind their tier 2 top, and he just annihilates the entire wave. He just appears, charges through, wave is gone. Yeah. All of that gold into his pockets. It's gonna start to become an issue. I'll take your ancients while I'm at it. Yeah, why not? Okay, too scared. Couldn't finish him off. ऐसा क्या फार्म कर रहा है रे वो? इतना फार्म हो गया ये, अभी तो 23 मिनट्स पे उसका ये था, फिर बीके भी आ गया अक्खा, शार्ड भी बना रहे। अगर डूम खा लिया तो अच्छा ही है उसने फाइट में। गोवा में 230 खत्म, क्या पका रहे रे? गोवा है रे वो। बाय द वे आई एम प्लानिंग टू कम टू गोवा ब्रो, 31st, लाइक द ईयर एंड वीकेंड नहीं, ईयर एंड वीकेंड भी रहेगा ही उसमें एक। वीपी थ्रो नहीं कर रहा है, बेड बूम आउटप्ले कर रहा है, अच्छा मूव्स कर रहा है मैप पे। Off to the races. And he's got that, man, he was working on this BKB like he was so far away. Yeah. And he just killed all these waves and now it's just there. And he's underneath wards and they just can't do anything to stop it. The wave's gone, Pure runs out. भाई पूरे मैप पे बिंदास खेल रहे रे, कोई डर नहीं कुछ नहीं। स्पिरिट ब्रेकर है, मजा के। I want to do that. Yeah. That looks fun. I mean, that's the thing too, is like this was a first pick hero for a reason. There's been a reason that has consistently been banned out. He's just climbing the ranks. He's just going up the ladder. He's catching up to Nightfall. Yeah. Oh, look another creep wave here. Oh, bye. थर्ड हो गया रे नेटवर्क में वो स्पिरिट ब्रेकर। Something were to happen to it. Can they catch him here though?
Underneath the ward, they see Pure, they know he's here. Squad X tries to get in range and they will get him with the X. BKB है भाई के पास. And yet he's gone. Yep. Just like that. Just like that. But BKB charged down. True. Man, getting that wave earlier was so huge for Betboom too. Like I feel like they should have lost this mid tower. Yeah. You know, but just cutting and cutting constantly. Like he's just down bottom. गोली वड़ा पाव. गोली वड़ा पाव चालू रहता है क्या? बहुत कुछ चालू रहता है रे. It's true. I mean, there is a very clear way. दुआ में 230 को दिन चालू होता है. Getting the rest of the tier 2 towers with the duration of the दुआ में लोग एक्टिव रहते हैं भाई. Seconds left. Are they going to try and go on him here now? It's spotting all the backliners. They know where Notice is. They saw where FNG was lurking. They're thinking about a play here. As the Aegis expires, but no, they're not going to go for it. They do get the tier 2 though. Okay, and they got the Blink Dagger up on Nightfall, right? GBK still a little bit low on the mobility. But Nightfall. Oh no. Betboom, they're thinking about it. Chasing, Blink forward, stun is out, but the Terrorize to follow. It's a lot committed. Oh भाई धर लिया. Now the Soulbind connects onto 2, the Doom connects onto both of them also. Tusk is not in this fight. The BKB is there, wants to chase. Kiritich. Nice. So much damage. Let's go. Kill him off once. GBK, BKB running in. But ये मरेगी यार. अभी BKB खत्म है रानी का. So taking this fight without him, Notice is going to fall. And just like that. क्या बका एक ही किल मिला है उनको इतना सब कुछ यूज करके. बेडूम को 2 किल मिले. They get back, they get the DD rune after, they get the gold advantage as well with the 2 kills to the 1. Pure, you know, dying. आवाज नहीं आ रहा है. It's okay. He'll find some more fun. Point का जादू चल रहा है. Well, and showing the danger. I mean, this lineup, things are definitely starting to tilt more and more into the favor of Betboom as we're getting later. तुमसन पता नहीं यार डाला था क्या उसने दिखा नहीं मेरे को भी. ये तोड़ा रहेगा म्योरता ने. They have just completely dominated them in terms of map. इजीली तोड़ देगी वो. I mean, this shows why the spear. भाई इसमें भी वो उल्टी मर सकती है म्योरता. बहुत ज्यादा डैमेज देती है समझ में नहीं आता है. अभी 3 लोग टैंक करने के लिए तो ठीक है 2 लोग में मर जाती है म्योरता खुद. Little phantoms are hopping on top of him. Group stroke, soul mines, everything you can imagine. Just killing him over and over again. And then Midas Octarine is complete. And क्या? is a BKB. 3 टैंक है ना एनिमी टीम के पास भी टेक्निकली W के टैंक थोड़ा करता है 12 करता है एंड नहीं करेगा. अगर वो फुल म्यूटेशन सर्वाइव किया फाइट में तो मुएरता नहीं मार सकती. नहीं करती है वो बहुत बर्स्ट डैमेज करती है म्योरता. रुकना अभी तक स्केल हो रहा है वो. पूरी फाइट अलाइव रहा तो स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा There's still some of the settings that you can do where you can. But वो बर्स्ट करता है वही तो बोल रहा हूँ मैं. जय बीबी. Yep, you can do that too, yeah. Thanks बाबा सत्यजीत. Let's go. 18-8. Thank you very much. And what has felt like somewhat of a slow चल beatdown game that was looking ठीक है. good for VP has definitely stalled काही out. इंटरेस्टिंग झालं तर फोनवरनं जॉइन करतो. They've gotten what they ठीक wanted. है. It's such cerebral play from Bye. them is what it is. Oh yeah. I mean, this Spirit Breaker, it's just, it's too genius. Exactly. It's too hard to comprehend how complex this hero is. It's truly something masterful. I mean, he's calculating these angles, right? Oh yeah. Yeah. When will the next creep wave come? You know, he just knows. It's like they're on a timer. Well, to be honest, when I tried doing it, I couldn't do it. Oh, wait a minute. Oh. He didn't get it. No. Oh, nice. Oh, भाई ये स्मार्ट प्लेयर है. Oh my God. Fair enough. Okay. I guess there was a test. Yeah. क्या हुआ रे? Yep. We are smart casters. Oh my God. Gets out of trouble, gets back out on the map. Gonna be fine and dandy. सवयच नाही रे जगा मगा काय असलं तसलं गेट साळे करायची. नोप मला आवडतच नाही तसं खरं बोलू तर. भाई क्या मस्त खेला रे अभी स्पिरिट ब्रेकर ने. वो आइडियली मर जाना चाहिए था उधर. चार्ज भी रोका वो लोग ने ब्लॉक भी किया फिर उसके बाद. Definitely looking that way. I mean, they're waiting for the next Roche before they want to move again. Yeah. Did not get everything they would hope to achieve, I'm sure, on that last one. Still have the tier 2 bottom. Just missing the tier 2 mid. I mean, that was a massive win for Betboom that they held so much of the space on the map through that first Aegis. And now moving into lurking for the second one here. It will be a Radiant side Roche, and they're going to know that as well. Right. A minute gives them pretty good window where VP should be able to claim it. Now this feels like it's much more likely to be one of those where you maybe think about piercing the veil and just getting it as quickly as you can.
based upon how they're set up, they might try and defend this area. That's an AC done for the Wraith King, but it's the same time that Grimstroke completed the Axe. Yeah, so we've talked about that for a while. Been working on it for a long time. Looking for a copy of one of these. Grimstroke Axe बना है. Wraith King का Axe निकाल के भाई बहुत ठोक सकते हो fight में. They have vision behind themselves on Betboom, but none up ahead. There is vision in the lane currently. Ob Sentry combo for Virtus Pro. Betboom जीतेगी. पता नहीं यार, मेरे को लग रहा है ये गेम VP जीतेगा. He gets it down. That's good vision. They do Sentry for it though, so Virtus Pro immediately want to move away from that area. Don't want to fight under a ward here from Betboom. The vision becomes paramount. They have one down in the lane, which is pretty good for VP. Oh my God, this is a crazy play. Oh, ये अच्छा play है भाई. भाई उनको पता ही नहीं है रोश हो रहा है. Beautiful. समझा. Oh no. Nice. Aegis. Oh, वो उनको last hit मिला. Now connection. Doom, does he have enough damage? The connection of both. That's a Doom on the Spirit Breaker. Okay, nice. Oh, they got a Spirit Breaker of their own. Oh, नहीं है उस पे. No, GBK will get out. But the play, that is a big ball play going for VP. Very good play. Holy moly. That is मस्त खेला VP वाले. Invoker and Spirit Breaker, right? Like he did the Sunstrike for the vision, the charge through, and not able to clean it up though. Great play, especially using the Pierce the Veil too, right? Because you're not going to have it for the fight afterward. Exactly. Oh man, that was close. That was on a knife's edge. All right, well, we'll see if they can be a bit more successful out here on the map compared to that last game. They struggled a little bit here as GPK's Courier is in a precarious position here, looking for a Lincoln Sphere. Man. Sneaking around. Well, Blink Dagger now done for the top. JVP. 20-8. And I mean, so with this age, just how much do you feel like you need to get done for VP now? भाई मस्त fight लिया, मतलब मस्त रोशन कॉल लिया, जिसने भी किया ले एग्रिया ना वो. बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग था वो. कुछ भी हो सकता था वो रोशन वाले कॉल पे. There's a haste rune up there, maybe that could help. Give yourself something in terms of the actual catch around this map, but getting good vision down and trying to get a pick outside of the base to enable you to go for a tier 3, and then you have this threat of like win condition if you get a buyback on someone. That's what you're hoping for right now as Virtus Pro. But also just getting huge objectives like Wisdom Runes and Tormentors could be good as we approach the 35-minute mark. Well, nice, steal this one away here, and they already have a lot of shards, so that's gonna go all the way up to Noticed. That's a nice one. Gets what he needs there. And we didn't even really get to see that much of the Dark Portrait in that last fight. I did see a Spirit Breaker running around there, so just getting stuff done. Of course, that could have been the planar pocket. Right, that's a good point. Who knows? The planar pocket. Coming into clutch. I mean, it's scary. If you actually... कोच नहीं बोल सकता है, सिर्फ ड्राफ्ट के टाइमिंग पे कोच बोलता है और फिर चले जाता है, उसके बाद नहीं कुछ बोल सकता है कोच. Nonetheless, it is Betboom holding their high ground. The pings come out. They're going to tempt this. VP getting a little antsy. And there's that Wisdom Rune steal. Nice positioning from Notice to keep that on his mind. But of course, Pure has the same thought. He is charging that top lane. He wants their Wisdom Rune, but he has to cancel. He's going to try and cut this wave mid, trying to slow down this push. Snowball. Oh, Pure's not here. Oh, भाई किधर? He's in trouble now. FNG in no man's land is just going to die. No. Mr. FNG, क्या कर रहे हो बेटा? But Tusk just in deep wanted to find that punch and then maybe a dead shot back or something. And Pure is just going for the waves in the mid. They're going to try and stop him at all, or is he just going to get away with it? No, ये गलत कर दिया. But he is. And he's probably going to get the Wisdom Rune too. He's out across, maybe a little bit too afraid yet. Squonix is on it, yeah. No yeah, they're feeling he might show up. So VP, and you can see the 36-minute Midas. Okay, perfect. Got by Toronto, Tokyo. This makes absolutely no sense. Save. Just keeping an eye on his captain there. Midas बना है उसने. Midas on save, so that's going to be how many now? Is that 4 Midases? You know, Nightfall just falling behind on the tech. Tired out there. 3 Midas ये टीम पे. Okay, interesting. So we know where Betboom want to go with the game. चौथा भी बना लिया. We'll see if VP are going to let them get there. 2 ये भी बना लिया. Or
absolute top तीन international gameplay for the 5 Midas, right? 5 Midas वाला कुछ नया है ये. This is the other one. Oh god. Gets the X pullback. The X siege as they weren't quite able to break that TP of Pure. Range racks very low, and with people retreating to their side of the map, VP are just going to reset. Only 40 seconds left on this Aegis. Fairly successful so far, I'd say. Oh yeah. No massive losses. Playing a lot of time on the enemy side of the map. Taking a Tormentor here. Getting a Courier. Looking. Forcing the opponents to buy Midases. Not quite able to get there in time. I mean, I think back again to that Bet Boom game that we saw earlier where Toronto Tokyo was playing the Undying, got up to 10k HP with the Aghanim Scepter, and he's already got it queued up again. He's got BKB Aghanims after, so knows what he Late game किसका better है? He's got the Radiant. Great neutral item there in the Ogre Seal Totem. Very, very nice on these support heroes where you feel pressured to buy like an Aura or something and you have no survivability, and just get you out in the nick of time. But Virtus Pro, I mean, they're sort of still holding on to this area of the map, and the unfortunate reality is that they don't have any way to shut down the Spirit Breaker from doing this, like we've talked about multiple times. So they aren't really stopping Bet Boom from farming. They're still getting kind of everything that they want, and this net worth lead is sort of just standing constant. Yeah, they're holding 2 waves though, right? Oh. Like, they are getting waves mid, they are getting waves bottom. But can they actually do something with it? Well, he went in and got the range rack, so nice little sneak play there. Okay, good smart spot. Oh, looks like they're just kind of deciding, but now what, right? Like, are we going to hard commit for a melee Rex? I mean, there's no way. I think that they actually are going to wait for next Roche. And the thing about this too is that, like, you know, notice he's got Refresher at this point. They are getting very farmed also on VP, but are the supports going to keep up in the same way that the supports of Bet Boom team? Oh, okay, he went for one more time there. Chasing. Tusk is here, snowball in. This is good for them if they can connect. Pure, no way out. Fish punches there. Let's for the Nether Strike, and then the Lincoln. Lincoln Sphere coming in the clutch there. Yes. Oh, wow. Such. Gets out of trouble. Well, another instance. मूर्ता भाई सेप्टर नहीं है आपके पास. I mean Aegis नहीं है. Needs to back out of there. Sunstrike actually connects. That was sick. Down to about a quarter HP. Oh. Refresher Oh, done come now on. Spirit Breaker. Have mercy. Dude, they're getting there. Refresher और बना लिया भाई. Actually gonna hold. I don't think that VP has been able to play fast enough tempo. भाई ये क्या आइटम ऐसे इतने फास्ट कैसे ला रहा है? Level in the game, starting to get towards the highest everything. क्या मस्त खेल रहा है. Okay, but here's what it is though. Muerta players, this is where they want you, right? Those Muertas, they're like, they want you to think that you've got an advantage, and they want you to charge forget that they're playing Muerta. Okay. You've seen these late game fights. 2 BKBs, 2 ultis. It's unbelievable. One good positioning during Pierce the Veil, other teams just gone. Yeah, I mean, you're not wrong. It can completely boggle the mind how much damage she's able to dole out. FNG though is charged, and land the Bedlam from very far range, and then they just move in for the swipe. Nightfall gets the kill. I mean, how quickly things can turn. It can happen in just an instant if they're not careful. This marks the spot, still held, not used yet. Nightfall. Oh, cured it. On to Kiritich, and now the terrorize. Mot. The connection. Fully chain stun goal. ग्लास कैनन और बायबैक नहीं है उस पे. जय बीबी हो गया भाई. Another one. Finds him. Notice in trouble. It was going so well, and क्या पकाया. shut the door. I think they just thought they would jump. गए भाई. BKB. Just absolutely blown up there, and now with this refresher, you can just see Pure, if he wants to commit it, you're just done. Goes for a Sag second charge through boys. there. Didn't even have to use the Nether Strike. Just spend his time waving at him while he killed him. And this is why gambling is Bet good. Boom making good calls in this one and retake the map with all the lanes Feels bad, constantly man. shoved out. There just was no answer. And now a tier 2 tower gonna go down. have a How much dialogue damage at was that. done? Feels They could good, do man. anything on VP. It is a team game. Oh yeah. But seriously, Pure just won this game. Like Pure's map gameplay, and sure, his team's setting up for it, but this idea of the Spirit Breaker and opening all this up, he has done so much individually to keep this game going, and now giving them straight up. मूर्ता उसको मारने गई फिर बीकेबी नहीं ऑन किया.
Well, and like you said, it was the stun, the 4-staff away, didn't BKB, and I mean, it's just a painful one. It hurts when that happens like that. The charge through the control onto Notice. एक BKB on करता तो कुछ अलग होता था Dota इधर. They did. Vancliff is back. Well, and the other thing Where is Bambino? They got to right the ship. They got to calm themselves, get themselves in the good state of mind, and they have Kunka. That's right. He can right the ship. Hey, yeah. God damn it. But it is a very long Roche, so they've been waiting there. It's almost max time, so they're just kind of sitting there like, where is this thing? Why isn't it spawning? And that's huge news for Virtus.pro because it's hard to imagine they want to give this up. Like, Muerta needs that burst fight. So, more lives, like, you're already dealing with the Wraith King. I don't think you want to have to handle another one. Same thing with the Doom. They got to get this fight. So, this could be the one that decides it here, folks. Well, Doom does not have bots level 2, so getting there... भाई दोनों के scan connect हो गए, Radiant भी, Dire भी. Is going to TP in now to rejoin the crew. No vision up ahead here for Virtus.pro. They don't know what's going on, and Nightfall is just sitting here, alacrity up, ready. VP Spirit is broken, maybe not. Make it a big jump forward. This Doom so tanky already, and then the shield here makes it even more. They walk right in, able to connect, but they find him. Good snowball save, that keeps him alive. Pure, he's gonna get hit by that snowball with the refresher, and then Notice pops BKB, rolls back through onto 2. They're all caught in no man's land. मेरे को अच्छा पोजीशनिंग मिला, but उधर refresher और एक on हो गया भाई. VP gets completely caught out of position. Now भाई इधर से आगे दोस्तों. I mean, now Notice he might go down too. They just keep finding these openings. Bet Boom on the right side of the fight, and when Chaos is striking, it is all coming up. Bet Boom. My goodness, this team is way too good. Way too good. Up to their base, you got to imagine they're going to head back. Check out Roche, and it's still got enough time to still finish it off on this Radiant side if they want. No real rush here. Is some X plays now from Squadix to try and keep this wave pushed out just a little bit, but GPK, great play in that team fight. The snowball save was excellent to start the fight, but then he just holds Tornado, catches them on the way out. Oh yeah. Easy setup for the rest of the team. Another Tornado later on to help catch out onto Notice there too, so easy mop and bucket here for him. And just solid positioning too, obviously, like way back behind Nightfall, then a cheeky little wraparound. Pure. Oh, okay. Pops the Lincolns. Then X's. Okay. BKB back up in 1 though. I mean, like, even X, it just doesn't last. He's trying to do anything at all, but not taunting. It does wear out now. Okay, now BKB and then charges away. It just doesn't matter. Dude, you run SB ने जो गेम में पीछे था और फिर वो ऑक्ट्रेन और माइडस के बाद जो मैप पे तबाही मचाई ना उसने इतना फास्ट काम किया ना. And Toronto Tokyo is the one that takes the Aghanim Scepter. Wow. I mean, it must be nice being the captain. Right? Yeah. So he is now catching up to and going to be on par with the Invoker. I mean, I have not seen the combos. I haven't seen the Grimstroke Soulbind with Dark Portrait paired together with the Doom for a very long time. And I can't help but think that some of this is like outwarding, outpositioning. They're just getting outplayed. I'm sorry, I'm still just not over the fact that he is the Aghanim. He is double Midas, he just uses. Yeah. What is going on here? Toronto Tokyo doesn't care. It's like, look, everybody thought that I switched from core, but no, he is actually the character. Hand it over here, guys. He's got a Wraith Band too, why not? Getting Lincoln's next. This guy's a monster. I feel like Pure, you know, might have deserved it a little bit here. It can be real. You don't want the Aghanim, sure. Spirit Liquid, I think Liquid जीतेगा upper bracket, and then Spirit will come from the lower bracket and destroy Liquid. Undying? Yeah. All right, we'll see. He just wants 10k HP again, like you were saying previously, so. Well, X-Play. SB did tries to do a little bit of wave pushing himself. As Nightfall is queuing up the Aghanim Scepter, and a 16,000 gold lead. It just keeps getting bigger. Not quite able to catch Pure there with that tidal wave as he's heading cross country and has a full Wind Waker. How many marathons do you think he's charged this game? I mean, there's a lot there. It's a lot of distance. Making moves. I mean, again, their positioning, you can see that with this Aegis, they don't even feel super compelled to push high ground with Bet Boom because they just feel good about the way this game is going to go as it gets later. You still have 4 Midases. Yeah, it's actually not that easy for them to break high ground either. No. It kind of would be like a giant jump from Nightfall into hopefully helping to blow someone up, but it's difficult to get that first bit of vision into the backline.
so that you can get the really solid charges out from Pure. Okay, this is one way to help defend your high ground here, though. Okay. Doom has the Aghanims, but more importantly, FNG going for the big kicks. All right. This would be nice if they can find anybody. सेप्टर आ गया, इससे कुछ अलग हो सकता है ग्राउंड पे। 10 के पास सेप्टर है, वो किक कर सकता है अंदर लोगों को। हाई ग्राउंड अच्छा है लोग का। They're still not out yet. There's still only been one Rax taken. Oh my God, the Wind Waker, he got away. FNG still hunting, wants to get it, can go for the kick play, but no, the Lincoln's blocked the click. Now tries to get out, but the Wind Waker away again. This hero. अरे भाई किसको डूम करो ऐसे हो गया उसका। Doing pretty good work. Can they bring down GPK? They will. That's one time. Do they have enough? के GPK मार दिया वो लोग ने। बड़ी जिस था उस पे। He is getting large and in charge on that Undying. Still controlling. Notice in further trouble. Toronto Tokyo hiding, chasing in the front lines. And there they're going to get it. Look at this freaking zombie. He's a monster. 6,500 HP, 88 stacks. He's dealing so much damage even just to these buildings now. किधर है रे लोग? And with 3 dead and no bombs. क्या करेंगे? What the I mean, it was a good attempt for a moment, but Minus they're going to find something most likely. Causing you to kill the Aegis as well as one of the lives on the Wraith King. So a little bit of a miss on the armlet toggle there, so you just wanted it back, you know? Nightfall hurting a bit. Will they be able to get more? 55 seconds until Doom. They tidal wave to pull him in, but Lincoln stacked on सेप्टर भी खरीद रहा है अभी वो। stacked on Lincoln कैसे हो सकते हैं? नहीं होता है वो, एक ही बार होता है आजकल। मतलब एक लिंकन बाय किया और एक बंदे को लिंकन दे दिया तो लाइक 2 लिंकन हो गए ना। नहीं होता है, एक ही होता है आजकल। VP not coming up with बोला कि लिंकन स्टार्ट और लिंकन पता नहीं पर वो पहले था, वो लोग ने ये निकाल दिया अभी। एक के बाद एक लिंकन, तुझे 3 लिंकन तोड़ने पड़ते थे ना, अभी तेरे को लिंकन एक ही तोड़ सकता है। क्या? लिंकन बना के दे देते थे अपने कैरी को। हाँ, और वो हाई ग्राउंड खड़ा रहता था, तो अभी इसलिए तो गलत होता था। अभी एक ही बार तोड़ना पड़ता है तेरे को, कितने भी रहने थे सामने वाले। Wind Waker is way too good. It's a 9.8 second cooldown on Wind Waker. Oh, yeah. It's disgusting. He has a refresher. Why not? Aghanim Scepter now done, going to be brought out to him soon. They're not even saving. उसने अभी तक वो रखा है, देख रहे हो क्या? They don't have buyback on Spirit Breaker or the Wraith King. Philosopher's Stone. That's a good point. Positives here for Virtus Pro. Absolutely. ठीक है, बेचेगा रेटिंग अगर एबिसल बाय करेगा तो क्या बेचेगा? आमलेट? Yes. आमलेट रखना चाहिए, आर्मर रिफ्रेशर नीचे रखेगा फिर वो। Get that XP. Level 24.5 now for Doom. Getting there. They want to put the nail in the coffin. Pure. Oh, he's going all the way. Charges all the way through the freaking base. Wind Waker backs out. Now the Hex onto the Wraith King. Nothing is capable of being punished as of yet, although they torrent down somewhat low there. Maybe the start of something good. The fear pulls them back in. They also have the Dark Portrait. Toronto Tokyo starts to die. Toronto Tokyo eats the cheese, tries to do what he can. The boat's going to go out so they get the rum buff. Trying to take down that zombie house. Great shards controlling. Wind Waker lifts him up, but now the pull back in with the tidal wave. कितना कंट्रोल है लोग के पास? किधर किक किया? Not the way FNG wanted it, but now the snowball into GPK. He's going to BKB and run out. Plays it safe there too. BKB with the arcane blink. So they do hold on, but it is 12 रन की लेवल ही लग रहा है। Yes. I mean they've only lost what, 1 round. तो जब तक डूम म्यूट्स वाला like get out there, have to find some big kills. Not gonna lose for sure, but they have the damage. क्या? They certainly have, right? If Muerta gets her और space, डूम का जब तक 25 पे म्यूट नहीं आता ना, तब तक वो 12 को अगर डूम करेगा तो विंड वेकर करके ही भाग जाएगा। Yes. She was able to unload into him. और 12 के ऊपर टिक भी नहीं सकता क्योंकि वो W से मूवमेंट स्पीड इतना मिलता है। और अभी 60 मिनट सून होने वाले हैं। अगर फोर्स बूट्स मिल गया 12 को। अरे मूवमेंट स्पीड छोड़, उसको स्टेटस रेजिस्टेंस मिलता है, वो डूम निकल जाएगा इमीडिएटली अगर उस पे डूम डाला तो वो। बहुत जल्दी निकल जाएगा। Unless वो एकदम like कैप ढूंढे। अरे बहुत कुछ करना पड़ेगा वो लोग को उसके लिए। That's what they try and like wait for before they fully commit. They just sort of secure themselves the next Roche.
What's the game plan looking like for these guys? I think they are very comfortable just moving. Oh, ये लोग भी carry हो रहे हैं अभी थोड़ी देर में. Yes. Scepter बना लिया उसने. And look for the next Attack speed आएगा ना तो maybe खत्म हो they'll wait जाएगा. for the neutral items anyway, because Roche isn't for another like at minimum 40, and then of course it could be 3 more minutes, and at that point it's really close. Right. It will depend a little bit on that timing. But overall, I feel like they're just so powerful right now. I don't think they need to wait for the neutrals. If anything, that's probably going to give more value over to Virtus Pro if you get something crazy on Muerta. Fair enough. Or like Ex Machina or something on these heroes, you know, because they all have refreshers. 60 मिनट पे उनको ये काम में आने वाले सारे माइडस. 60 मिनट का पहले आइटम लेके वो लोग खत्म कर सकते हैं. पता है ना वो क्या करते हैं? 60 मिनट के पहले है ना 59 58 पे माइडस खरीद लेते हैं. और फिर जैसे 60 एंशिएंट स्टैक नहीं रहे. एंशिएंट स्टैक छोड़, नॉर्मल 5 क्रीप पे जाके माइडस खा लेगा, 5 आइटम मिलेंगे तुझे कोई भी छोटे का. हाँ माइडस से 100% रहता है न्यूट्रल ड्रॉप. तो वो 60 मिनट पे वो स्टार्ट कर सकते कि माइडस बना के फटाफट नहीं क्या 60 मिनट वाला आइटम लेके सामने वाले को पकड़ के मारो ऐसा. There you go. Now you are learning. डिपेंड करता है तुम्हारे कोर्स कितने गरीब है. अरे कोर्स गरीब हो अमीर हो तेरे को इमीडिएटली मिलता है. सामने वाला तू चांस रहता है हाथ से मारेगा तो. 60 मिनट पे एक तू क्रिप पे मारेगा 100% मिलेगा माइडस पे. तू हिट मारेगा तो मिलेगा ही, ऐसे नहीं है पांचों हीरो को. क्योंकि लेट गेम बायबैक भी बचाना रहता है ना. अरे बायबैक का कुछ लेना देना नहीं. मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? अरे मैं वो बोल रहा हूँ कि अगर कोर गरीब है और अगर उस पे बायबैक नहीं है और वो माइडस बाय करता है उसको 300 गोल्ड नहीं मिलेगा ना माइडस से. अरे माइडस गोल्ड के लिए नहीं खरीदते रे नूब. अरे मेरे को पता है तुम न्यूट्रल तो वो उसका लेना देना क्या है बायबैक वीबैक से? वो तभी खरीदेगा ना जब सब रहेगा. पहले प्रिपेयर करेगा वो उसके लिए. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो बायबैक नहीं और वो माइडस खरीद के बैठेगा. ओ भाई कमबैक. नोप मरता मर गई. वो सेव के टेरराइज ने गेम बचा लिया. Okay, GG guys. As BetBoom reassert dominance, they did force out at least one buyback, Pure, as well as Toronto Tokyo. That is a big one. Have on Pure for sure. Zero Deaths पे खेल रहा है कुंका रेडिएंट का. क्या बात है? Muerta, you know, she's in some ways a bit of a transformation hero. Like you really want to use that Pierce the Veil, so buying back without it can feel very, very painful. Even though they're fighting down here by the Radiant Outpost, where it feels like, hey, this is your chance, right? You can actually fight this for a second time. They'd rather take advantage of it on the high ground, and probably largely due to that buyback from Pure, because now they can say, hey, if we fight on the high ground, we get the kill from Pure, you know, that'll be a dieback. 12 को एजिस दिया है. खत्म. अभी तो उनके मुंह पे खेलेगा वो. छोड़ दिया वो लोग ने रोश में. नहीं चाहिए चीज. स्लॉट नहीं है. Yeah, helps bring him down here, but then Kiritich, of course, not able to get any spacing thanks to that ghost that's up there from the Undying as well. Oh, and look at that. Back in the world that we're living in, they left the cheese in the pit too. Okay, nice. Hex. Torrent pulls him back in, lifts him up. Notice is there. And the Doom Pure decided not to go in. And Pure now also caught in. म्यूट आया रहेगा ना कि नहीं आया अभी तक? 26 है रे वो. 26 लेवल है. The stats resistance doesn't matter. And got him caught. He's not going to be able to get away from this most likely. The lower. Oh. Are you kidding me? How? खत्म हो गया भाई उसका डूम. On it, dude. This hero is so dumb. I can see them putting posters up around the arena right now. Have you seen this cow? That is insane. All right, we gotta look at the cheese down there in the bottom right-hand corner. I can't believe he lived. और माइडस पांचों हीरो पे नहीं बनाना है तेरे को. वो स्टैक करके भी रख सकते है तू दो चार्जेस. जैसे तुम बोले ना कि माइडस बाय करना है, समझो तुम पे
अरे वो तो बेसिक है, वो बेसिक है। तेरे को ऐसा बोलेंगे 1 लेवल को माइडस खरीद, तू बोलेगा पैसा नहीं है, तो वो लेट गेम भी तू सब कैलकुलेट करके ही खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि बायबैक नहीं है तो क्यों खरीदेगा तू माइडस? क्या कौनका मरेगा ये गेम? मरेगा ना, वो जब मरेगा तभी गेम खत्म हो जाएगा। This is how you siege. Interesting. I mean, Muerta, a very rare thing for a carry to have like such good tower taking ability here, with the use of the gunslinger working on structures. Wait, so they're actually, because he's still dead on Invoker, this is a bold move from VP to make that type of a play. Oh, got vision for a second. No. You hear the spear breaker. It's true. It's really scary, man. It's no joke. They're catching up to them. They have a ward here. FNG looking to pop smokes with the positioning. Heritage kind of fire up front. His positioning's great. They find one. Toronto Tokyo's starting to fall right at the start. Can they bring him down? माइनस 4 ऐड किया वो बहुत। काय को किधर किया उसको? से Heritage is right there. Tries to bring him down. Cataclysm not going to do all that much damage. बहुत गलत हुआ ये। They're there, right on top of him, and there it is. Pierce the veil. The turnaround. He almost Lag. down GPK, but able to get some separation. लैग हो रहा है कि तुम लोग का? स्ट्रीम लैग हो रहा है ट्विच? Sets up for the kill. That Dark Willow is doing so much. Barely able to TP out of there. His Nightfall. नहीं, मेरा ही लैग हो रहा था फिर सिर्फ। Just like that, they manage. It looked for a moment like it could have turned around. Now they do still have buyback. मेरे को वो किक अच्छा नहीं लगा जिधर किक किया उसने अनडाइन को। 800 HP. First time that this heart has been bought. मेरा नेट था शायद से दोस्तों लैगिंग के लिए। But will it be the last? हो गया फिक्स। I hope so. उधर ये गेम पता नहीं क्या। Hex to start. Pure coming from across the freaking map. Tidal Wave tries to get him out. Down. The Tidal Wave actually breaks the charge, but Nightfall finds himself noticed. BKB tries to run. Squadx in trouble and burns. Solo मार दिया उसने DPK ने। Yes. Does have buyback. Only hero without it right now that's dead is the Tusk. And they would love to be able to go for the kickback play. Holding this buyback on Muerta for so long. So many fights where she hasn't gone for it. Oh, and Betboom just trying to clean up. VP, it looks like they are giving up the mega creeps. Pure starts to hit the tier 4 towers. Now there is still a buyback play. Can they end this one here? Are they just going to be content to... Yeah, they're rotating around towards it. Thinking about it. Yep. Last one up top. Betboom goes in for it. Still 8. They're going to try and get Muerta's refresher here for this fight. So I think they're going to give it up. They're going to try and get a respawn naturally, buy the refresher, and get double Pierce the Veil in the hopes of winning it. Can they do it? I mean, they're facing mega creeps, but still maybe one last gas. GG boys. Dark Willow hitting the tier 4 towers. FNG jump forward. Inkswell kick back 1. Snowball follow. The Doom is there. They get him caught. Is it enough? ये किक फिर भी अच्छा था पहले से। Now Squadx hunting also. बट वो है अनडाइन वो इसमें मार रही हो। उसने मार दिया टस्क। Gets him caught. No way to get out of there. A second round now. वो अच्छा किया विलन ने टस्क को मार के मर गया। वो ब्रेथ किंग मर गया। They have enough damage to bring down Kiritich. Kiritich लोग भागा करके अंत करेंगे सब। हाँ वो तो है। डूम के पास बायबैक नहीं है। बायबैक नहीं है डूम के पास। He's a carry now. Get the hell out of here. This guy's hard to deal with. But the disarm. अनडाइन देखो। देखो। The control Pierre beats him back in. Oh my God. 12,000 HP है भाई उसका। 12,000 HP just starts hitting buildings. He is way too strong. बोला ना मैंने कुंका एक बार मरेगा और गेम खत्म उसका लाइफ खत्म गेम ओवर। GPK gets hex. Squadx is there. Muerta is back alive again after the buyback. There's the refresher. Pulls him in. Wants to bring him down and turns to pierce the veil, but save. Does he have enough damage? Oh! Down and gets him caught and killed. Nightfall with the turn starts being into him. Okay, maybe a chance. Nightfall. 6 seconds. Almost. उस पे बायबैक नहीं है। अरे यार काश मर जाता वो। Keeps him alive. Second round. Oh, he wants back in. Can they get him? Do they have enough? Yes, they will. ओ भाई स्ट्रेट वॉक डाउन करेंगे क्या मिड पे? इन्वोकर पे बायबैक है।
Does he have enough? Toronto, Oh भाई क्या मस्त चल रहा है. This is dangerous territory. There are no buybacks right now on any of the tires. They find him with the walrus punch to the kill. 3 हीरो के पास बायबैक नहीं है. They're being swarmed by creeps in their base, but they're going to hold the line at least one more time on Virtus Pro. मुश्किल है. वो रेड किंग मरना चाहिए था तभी उसके पास नहीं था अल्टी पता है बाद में अल्टी है. And Nightfall too. मर जाता अगर क्रेडिट पड़ते ना एक दो. और रेडियंस हाँ ना. Blink so close to just ending the game and taking this भाई Muerta down. 53,000 डैमेज है वीपी का और मोएटा का कितना डैमेज है? पूरा मुएर्ते का ही है रे. 30-40 हजार मुएर्ता करेगा. देख 34. They will have buyback back on the Spear Breaker, but actually not the Undying. He doesn't have the gold for it. Okay, they're picking up Wisdom Runes. Still 250 gold away. Just Courier. Ex Machina Midas refresh करता है. She's doing some quick math here. शायद से नहीं करता है. I mean, you've got. I think you have to go for the all-in play. They're gonna go for it. I mean, Rapier is queued up. या सिंगल चार्ज करता रहेगा. Yeah, I mean, it's really tough. Oh, here we go though. It doesn't have a pressure. Coming out here. Okay. 2 minutes. We spent so much time fighting in the base. It's time to go out and farm some items. They can get him. FNG gonna look for a kickback play maybe. I mean, it's still a 31,000 gold lead, but gold lead matters. अरे दिख गया उसके इससे. दिख गया भाई उसका टैग टीम वाले और. Buybacks on Invoker, on Wraith King, on Dark Willow, and honestly, actually, Spearbreaker bought out. So they are close. भाई तू क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा. स्मार्टना माइडस रिफ्रेश नहीं करता. नहीं करता वही बोल रहा हूँ. Roche is back up. I mean, decision making here. रिफ्रेशर करते but ये नहीं करता. All right, what do we got here, folks? Virtus Pro gonna do it or what? रिफ्रेशर भी नहीं करना चाहिए उसने. क्या बोल रहा है? रिफ्रेशर करके ओके. आई डोंट थिंक उसके पास बायबैक है ब्रेक किंग पे. नहीं है. इन्वोकर रैट कर रहा है उधर. ऐसे जीतना है कह रहे तेरे को टीआई में. जीपीके GPK, he breaks up their YOLO push there. Oh, GPK, that is the play that they needed. It was getting testy. They did manage to. ऐसे जीतना है उसको GPK को. Holy moly, that was close. Refresher, Wraith King. That is what saved him right there. रिफ्रेशर दबा दिया रे रेड किंग ने मरने के बाद वो उसमें गोस्ट फॉर्म में. New start record. Beat the record for most hero damage this tournament. 30-30. And what are the items that we're getting into? VP should be able to get a couple of them now, right? Did they even find any? I don't think so. Yeah, there's the cheese. तेरा आवाज बहुत तड़प रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वो लोग ने cheese find I don't think they've actually managed to get their tier 5s at all yet for Virtus Pro. So they got to go and start hunting for them right now. Yeah, this is the window. They need some time, but of course it's scary. It's so scary. हाय धवल. I mean वो ऐसा बुरा लग रहा था रे. VP वाले एकदम कमबैक कर रहे हैं और वो जाके उधर ये कर रहे हैं. That's perfectly fine. Picking up the cheese, dude. Don't leave that in there. That's किसको चाहिए रे सेप्टर? किसको चाहिए? डार्क विलो ले ले और खा ले और बेच दे असली वाला. नहीं वो खाएगा ना तो उसको पैसे आई थिंक मिल जाते हैं. नहीं 3,800 ही मिला. कुछ भी मत बोलो. अल्केमिस्ट का रहता है. अल्केमिस्ट का रहता है. हाँ. I mean, this is the window to get him. There's a camp link right there. Let's go, FNG. What do you got? What do you got? He's farming. All right, not lucky. Not lucky. Should have bought a minus. That's the key. Okay. Oh, there's one. All right. पहला मिला अभी देख इनको. माइडस नहीं है तो 65 मिनट पे. Oh, unlucky for Kirta takes down the ancient. काम ही नहीं है लोग ने. अरे चांस ही नहीं मिलता है ना. सामने वाला इतना प्रेशर कर रहा है तो समझ रहे हैं क्या? इसलिए माइडसेस काम आते हैं. दूसरा मिला अभी. तीसरा नहीं दूसरा. तीसरा. पोजीशन 5 ढूंढ रहा है. सोच तड़प के मैप पे. उधर 5 प्लेयर के पास है और ऑलरेडी. ओह ये अच्छा है. बुक ऑफ शैडोज. For the doom. Is he just trying to smoke home? Oh, FNG, this is so scary. Oh my god. Oh, jeez. Not a care in the world. No fears.
कुंता ने डेसो क्यों करके रखा है? Clearly the most important hero here. Oh yeah. But it can all go wrong so fast. Oh, it definitely can. And is this the beginnings of Mod. FNG caught? The big buyback hai, old chalo. Toronto Tokyo. 9700 HP with 1 round of decay. वो देख रहे अंडाइंग. Look at this guy. He's got Giant's Ring too. How can you stop कितना him? HP है उसका दिखाते नहीं है. 9700 था अभी. पोजीशन. ओ भाई गलत हो रहा है गाइस. कैसा तो गया? Oh my God, GP की डूम हो गया. और उसको वेल में फेंका है. उसको वेल में फेंका है ब्रिथ किंग को. उसको अगर नाइटफॉल मर गया तो खत्म. मर गया. रिफ्रेशर वगैरह भी नहीं है अभी तो. Wait a minute, they managed to catch him here. Still on to the Ancient was all these creeps, but they don't have enough. Invoker भी मरा है. Going to be a dead Wraith King, and he doesn't have buyback either. Oh, they're holding. 40 सेकंड है बट उसका बायबैक के लिए. Virtus Pro with this Muerta. She's in the midst of that fight. I can't believe she lived for so long. बट गोल्ड नहीं है उसपे भाई. गोल्ड नहीं है उसपे बायबैक करने के लिए. 30 सेकंड में आए तो भी. 23,000 damage. They almost did nothing with the exception of Wraith King, and that was just Radiant burn only. ए 12 देख क्या कर रहा है लो. That is insane. I mean, अरे वेव क्या वेव भाई. ये 2 क्रीप लिया तो वेव. कास्टर भी अननेसेसरी हाइप कर रहा है. Gotta be careful. Gotta be careful. You get. नाइस. इस पे है बायबैक. इंस्टा अच्छा किया है लोग ने. ये लोग को पता है लेट गेम ऐसा लेन वार्ड लगाना चाहिए. अरे दोनों साइड जेम रहते ब्रो. क्या बोल रहे हैं? किस पे जेम है इधर? देखना ग्रिम स्ट्रोक पे है. अच्छा है. ओहो मोरता. मैं लगा गई अभी. अरे अरे सेव ने बचा लिया गेम. सेव ने बचा लिया भाई गेम. Unbelievable. How is this even fair, Trent? What is this hero? Okay, we got Muerta on one side, we got Spear Brain there. It's fine. That's fair. That's a good point. Well, Cheese is down. Oh, and yeah, there's more Lotuses as well. We already have, I'm pretty sure that is a full block of cheese, if I'm not mistaken, on Spear Breaker. Am I crazy? Like he has enough? I thought that he had a... No, he just had the cheese in his back. अरे वो टैलेंट है रे उसका. क्या रे कौन है कास्टर? Thank you very much. There you go. Nailed it. Because level 30. 25 लेवल का टैलेंट रहता है उसका लेफ्ट साइड वाला. बैरियर में टैलेंट बोल रहे रे क्या? अरे क्या रे? क्या So the other thing too to consider is there is going to be this other window where both teams have the lift. I don't anticipate Bedboom are going to try and go in for the all-in play again. Mega creeps, I mean, obviously really important. It means that you can only really go in through mid. There's still a tier 2 up top. That tier 2 standing 80 प्लस मिनट नहीं होगा मुझे लगता है. खत्म हो जाएगा अभी नेक्स्ट टीम फाइट के बाद. तो कौन सा गेम था? 136 मिनट पे गया था क्वेस्ट और टुंड्रा लूट गेम बहुत अनोइंग रहते हैं रे. टुंड्रा वाले तो गजब का ऑप्शन पकना भाई. अरे उधर कौन सा पकना था? उधर तो तभी 9 मिनट था. अरे नहीं इन जनरल बोल रहा हूँ ऑप्शन पकना. ये अभी उसकी वजह से पूरी गेम जीते हैं ना वो लोग. ए रुको कुछ तो उधर हुआ पता नहीं क्या चिल्ला है. कुछ तो पब्लिक भी चिल्लाई अभी. I mean, they don't feel safe either. I mean, with good reason. Somehow, like, they still are missing buyback for gold on Wraith King. Like, stop buying items for a second. Make sure it's expensive. Look, it's at $37.50. You got that laying around? Inflation's tough, man. I mean, he's already in his backpack. You sell that thing. Get it out of here. Nah, you make a fair point. But he did a refresher. That's a good point. Yeah. Okay. Well, Squad X takes it down. Tidal wave, kill the wave. Kiritich revealed.
So this is the other thing to watch. I remember a game earlier on, I think it was Tundra that was playing it maybe, where they had Train Protector late game with like Spectre Spearbreaker, and you would see these like, you know, charges across the map. I kind of feel like Cataclysm, and then if you see somebody solo pure charging, and then Boots of Travel level 2, like we're finding new ways to, you know, make somebody feel terrible, but it's devastating. It's the boots level 2 that are just absolutely ridiculous in the late game. That 2-second TP, whether it's escaping or joining fights, can be so crazy. Yes. So again, for those of you that have been gone for a long time, you can TP onto your ally and join in. So what that means, you get to be old Tinker. Yes. What that basically means is that Spearbreaker sees that there's one person solo on the other side of the map, charges, he gets You get to be old Tinker. Old Tinker कभी teammates पे TP करता था रे. 2 लेवल का ही TP खरीद के करता था. अभी वो नया Tinker करता है teammates पे 18 लेवल पे. कुछ भी बोल रहे कास्टर बंद करो रे. वही तो बोल रहा हूँ, रोल्स अप तो ठीक है इस टाइम पे. ये लोग क्या एडवाइस दे रहे हैं पब्लिक को, पूरी दुनिया देख रही है. अभी देखो गेम में POT2 स्पैम होना स्टार्ट होगा पहली आइटम. नहीं इतना अननोइंग लगता है ना वो जब कोई पहली आइटम POT2 बनाता है. And you can do it on enemies too, and they become silenced, muted, and disarmed for 4 seconds. So theoretically, you could just like get rid of Nightfall. Yes, get rid of Nightfall. Tinker जैसे हीरो पे Tokyo, who's proving a really big problem. Get rid of save. I mean, at this point, honestly, because that dark. थोड़ी देर पहले भी क्या बोला रे, चीज ब्लॉक है उस पे बोल रहा है स्पिरिट But that's ब्रेकर only पे. if like you can even target her. Like save also is going to be really hard to focus down. No, I mean, they finally did take that tier 2 tower, and now we're going up towards high ground. Up top, interesting. Okay, with the Book of the Dead for themselves and Kiritich stepping forward, they bring down that tower pretty quickly. हाँ ना इतने सारे वो बड़े हीरोज दिख रहे हैं ना उसके सामने. दोस्तों इट्स टाइम टू टर्न ऑफ माय कैमरा गाइस. बहुत नींद आ रहा है. Does anyone care to take Roche? I feel like Bedboom probably don't. We do need Aghanim still in a couple of Actually, it's just Muerta. Never mind. I mean, Hi Tanish, TI देख रहे bro. I would be happy about that, but the Muerta, the parting shot, which we've seen quite a bit so far in the Roche International. Right. It is a very interesting dynamic, and yeah, I think so. This is actually pretty huge for them. The fact that they're going to get the Aegis and now set up and the scepter drops first of all. But this is more gold injected into the team because कौन now खा रहा है बट वो सेप्टर टस के पास था वही खा रहा है क्या? And is going to be able to sell out the Ags that's in his inventory. It looked like he was holding it, yeah. So that's something to watch for. His parting shot that bad? He just doesn't want the button. Doesn't want to misclick or something. Yeah, I guess. And has another rapier queued up now too. Okay, that's true. Late game Dota becomes very म्योर्ता को भी दे सकते हैं ना वो लोग सेप्टर. उसका वो स्टन करेगा 4 सेकंड किसको तो. एक्चुअली अल्टी भी मार सकते हैं. लाइक रेसिंग पे वो किया ना, फिर रेसिंग को अल्टी मार दिया ना, दबाते हैं ना, पता है एक्टिव है अभी. एक्टिवली वो रेसिंग का अल्टी एक्टिव. अल्टी वेस्ट करा सकते हैं. अरे तू नहीं कंट्रोल करता है उसका इल्यूजन, वो खुद ही करता है. is going to fall out of their hands. कुछ भी मत बोल. अरे खुद कर सकते हैं कंट्रोल. क्या बोल रहे हो? ब्लैक होल मार सकते हैं निकमा का. I mean, got into the deso in the later parts of this game. Has the level 30 tower with the 2-second tiebreaker. Kind of terrifying. Muted and disarmed illusion पैदा होता है ना भाई. Active abilities नहीं spam कर सकता. Because you're playing against mega creeps, you're almost always going to have something that you can. अरे that's one of the issues you run into. वो म्योर्ता थोड़ी कंट्रोल करता है वो उसका स्पिरिट. That's an Octarine Tusk. Uncontrollable. वो हीरो करता है कंट्रोल. So that जो हुआ है स्टन is really just their survivability. I'd love to see him get a Yules if he could, or like an Octarine core, right? Because then you get multiple snowballs, multiple kicks off. कुछ भी बोल रहे हैं. Lanes being dealt with. कितना टाइम हुआ वहाँ पे PasoLL अभी मतलब क्लॉक पे? Killing the tormentor. क्या? 75 कितना हुआ? हाँ 75-22. They very quickly perished. Yeah, those do not survive. Book of the Dead pretty cool, but not that cool. Undying still doesn't have shard. Okay. Still can't get your team to do tormentor. 75 minutes into the game, I think. मुझको बेस्ट आइटम तो ये लगता है. Yeah, you're right. He's missing it too. I mean, this guy he has 8,900 gold. He's just not getting. तुम तेरे पास कॉन्फिडेंस किधर से आता है इतना? You know, make sure that he's all saved up and ready to go.
But yeah, both teams at this point terrified of actually running into each other in a fight. तड़प रहा है आवाज अभी क्या बोल रहा है पता नहीं वो बोल रहा है लानत is my idol कब से देख रहा हूँ कुछ भी गलत बोले तो एकदम कॉन्फिडेंस के बोले जा रहे हैं We're just looking at buying eggs right now. Oh, that's confident. It's like I have nothing else to spend it on. Well, they're waiting for next confidence. Confidence. I never afford the synth, so I gave it to him. I'll farm my own. He already has the moon character soon. There's an overwhelming blink on the Undying. Get enough strength up. That's something. That's gonna hit really hard. अरे 80 मिनट जाने ही वाला है ये गेम 90 minutes जाएगा. To the side. He just drops the wards. It's like I can't. भाई खत्म कर दो एक टीम को Put him on the ground. I don't want these. और मुझे लग रहा है वीपी जीतेगा पता है स्केलिंग बहुत अच्छा है वो लोग का इधर से Willow is also queuing up for Rapier. Okay, this Nightfall queuing up for Rapier. Okay, cool. We're getting to some territory where Willow पे slot है ना वो मास्टर मैडनेस वगैरह लेके बैठा है And again, बेस्ट टेंशन डिलीवर करने के लिए कौन सा है मेरे को तो वो स्टोन बॉलर लगता है कम हाई ग्राउंड गाइस बोल रहे हो I think when you're the ones up a game, it's kind of on you. I'll chat कर रहे हो उसको You should be the ones that go high ground first. Absolutely. भाई अभी मेंटल गेम थोड़ा सा खेलना पड़ेगा ना And I mean, again, the play like this. भाई तुम लोग आ जाओ हाई ग्राउंड खत्म कर दो Notice how scary that moment can be. If they can anticipate your movements, you're going to be going down. तो ज़्यादा उन पे 12 भी है तो लेडियम तो 100% जाएगा अगर वेव कट किया 12 ने तो. Nice little high ground. कर रहा है ना वो constantly. लेट गेम जाएगा तो ये क्या है अर्ली चल रहा है क्या Of course, the other key thing here is going to be the glyphs, making sure that you're not using those unnecessarily. Because while it didn't work fully last time, there was 10-man buyback, 10-man BOT. Let's go. Could have been for Bet Boom with just running in with the Wraith King zombies.